मैसेजेस भेजते हैं जो ऑफिशियल बिजनेस मैसेजेस के समान दिखाई देते हैं। इन एसएमएस में लिंक होता है जिसमें आपके लॉगिन की जानकारी मांगी जाती है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं और लॉगिन की जानकारी देते हैं, अटैकर तुरंत ही आपके अकाउंट पर काबू पा लेते हैं। डीएनएस हाईजैकिंग, इस तरह के अटैक में एक वैलिड वेबसाइट को टारगेट किया जाता है। इन वेबसाइट के डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के एंट्रीज यानी ओरिजिनल आईपी एड्रेस को बदलकर बोगस वेबसाइट का आईपी एड्रेस एंटर किया जाता है। फिर जैसे ही आप वैलिड वेबसाइट को एंटर करते हैं तो वो सीधा आपको एक फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। आपको बता दूं कि डीएनएस आईपी एड्रेस को चेंज करके और राउटर पर नियंत्रण पाकर एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैलवेयर से संक्रमित किया जा सकता है, जो कि एक कोई बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। फिशिंग बोट्स, फिशिंग बोट्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें ऑटोमेटिक फिशिंग अटेम्प्ट करने के मैक्रोज सेट किए जाते हैं। इस तरह के फिशिंग बोट्स का उपयोग फेक वेबसाइट्स को डेवलप करने और सर्वर्स पर होस्ट करने के लिए किया जाता है और साथ ही इन फिशिंग बोट्स का उपयोग बल्क फिशिंग ईमेल्स करने के लिए भी किया जाता है। ये फिशिंग बोट्स इस तरह से प्रोग्राम होते हैं जिससे आपकी लॉगिन डिटेल्स और प्राइवेट डाटा को ऑटोमेटिकली चुराया जाता है। इन फिशिंग बोट्स का उपयोग स्पैमिंग और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे अटैक्स के कंजक्शन में भी किया जाता है। तो अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फिशिंग अटैक्स के बारे में जानकारी लेंगे। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.o और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। So in today's special segment, we'll be discussing about the bat. No, I didn't mean those mammal, but bat, a technology. The BAT we are discussing is an acronym of Basic Attention Token. Yes, they are seeking attention and we will look into why. Also, the BATs will help the advertisers world shape the future. But before we move on ahead, please do like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. So coming back to BAT. So let's understand the exciting world of technology based on tokenized advertisement system called the BAT and how it will help shape the advertising future. So BAT can be used to circumvent the shortcomings of the traditional advertisement medium. That's the main objective behind it. Interesting, isn't it? Almost every business around the globe, no matter how big or small, has to rely on advertising as a major marketing tool to mark its presence. So the broadcasting media, whether it is print, digital or satellite channels, news or GEC, plays a major role to engage customers through advertising. It provides a win-win situation for both. For broadcasting company, advertisement is the main source of revenue. For the company placing an advertisement, it is the medium of reaching to its customers. So for example, Google could fund its wide-ranging initiatives and services because of the money it manages to generate from online advertising. Interesting, isn't it? On the other hand, the advertising company should reach wider audience. However, the emergence of the hate advertisements, particularly online ads, have become the cause of concern to many. These concerns are because of, primarily, ads can be annoying. That's what everyone has witnessed and been witnessing, right? Online ads can take time and bandwidth to load. Many sites serve up to trackers along with their advertisements. Many consider this a serious privacy issue. Privacy is a big concern. This state of affair is causing problems for advertisers who are seeing less return for their advertising dollar, publishers who can't even charge as much as ad space as a result, and end users who eventually will have to pay directly for content or go without if the content provider's ad revenue dries up. So there is a big question mark as far as the ROI is concerned. So
in order to cater to all these concerns, a new model is needed. And some pretty smart folks, they think they have figured it out. And the solution they have come out with is Basic Attention Token. So the Basic Attention Token is a blockchain-based system for tracking media consumers' time and attention on websites using the Brave web browser. Interesting, isn't it? It is built on the Ethereum blockchain, and goal is to efficiently distribute advertising money between advertisers, publishers, and readers of online marketing content and ads. The Basic Attention Token BAT was created by the co-founder of Mozilla and Firefox, Brendan Eich, to improve the security, fairness, and efficiency of digital advertising through blockchain technology. The BAT token is used as a currency on the Brave platform and can obtain several different advertising services. The objective is for readers to experience fewer ads that are more well-tailored to their interest, while at the same time not giving up their data privacy rights. So privacy, as we have mentioned, is a big concern, and this is the BAT token addresses one. So let me explain how this works. So an advertiser buys BAT on the public exchange, similar to the way one can buy bitcoins. A publisher serves the advertiser's ads along with its own content as usual. The end user's browsers calculates how much attention the user is paying to the advertising. So both the end users and the publisher receive some of the advertiser's BATs according to how much attention the user is paying. And the transactions are conducted on the underlying blockchain. Thus, the end user is rewarded for viewing the ads, and the publisher is rewarded for publishing compelling content. So this is a win-win situation for everyone. So perhaps best of all, no trackers are involved, and there is an anonymity shield built on its system so that the advertisers and publisher cannot trace the attention to a specific user. So if this idea gets some traction, it could radically change the dynamics of online advertising. So it could represent a win-win for everyone in the ecosystem: advertisers, publishers, and the end users. Well, that's it in today's special segment. We will meet again with exciting stories about the cryptoverse. This is Manoj Zara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Thank you. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations, Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. अरे ये धुनी ऐसी है जो दिलो दिमाग और जुबान पर ऐसी चढ़ती है कि क्या कहने। 2 मई 2019 में रिलीज हुआ ये गाना एक ह्यूमरस सटायर था, जहां 4 पॉल बेयरर्स कॉफिन उठाकर फनी डांस कर रहे हैं और सबको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भला किसी की अर्थी पर ऐसे डांस क्यों किया जा रहा है। खैर, कुछ तो बात थी इस वीडियो में कि इसे सुनकर इसकी धुन और वीडियो स्टेज ऑन योर माइंड, लेकिन इस गाने को बनाने वाले इन घानियन पॉल बेयरर्स तक ने नहीं सोचा होगा कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एक्चुअली पहले 1 साल इस गाने ने कुछ खास सक्सेस नहीं देखा, लेकिन 2 मार्च 2020 को जब मैथ्यू ने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया तो जैसे इस गाने की किस्मत के सितारे चमक उठे। इस गाने ने 300 मिलियन व्यूज के साथ कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस वक्त तकरीबन हर तरह के सटायरिकल वीडियो में ये बतौर मीम यूज होने लगा। इनफैक्ट शायद ही कोई टिकटॉक वीडियो हो जिसमें फेल्ड अटेम्प्ट या फेल्ड पर्सन को चिढ़ाने के लिए ये मीम ना यूज हुआ हो, सजेस्टिंग दैट यू आर डेड नाउ। आप भी सोच रहे होंगे कि भला मैं गड़े मुर्दे क्यों खा रही हूँ। वाओ, डिड यू नोटिस द वर्ल्ड प्ले? आई एम ग्रेट। एनीवेज,
मैं इस वीडियो की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल NFT की दुनिया में वायरल मीम्स का ट्रेंड चल रहा है। 2019 में बने और 2020 में हिट हुए इस सॉन्ग की हाल ही में NFT बनी। और जानते हैं इस NFT ने कितनी कमाई की? वेल 327 एथर यानी 1.04 मिलियन डॉलर्स। वाओ! वैसे सोचिए इस गाने पर खर्च ही क्या हुआ होगा? सिर्फ कॉफिन का, और बाकी सिर्फ कमाई कमाई कमाई। इसे कहते हैं किस्मत। वैसे इस गाने की कमाई को बेहद नेक काम पर लगाया जा रहा है। इसका 50% हिस्सा यूक्रेनियन चैरिटी और यूक्रेन में रहने वाले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने वॉर की वजह से अपनी जॉब्स खो दी है। सच अ नाइस कॉज, है ना? चलिए, ट्रेंडिंग वायरल मीम NFT में अगला किस्सा है चाटे का। चाटा लगा, हाय लगा। सॉरी, वो क्या है ना, मुझ में ना फिल्मी गिरी से कूट कूट के भरी है। एनीवेज, वो चाटा जिसने पूरे ऑस्कर्स को हिलाकर रख दिया। उफ, जोरदार लगा ना? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्कर की अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। हर कोई क्रिस रॉक के पंचेस को एंजॉय कर रहा था। आई डोंट मीन रियल पंच, मतलब जोक्स। और अचानक विल स्मिथ की वाइफ जेडा पर किए एक हल्के से मजाक पर विल स्मिथ तिलमिला उठे और उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और सीधे स्टेज पर जाकर पूरी दुनिया के सामने क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। और फिर अपनी सीट पर आकर बैठकर भी उनका गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने क्रिस को काफी खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल एलोपेशिया नाम की मेडिकल कंडीशन की वजह से जेडा पिंकेट स्मिथ हैज लॉस्ट हर हेयर एंड क्रिस ने जेडा की तुलना G.I. जेन मूवी की लीड एक्ट्रेस से करते हुए ये कहा कि जेडा, when will we see you in this movie? क्योंकि इस मूवी की लीड एक्ट्रेस का लुक भी बोल्ड था। विल स्मिथ को ये कमेंट बहुत इनसेंसिटिव लगा और उन्होंने तैश में आकर क्रिस की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद हुआ ये कि ना सिर्फ थप्पड़ की ये क्लिप NFT के तौर पर सुपर हिट हो गई, बल्कि विल स्मिथ इनू नाम से कॉइन भी आ गया, जहां 1999 NFTs की इस कलेक्शन में से करीब $750 बिक गई। ये NFTs $60 से $86 तक में अवेलेबल थी। वहीं विल स्मिथ कॉइन महज 24 घंटों में 469% बढ़ गया। पर एक्सपर्ट्स की माने तो जैसे जैसे स्लैब केस ठंडा पड़ जाएगा, लोगों की जहन से धुंधला पड़ जाएगा, वैसे वैसे ये NFT और कॉइन भी नीचे गिर जाएगा। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वायरल मीम वीडियो NFT की लिस्ट में काफी पॉपुलर है चार्ली बिट माय फिंगर वीडियो, जहां सोफा पर बैठे हैं दो भाई और छोटा भाई बड़े भाई की फिंगर बाइट कर देता है। ऐसा तो आई गेस हम सबके साथ बचपन में हुआ होगा, है ना? लेकिन किस्मत वालों की ही किस्मत के सितारे चमकते हैं, ये इस वीडियो ने साबित कर दिया। खैर, बच्चों के इस तरह के नॉटी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हर पेरेंट्स आए दिन लेते रहते हैं। 2007 में जब ना व्हाट्सएप था और ना ही टिकटॉक, तब हावर्ड डेविस ने अपने बेटों का ये वीडियो अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया ताकि वो अपने ग्रैंडसन्स का ये वीडियो देख सके। लेकिन उनके साथ साथ पूरी दुनिया ने भी इस वीडियो को देखा और व्यूज और लाइक्स के साथ बहुत सारा प्यार दिया। फिर 14 साल और 885 मिलियन व्यूज के बाद इस वायरल मीम की NFT बनी, जिससे हुई $760,999 की छप्पर फाड़ कमाई। वैसे अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। हैरी इन पैसों से अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की फीस चुकाना चाहते हैं। वहीं चार्ली फिलहाल फर्दर स्टडीज के डिसीजन अभी बना नहीं पाए हैं और इसीलिए अपने दो और छोटे भाइयों की पढ़ाई पर इस पैसे को लगाना चाहते हैं। हार्वर्ड का कहना है कि वो अब तक इस वीडियो से 10 मिलियन पाउंड की कमाई कर चुके हैं। बावजूद इसके वो चाहते हैं कि उनके बेटे इन पैसों के भरोसे ना रहें, अपना करियर बनाएं और हमेशा ग्राउंडेड रहें, बिकॉज फेम इज फिकल। वाकई ये सच है। ऐसे में NFTs का ये फेम और क्रेज कब तक रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय।
and a very warm welcome to 3.0 TV. I'm your host Ruchi Sharma, and we are back with an emerging topic in digital health space, which is about the role of metaverse in revolutionizing the medical education. But before we begin, do not forget to like, share and subscribe to our channel, and to get instant updates, press the bell icon. Let's first briefly understand what is metaverse. Metaverse is the augmented virtual world which is derived by the convergence of virtual and physical space, where users can interact within the augmented world to meet each other virtually and can immerse themselves in performing virtual activities that give real experiences. While metaverse is evolving, it holds new potential in healthcare that combines the technologies like artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, Internet of Medical Devices, Web 3.0, intelligent cloud, edge and quantum computing, along with robotics to provide new directions to healthcare. Increased use of virtual reality in medical training. Virtual reality is getting used by doctors and experts to train fellow doctors and medical staffs, wherein virtual reality can be leveraged to take a learner within a human body and can provide 3,600 views of patient's ailment or to replicate procedures that are applied in real world. The entire interactions can be recorded and viewed over the desktop screens to provide minute details. Generating interaction with medical students. The most significant benefit of the metaverse is that it allows people to engage with one another while pursuing online practical medical courses, unlike the current one-way schooling. Healthcare will utilize it in medical education for simulation training rather than knowledge dissemination. For example, advanced hand skills and interactions need extra technology in the metaverse-based medical training, which is more successful. Surgery, for example, requires not just an understanding of the metaverse, but also the use of instruments that need dexterous grasping abilities. This necessitates the use of appropriate hardware or tracking technologies. Metaverse technology has to be more flexible and adaptable on an individual basis. Use of virtual reality in medical education more often. A growing number of physicians and professionals are using virtual reality to teach other doctors and medical staff. You may leverage virtual reality to imitate operations applied in the real world. It's possible to see every interaction's detail on the desktop displays. IoT, DLT, 6G or even 10G networks, robots, bring your own computer interfaces, AI, cloud, edge and quantum computing will all be included in the development of VR, AR and MR systems that will be used in medical diagnosis, treatment and prevention. Surgical operations made possible by the use of augmented reality. As medical operations previously used augmented reality is now being used in more complex surgeries, whether removing dangerous tumors or conducting a complex spinal surgery. Surgeons always look for better methods to get the job done. While robot-aided operations were already in use to undertake complex procedures with accuracy and flexibility, the employment of robotics was a relatively recent development. Quality of life, health and well-being. It is possible to achieve new approaches to link healthcare practitioners and patient while gaming concepts in non-game situation. Currently, the applications of AR in healthcare is limited to wellness and fitness apps, such as the usage of virtual teachers to give better exercises. Virtual reality has also improved the quality of life of patients with dementia. VR headsets were used to visit one of 5 virtual landscapes, including a church and the sands of a beach in a research paper published in 2013. Study participants could recall previous memories more quickly after 16 supervised sessions, which increased their mood and mental stimulation. Bridge building between nursing schools and real-life patient care. It is the responsibility of instructors to provide high-quality information that they may use in virtual programs to simulate on-site nursing abilities. Teaching students whether their job have been terminated has been difficult for nursing schools.
Learners should feel as though there was no difference in clinical treatment after performing this in the metaverse setting in a clinical field experience program. It is a massive addition to healthcare and is set to make patient care better, especially in the long run. Interoperability is a fundamental part. With interoperability and openness being at the forefront of healthcare's next wave of innovation, the metaverse is not complete until the assets and data that make up these metaverse are simple to transfer across platforms and networks. The metaverse has several different asset types: avatars, 3D models, mixed reality, and spatial settings all work together to generate content packages. Data and communication standards will grow with the industry, facilitating cross-metaverse collaboration. Virtual reality and augmented reality are already making a difference in patients' lives. In even the most basic operations such as intravenous injections and blood draws, new technology like AccuVein's skin-projected vein map may improve outcomes. Optimus Mixed Reality, which uses the Microsoft HoloLens to blend the real and virtual worlds, was recently unveiled by Zimmer Biomet and Medtronic after the latter bought digital surgery. As these vast medtech businesses and a rising number of startups creating AR and VR solutions demonstrate, the surgical environment will likely undergo significant change soon. It is also worth noting, beyond Metaverse, which brings together healthcare specialists from all around the world to collaborate on medical operations, cloud-based and real-time communication technologies allow professionals to practice their skills with the highest accuracy to guarantee that everyone gets the most satisfactory healthcare service at any time and in any location. It's too early to tell whether this will lead to healthcare being a part of the metaverse, but anybody who has utilized a digital avatar at a virtual meeting or event has already gotten a taste of what the future may contain. And we are already witnessing the development of healthcare-specific metaverse systems. The metaverse has immense promise for healthcare innovation and improvement in its infancy. Watching the implementation evolve will be intriguing. Having a place where people can face reality without necessarily experiencing the reality is pretty fascinating. It is probably one of the reasons why Metaverse has been identified as one of the best innovations in the healthcare industry over the last couple of years. Well, this concludes our Metaverse and Medical Education episode. This is Ruchi Sharma signing off. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV and do like, share and subscribe to our channel. And to get instant updates, do not forget to press the bell icon. Have a great day. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 TV के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. So we are at Tech Fest IIT Mumbai, and there is one important guest, Mr. Shantanu Saxena, CEO of Encryptus. Shantanu. Hello, welcome Manoj. on Hi. 3.0 TV. Once again. So always this a pleasure. time we are not in Dubai. Yes. We are not in Miami, but we are. I mean, you are in Amchi, Mumbai. Yes, absolutely. It's been a pleasure. This is the second time actually I'm coming to Mumbai in the last 6 months. Fantastic. It's literally the Indian ecosystem that's pulling me to be a part of this amazing startup journey that we are witnessing from various crypto companies. And the way especially Web3 is building up in this region is amazingly great. So Shantanu, since you're talking about India and the road ahead, I would like to
to request you to share your thoughts about the recent FTX collapse and the aftermath that happened. We have seen a lot of cascading impact. I mean, if you go back a bit, we have seen the same thing that happened with the Terra Luna episode. I mean, the stablecoin, then people are talking about algorithmic stablecoins are not that great. The logic followed, and we have seen a cascading impact. Right. Block fees is one example, post FTX. What's happening in that space? The ecosystem is impacted. What's your thought about this episode? In a way, don't get me wrong, but it's a good thing like what has happened with FTX. Imagine if today the number is $8 billion, what would have happened if there would have been another bull run that a company like FTX would have seen, and this 8 billion could have been $80 billion. We all understand there was a problem with the foundation, problem with the principles, and what would have happened if the problem would have continued to grow. So I think what we have seen with FTX is just an exposure, one of the exposures in the crypto world. The reason why there is a cascading effect is because one company is dependent on another company. Fantastic. Right? If you look at it, I mean, when Terra Luna failed, it was just not Terra Luna, it was also Three Arrow Capitals and numerous other. Celsius followed them. Numerous crypto businesses as well had similar problems. And why really the problem happened is because of the fact that people do not control their user assets. Like we keep educating users that you must have your crypto assets in your cold wallets. What is it that the crypto companies are doing? They are believing somebody else to give them these crazy returns. And literally what has happened is, if you look at a crypto project, I keep telling users, if a project is offering you crazy amount of returns, try to smell the smoke. Like, why is it there is a problem? UST was offering 36% returns as in terms of investments. Does this sound right to you? No, absolutely not. It doesn't sound right to us, right? So, So since we are talking about FTX and the collapse. Yeah, and the collapse that happened. So you at Encryptus, what's the situation? I mean, how is Encryptus reading the script which is written by the then famous FTX Sam Bankman-Fried? It's a very good question, Manoj. If you remember, we started building a year and a half ago. From day one, what we have done is we have kept our principles very clear. I think I don't know if you got a chance to hear the lecture that I had. I was sitting on the first bench. First bench, okay, great. But the first thing is greed. I think greed is the problem, is the reason for all the problems that's been causing. So at Encryptus, we have followed three major principles. A is we are not greedy about profits. Of course, we are a company, we want to make money at the end of the day. But at the same time, we have been focusing on building businesses with principles. I think, Manoj, it's a wonderful question. If you remember, we started building Encryptus about a year and a half ago when we first met in Dubai. Nothing much has changed. Actually, if you look at what we are doing, we are building a very simple product that is crypto to fiat and fiat to crypto. Yeah, right? exactly. That's That the is actual the business model of Encryptus. model, right? Exactly. We have always focused on licensing and regulations. Every single money or cryptos that comes into our ecosystem is verified, is checked to make sure that we are dealing with clean customers, clean money, and clean cryptos. That's principle number 2. Principle number 3 is no matter what the amount is of the transaction, if the amount is clean, only then are we executing the orders for our users. The other thing is we have taken a small step towards decentralization where all the big companies have failed as a unit. And why I say is they all offer wallets to the users. What we believe is the wallet should not be given to the users. It should be the user's choice to decide what wallets they want to bring in. Fantastic. Whether they want to bring a cold wallet, they want to bring a hard wallet, an exchange wallet, it's their choice. But at the end of the day, the idea for us is to promote cold wallets. Your keys is your cryptos. Hashtag, right? That's what we have been promoting. Fantastic. So at Encryptus, we have seen actually of November, on records, I can say, we recorded November as the best month for our business. We saw over 120%, 115% increase in new users. And that's the same month where we also saw over 110% increase in reactivation of old users. So basically the users who were not using Encryptus,
That number is actually, it's very interesting. I would like to do a follow-up question on that. Sure. At a time when, let me frame this question correct to you. Okay. FTX went down Right. in November, roughly around November First 11th. week, I think. First week, November 11th, they filed some Sometime chapter. around first Yeah, some week, yeah. And Encryptus recorded 120% growth. So how did you manage to, first of all, garner that market share? And what was the motivation behind it? And what was the business plan, first of all? As I said, we did nothing extraordinary. All what we were doing is slowly people are trying to understand what is the purpose that Encryptus is solving. Are we looking at compliances? The answer is yes. Are we looking at regulations? The answer is yes. Are we keeping the users' assets on our platform? The answer is no. Right? Which also means that in today's time, we have more money on our platform rather than user assets. So in our platform, so we are not an exchange. We are a crypto to fiat and fiat to crypto company, an on-ramp and an off-ramp company. Also, what has happened is it's not just we have done something extraordinary, but also a lot of these users are not trusting probably exchanges and they want to use an OTC desk because OTC kind of gives an immediate conversion to crypto to fiat and fiat to crypto. I'll give you an example. Imagine you want to buy cryptocurrencies from us. Step one is, of course, KYC that you have to do with us. It's all on the platform, so it's all automated. Mobile and email, both. So we use desktop, so we do not have an app. The other thing then you do is you whitelist a bank account, you whitelist a wallet. Now the wallets, as soon as you add to our platform, it's checked on a real-time basis with a coin monitoring company that we support in the background. Only if the wallets are clean can they be added to the platform. Fantastic. Right? Now on the banking side, how do we know? By doing this, you are taking care of the money laundering and We the are other making bad sure- actors. You are eradicating. So we are making, at least from our side, we are making sure that the cryptos that comes from us goes to the clean wallet. Fantastic. Right? Of course, with KYC, we have identified the user. The third thing is we also check the bank accounts. The money, so basically when you whitelist a bank account, it's not like you add a bank account, it's added. It goes to our backend team who approves the bank account as well. So it's a hybrid model, right? So this is where I think we have seen a value that the users see that whatever they deposit, they get the cryptos back to their wallets immediately. However, we noticed that 90% of the market actually liquidated their crypto positions to get fiat into their bank account. Exactly. This is what we have seen. Exactly. So, long story short, the story has already been very long, but what we have done is we have not compromised on the principles, we have not compromised on our users. We have only managed orders where we can support the liquidity by ourselves, and we do not offer crazy products like DeFi, ThatFi, GameFi. We don't, because we believe that if there can be a company who can solve the most common problem of crypto to fiat and fiat to crypto, you're doing something all right with regulations and compliances. Fantastic. First of all, congratulations on this number. I mean, the business model is running, as like a BMW. So since we are talking about Encryptus, so we'll move forward. Right. And there are a lot of concerns in the cryptocurrency market. We are talking about regulations. Just a while back, you mentioned about regulations in your speech, which we were attending. Right. So how serious is this issue, Shantanu? And since you are mentioning about stringent checks and balances policy as far as your KYC is concerned, so going forward, what will be the role regulations will play? If you can just highlight that. I think the first thing has to really start with education. User education is going to play a very, very important role. If you check all the past interviews that we have done, the first thing I've always focused is education. Always education. And not just from the user point of view. I mean, let's look at Japan. I was giving this example while we were in the conference. The thing why FTX users Japan did not lose any money because there were checks and controls in place. Fantastic. So what you need from a regulator is not just a policy, but an implementation of that policy as well, right? Really nice. If I'm asking what is the contingency policy? Like what happens if an exchange goes down? It should not just be a policy, but it should be a plan that can be implemented. Probably the regulators must, we do fire drills, wherein the building guys switch on the fire alarms and check whether the people evacuate the building or not. Maybe they should do random checks on crypto companies, especially 150 years ago, New York Stock Exchange was considered to be the hub of gambling, right? But proper checks, licensing, compliances came in, and I think this is what really we are pro
we want regulations and compliances, and we also want an implementation. Over compliance and under compliance will both kill the business. I mean, my logic is pretty simple. A, we have to think beyond traditional compliance, and we must look at the modern tools that's available for coin monitoring, fiat inflows, fiat outflows. And once these tools are integrated within an ecosystem, that's where you will see a value. Reporting has to be important. Like, imagine if I've come across a user who is a bad user, every country should have a very clear process. Like, and I think as travel rule comes into the picture, we discussed about this in Miami. I think it will bring a lot of credibility as well, and it will clean up a lot of unclean companies which are there in the market. So since you are talking about a lot of suggestions as far as, making this ecosystem a better place to live in. So we enter our last segment. This is about the 2023 outlook, since we are in December. And what do you think, Shantanu, will be the face of 2023? What is your expectations? How do you see? First of all, let me have a fire, a quick rapid fire with you. Sure. Do you see more companies collapsing in 2023? I mean, the big ones, yes. I mean, there seems to be a very strong possibility of bigger companies collapsing, because bigger the company, bigger the risk, and bigger the greed, right? So yes, that probably will happen. We saw what happened after the FTX collapse with Genesis. We also saw, of course, Alameda Capital. We saw BlockFi. And, these are such huge names who cannot hide. So they have to come out in the market, in the open, and say, how about medium and small little companies, who were investing users' money into BlockFi projects, and they were thinking like, we are able to give returns. So those names have not even come out. So I think that's number one. That is probably... So your view on CBDC and its impact in the cryptocurrency market? Well, honestly, I really need to understand CBDC better, and I want to understand how will it really solve a major problem to what Bitcoin and Ethereum is able to solve. And we really have to see an active use case of CBDC as well. We just don't want a digital rupee and say that we are pro CBDC. So I think it's yet to happen. We have to see the right implementation, and how will the users adopt, and how will the companies adopt to CBDC. I mean, I'm not against the idea if a government can keep an eye on all my spendings. Yes, if they want to bring in transparency, it has to be both ways. Not just you take all the user data with you. So, Manoj, if you try to analyze this discussion, I'm not trying to sound like I'm not against regulations. I love regulations, but I like balanced regulations. One last question before we let you go. Is the next big leap of growth in this ecosystem, is it going to be yet another time from the metaverse, NFT, or you have a different idea about it? I don't know what's going to be the next. I mean, people are talking about Web3, but again, Manoj, I don't want to sound negative. I really want crypto companies to deliver the promise with which they started building. I think that is not happening, because I've seen numerous crypto projects who started as DeFi, then they became NFT, and today they are Web3. On what basis? Are we trying to capture and get the attention of the investors and the users and say, hey, we are a Web3 company, and does it sound cool? Is that the reason why we are doing it? So I think everything is not a token project. You cannot build an ecosystem, like there cannot be 22,000 tokens that's existing, and what value are they adding is very, very important, right? B is exchanges have a very, very crucial role to play by listing and making sure that they're listing the right tokens on the platform. Right. C is, as I said, users must be educated as well. And D, while the crypto companies are building projects, they have to think about regulators, what they're building. They have to think about compliances. They have to think about the effects. We always think about the best case scenario, but why is it like companies don't think about the worst case scenario? Exactly. Right? I think when you combine the 4 or 5 elements together, and especially the worst case scenario element, you will see progress coming in. So educating the viewers, that's a word coming in from Shantanu. Shantanu, thank you so much for talking to 3.0 TV. You spoke really well about the entire ecosystem, what all aspects the regulator needs to focus on. The customers and the companies and the customers should select the right wallet. Thank you so much, sir, for talking to 3.0 TV. And yeah, you're welcome, sir. Thank you so much. Bye-bye. Thank you very much, Manoj. Thank you, guys.
we will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Since the beginning of the year, the momentum of top cryptocurrencies has been increasing. The prices of Bitcoin and Ethereum have experienced a 24-hour rally, allowing them to reach a 3-week high. The global crypto market cap has increased by 1.30% over the last day, bringing the total to $850 billion. The 24-hour total volume has skyrocketed by 88.95% to $45.35 billion, with DeFi accounting for 8.22% of that figure. The total volume of stablecoins is now 91.98% of the 24-hour market at $41.71 billion. But coin's dominance has decreased slightly by 0.34%, bringing it to 38.98%. Elsewhere, shares of Bitcoin miner Marathon Digital Holdings surged by more than 3% at $4.23 despite ratings downgrade by investment banker Jefferies. Metaverse token Gala surprised the crypto audience by posting a 70% jump in its price. The optimistic outlook for the token remains intact. Solana's bonk crashed 50% in 24 hours. Bitcoin traded flat at $17,200, whereas Ether changed hands around $1,325, up by 2% in the last 24 hours. $152 एथर यानी करीब 3 करोड़ रुपए, एक ऐसी कीमत जिस पर मुंबई जैसे शहर में आप 3 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं। उस कीमत पर बोर्ड एप की सबसे सस्ती NFT बिक रही है, यानी महज एक JPEG जिसे आप राइट क्लिक के साथ ही कॉपी कर सकते हैं और फ्लॉन्ट कर सकते हैं। बेशक NFTs इरैशनल है, रियल वर्ल्ड में खासकर ऐसे JPEGs को स्काई हाई प्राइस पर खरीदने के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। बावजूद इसके बोर्ड एप यॉट क्लब की कामयाबी समझ के परे है। महज एक साल में बोर्ड एप ने जैसे लाइटनिंग स्पीड के साथ सक्सेस देखा है, जुप ऐसा सक्सेस जिसे हराना तो दूर, आने वाले समय में कोई छू भी नहीं पाएगा। चलिए बात को गोल गोल नहीं घुमाते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि बोर्ड एप ने अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द अपना मेटावर्स लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा अदर साइड। इस अनाउंसमेंट के बाद ही युगा लैब्स ने इथेरियम पर अदर साइड की वर्चुअल लैंड सेल NFTs लॉन्च कर दी। इन NFTs का नाम है अदर डीड, जिसे 305 एप कॉइंस के लिए खरीदा जा सकता था। मतलब दे वर वैल्यूड एट $5,800। इस सेल ने लॉन्च के साथ ही तहलका मचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल में 55,000 ब्लॉक्स देखते ही देखते बिक गए। करीब $320 मिलियन की सेल हुई। आई नो इट्स क्रेजी है ना, लेकिन असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अदर साइड पर लैंड खरीदने के लिए बोर्ड एप फैंस की ऐसी होड़ लगी कि इथेरियम ब्लॉकचेन क्रैश हो गई। ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा थी कि गैस फीस 2.6 एथर यानी कि $7,000 पर ट्रांजैक्शन पर पहुंच गई। ये तो आप जानते ही हैं कि गैस फीस के लिए जितना ज्यादा बिडिंग फिगर होता है, उतनी ही स्पीड के साथ पहले उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है।
ऐसे में अपनी ट्रांजैक्शन को पहले प्रोसेस करवाने की रेस में लोगों ने हाई से हायर बिडिंग की। एज अ रिजल्ट अदर डीड की गैस फीस का प्राइस 2.6 एथा से 5 एथा पहुंच गया। मतलब लोगों ने $14,000 बतौर गैस फीस पे की, जो कि उनकी एनएफटी की वैल्यू से भी ज्यादा थी। खैर, इथेरियम पे बचे कैओस में कई लोगों की ट्रांजैक्शंस फेल हो गई, साथ ही उस पर भरी गई उनकी हाई गैस फीस भी डूब गई। इसके बाद युगा लैब्स ने अपॉलॉजी जारी की और उनकी इस लैंड सेल की वजह से इथेरियम पर हुई गड़बड़ी और हाई गैस फीस के लिए माफी मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत फेल ट्रांजैक्शन फीस लौटाना भी शुरू कर दिया। युगा लैब्स ने करीब 640 रिफंड्स किए, जिसमें उन्होंने 90.57 एथर लौटाए, यानी $265,000। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 2 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। खैर, हैरानी की बात तो ये है कि अब बोर्ड एप अपनी एनएफटीज पॉलीगॉन पर लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं और लोग इसे इथेरियम की खामियां उजागर करने के लिए और पॉलीगॉन को बेहतर साबित करने के लिए युगा लैब्स की चीप पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। क्योंकि पहले युगा लैब्स का प्लान डच ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने का था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मन बदल लिया और फ्लैट प्राइस पर वर्चुअल लैंड बेचने की अनाउंसमेंट की। और इसके लिए उन्होंने वजह दी कि डच ऑक्शन से एनएफटी बायर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी और साथ ही गैस फीस वॉर भी होगा। लेकिन फ्लैट प्राइस रखकर भी तो भयंकर गैस फीस वॉर हुआ ना। एक साल के अंदर पलक झपकते ही BAYC ने अनबिलीवेबल सक्सेस देखा है। 0.08 ETH का फ्लोर प्राइस 131% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ देखते ही देखते 152 एथर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज क्रिप्टोपंक्स को युगा लैब्स ने झटके में अक्वायर कर लिया। वेंचर कैपिटल एंडरसन हॉरोविट्ज से मिली $450 मिलियन की फंडिंग के बाद $4 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई और अब मेटावर्स के वर्चुअल लैंड एनएफटी की धमाकेदार सेल के साथ BAYC ने इथेरियम को ही क्रैश कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से उठता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया में ये चर्चा गर्म है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए युगा मॉडल सस्टेन करेगा। BAYC सिर्फ एक ट्रेंड या फैड तो नहीं जो वक्त के साथ खो जाएगा। जैसे क्रिप्टो किटीज रातों रात गायब हो गई, वैसे ही BAYC भी ओझल हो जाएगा। $4 बिलियन की वैल्यूएशन तो युगा लैब्स को मिल गई, लेकिन क्या वो इसे $8 बिलियन तक ले जा पाएंगे? वेल, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त देगा। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। हैव अ ग्रेट डे। After a slow beginning, the central bank digital currency has picked up speed. The number of retail users of CBDCR is expected to touch 50,000 at the end of this month. Currently, this number stands at around 16,000. The Reserve Bank of India launched a pilot project for e-rupee on December 1st last year. Official sources said the digital currency is progressing rather well. Since the launch of the pilot, around 16,000 users conducted transactions worth approximately 64 lakh, sources said. And with further ease of use, awareness and more points for acceptability, the expectation is that the pace will quicken. The pilot on digital rupee wholesale was launched on November 1st. At present, average daily transaction for e-rupee W is 200 crore. 8 banks are participating in the retail pilot project. These include State Bank of India, ICICI Bank, the Yes Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank. Use of e-rupee is voluntary and it is part of total currency in circulation.
According to a legal filing posted on January 8th, approximately 117 parties have expressed interest in purchasing FTX units as the deadline for initial bids approaches. While the crypto company's bankruptcy case could take years, the estate has prioritized the sale of LedgerX, FTX Japan, FTX Europe, and stock clearing platform Embed, claiming they are the easiest to separate and risk losing value if not sold quickly. As of 8th of January, approximately 117 parties, including various financial and strategic counterparties globally, have expressed interest to the debtors in a potential purchase of one or more of the businesses, according to a legal declaration signed by Kevin Kofsky, a partner at Perella Weinberg, the investment bank hired by FTX Group to represent the bankruptcy cryptocurrency company. So far, FTX has signed 59 confidentiality agreements, according to Kofsky. LedgerX, a derivatives arm of FTX US and one of the empire's few remaining companies, leads the pack with 56 expressions of interest. France's Financial Markets Authority wants to force crypto companies to obtain a license if they are not already registered in the country, according to its chair, Marie-Anne Babet-Laini, on January 9. Babet-Laini appeared to be supporting a move proposed last year by the French Senate that would require crypto firms to seek some regulatory recognition in advance of the European Union's new MiCA regulation, which is set to take effect on October 1, 2023. The AMF, like the Parliament, calls for an exploited transition to a regime of mandatory licensing for non-registered providers of crypto services, Babet-Laini said at an event, according to a tweet from the regulator. A number of well-known companies, including Binance, have registered with the AMF. The registration involves checks on companies' governance and compliance with anti-money laundering rules. No provider has yet been issued a license, a voluntary procedure set out under French law. In the upcoming segment, we will update you about following news. Calvin Harris enters the metaverse for first ever VR concert. Gala reveals partnerships with Dwayne Johnson and Mark Wahlberg. Token skyrockets. Apple's mixed reality headset to launch this spring. Stay tuned for more updates. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Crypto Masters. The metaverse and NFT markets continue to decline. NFT sales were down around 60% in the third quarter of 2022 compared to the previous quarter, according to a Reuters report. Earlier this year, Meta posted its first quarterly revenue decline. Once again, Meta's financials are not inspiring much faith in its investors this quarter. So to have a better understanding of the current scenario of NFT and Metaverse market, we have invited founder and Metaverse coach of Metaverse 911, Mr. Rahul Sethi. Welcome to 3.0 TV, sir. Sir, the falling crypto prices have hit the Metaverse and NFT trading volumes. What are your views on the same and what is the current scenario of the market? Of course, because of the falling crypto currency and pretty much many of the exchanges holding off the business in the past, as you've seen, including, of course, a number of exchanges where there have been a lot of government scrutiny and a lot of bad press. It has taken a big hit on the crypto market per se. However, though NFTs also have been falling in the trading business, I personally believe that that's not because crypto has fallen apart.
NFT is primarily one source of a collectible that continues to be of interest to many, many people. And while it has been a collectible, like a collectible for someone to sort of, also buy movies and, sometimes pictures and infographics and so on and so forth, NFTs are also now turning out to be a good, collectible as a utility, in businesses. So I think we'll wait and watch for the next 6 to 8 months, but definitely I am pretty sure that NFT markets are going to be remaining, in the same pattern. So, according to various reports, the metaverse platforms such as Decentraland and Sandbox are struggling to retain users despite having multi-billion dollars worth of market caps. But these platforms deny any such claim. So, what are your views on the same? All right, so there has been quite a lot of bad press again, about Decentraland, Sandbox, and many of the other platforms which are not having the kind of users that, that should be, because some of them claim that Decentraland has got over 39 to 40 people a day. Some claims, up to 5,000 to 8,000 people. Let me clarify. So first of all, any of these metaverses are not built for people who are mid-age to the old age, because most of metaverses are built for Gen Z and Gen Alpha. That's one. In reality, just purely Decentraland has got over 56,000 plus MEUs. He's got over 1,074 smart contracts right now. This is the data that I downloaded from an authentic source, and there are over 150 odd DAO proposals, the new DAO proposals that are also in the pipeline. So if somebody says to me that, hey, Sandbox and Decentraland does not have the kind of users right now, they have, absolutely, because it's getting built. And as it continues to get built, more and more people from the Gen Z and Gen Alpha, platform ecosystem, would walk into this, because experiences also have to be made in a way. So experiences, when they grow, the people getting attracted like a honey in a bee kind of system, So this ecosystem is right now being built. It's too early for us to sit down and say, hey, which one will work and which won't work. I think we have reasonable success stories in place, including Roblox, Sandbox, Zapato, and so many other, I think there are over 50 odd metaverses platforms that I continue to track. So I think once again, it's all about timing. So wait for another, few months, and as 5G tech, tips into the hands of the Gen Z, let me tell you that most metaverses will see a rise in their occupancy rate and the overall interaction. And along with this, the third quarter volume of top metaverse projects has decreased by 80%. Despite this decline, sir, the interest in virtual worlds is still high. So why is that so? All right. So absolutely, while the Decentraland and many other virtual platforms, say about 3 to 4 years back, had come into sort of hot sale kind of category, over a period of time, a number of other metaverses platforms have also come in. So with the likes of Peck World, or the Pax World, or the Mech World, and many more of them also coming in from India, which are decentralized, and some of them are very centralized in nature. However, when people get multiple options, there is always going to be a little dip in the sales of any per se a monopolist. Now, having said, it is a game where you will always have first mover advantage. So please understand that whether it is Roblox or Sandbox and Decentraland and many others, the ones who have taken the industry leader position to really shake them is not so easy. At the same time, let me also mention this very quickly, that virtual land sale has also decreased for the fact that because of the crypto fallout, it's been a bit of a investor frenzy time. They're not sure about what they should do and where should they go. So I think there's a lot of retrospection right now being happening. So if we take today's a scenario, I would think that at any given day, virtual buying of land is a very reasonable opportunity, and I think it's just continuing to grow every single day. These are testing times for Web3 and metaverse solutions. But having said, there are more and more enough enthusiasts and people who are gung-ho about it. So I think I'll listen to them and be a part of the community and continue to grow it.
Sir, according to you, what will be the future of NFTs and metaverse? Future of metaverse is present. Present of metaverse. The present of metaverse is that we are right now looking at a major shift of creating experiences on many of the decentralized as well as centralized metaverses. That's one. At the same time, we're also seeing a lot of companies getting to know more about NFTs and thinking of how they can monetize their existing physical assets to a more digital, including digital, revenue line of business. So with that, the present day brand managers, the present day marketing heads, and the present day entrepreneurs are all trying to scout opportunities in the metaverse. A number of other players which are bringing the metaverses to play by making more gamified experiences and all of that stuff is only creating that ecosystem every single day stronger and stronger. We also are seeing a lot of changes in the blockchain landscape, where we are seeing more and more sustainable blockchains coming into the play. So I'm expecting that in the next few years, because it's still in a very infancy stage, but in the next few years, you can think of metaverses to be more of a alternate experience, wherein of course you will have a Web2 experience or a pure a 2D experience. But at the same time, a lot of brands will want to make sure that they're continually upgrading the 3D experience, and of course for that they will need some of the other metaverse platform to be a part of. So definitely extremely excited about this, and like I said, every single day newer and newer projects are coming along, and I think more sustainable projects will last longer. So we have to, continuously track companies which are serious in building those experiences for the end customer, and truly think that there's a value creation for the end customer, and it's just not a PR stunt. So with that, I think my take will be that future is definitely bright, if not present is so bright. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. So this was Mr. Rahul Sethi, founder and metaverse coach of Metaverse 911. He gave us an insight to the current scenario of the metaverse and NFT market. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to subscribe, like and share to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Calvin Harris's first VR concert, scheduled for Friday, January 13th, will be free to view in 2D via his official TikTok account, while fans in Europe and Asia will be able to experience the concert in 3D via Pico virtual reality headsets. Harris will be appearing as a virtual avatar in a digitally animated performance that aims to take fans on a musical journey through Calvin's virtual universe. The concert is described as a metaverse party filled with audio-reactive visuals in a nature-inspired luminous world in the event description. VR headset users will be able to explore Calvin's world as avatars, party together and be a mere few feet away from Calvin while he performs. Gala has increased by more than 143% in the last 24 hours and by more than 60% in 2022. The Scarps After Gala announced a collaboration with Dwayne Johnson and Mark Wahlberg. It aided its Gala tokens 121% increase in 4 days. Gala Games announced on January 6 that it had acquired a mobile game studio with over 20 million users. The studio's total revenue exceeded $100 million and several games are currently available in the App Store.
After several years of development, Apple's first major step into the metaverse, a high-end mixed reality headset, will reportedly be unveiled to the world for the first time this spring. According to a report from Bloomberg, the tech giant is likely to show off its hybrid headset in the coming months ahead of its annual Worldwide Developers Conference, which typically takes place in June. Some third-party developers are reportedly already building apps for the device, which may be called the Reality Pro. After the spring announcement, the combined augmented reality and virtual reality headset will reportedly be released later this year alongside new iPhones and other refreshed Apple devices. The headset's operating system will reportedly be called XROS, although it's said to be called Borealis internally. In the upcoming segment, we will update you about following news. CFTC charges Mango Markets hacker with fraud. BlockFi management has not withdrawn any crypto since October. Lawyer tells court Trump NFT mania gets a very short term as sales nearly vanish. Stay tuned for more updates. Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show and we are at IIT Bombay's Tech Fest 2022. I have with me Mr. Maru Patel, who is the founder and CEO of My Tokenized Capital. Welcome to 3.2 TV. Thank you for having me. It's a pleasure to have you, sir. So, Metaverse has been the buzzword since 2021. And since Facebook rebranded to Meta, all are behind the race to conquer Metaverse. So, according to various reports, Metaverse is going to be a $13 trillion to $18 trillion of market opportunity by 2030. What are your views on this? Okay, so I go back much earlier than that because I was part and blessed with the Java.com internet when it started. So even in the late 1990s, early 2000, when SimCity and all these things happened, in my view, that's when the metaverse movement really started. And I was visionary even then. So roll forward another 20 years and where do I see it? So what I see with most of the metaverses just now is gamification, Oculus-based things. The day people develop things without the need of that to hit more than 1 billion people is the day this metaverse thing will start. So we are also part of that movement where we're developing my vision, which is called My Real Universe. And the reason why I say My Real Universe is because the minute you start looking at your universe, so I have like 800 odd apps in here. I want my life easier. I don't have to do this, cut, paste, put in one to the other, multiple banking apps, multiple exchange apps, multiple shopping apps, travel apps, hotels, restaurants. It's a nightmare. Instead, normal classes, voice control. I want to book this. Show me, and it shows you. I want to travel to. I want to buy this. Exchange my money and put it from here to there. None of this case, cut, paste, addresses, putting your wallet. So we are building that superverse to create that My Real Universe where not only will you visualize content and providers, but we will even encourage the content providers to share the revenue from the profits they make to the community to make it more viral. And we've tokenized that whole
process right down to likes, comments, and share. That's interesting. So that's all we expect from a ideal metaverse. Sir, can you share some details on user base and some investments and tie-ups on your platform? Okay, so on our platform, we've got 3 tie-ups. For the metaverse bit, we've got 3 tie-ups with wallet provision. It is my second digital bank and my second exchange. So I'm used to this stuff, right? I'm one of the early OGs there. So what we are doing is, we are not doing this what I call tie-up by memorandum of understanding or swap each other's logos. We are actually investing in company, taking equity positions. I become a non-exec board member, and we're putting next 2 weeks another 65 million, followed by another $250 million, and going up to 1.5 billion already committed by Q2 next year, right? So it's about coaching, mentoring, how the vision and that super app to give people money for everything they do in life, connected to what I call a sustainable world with solving the world's problem. So the metaverse couldn't be a better way of delivering this. So developer hiring is quite painful. How do you think when we can solve this? So what we are looking at is places like IIT, Stanford, Oxford, and a university in Amsterdam and France. So we are going to take this and incentivize serious developers and all that through competitions, hack, proof of concepts and all that. And then where we find better teams, we'll bring them in, nurture them, mentor them, coach them, and make them part of the company without having to sit there looking for job applications. And they win money in the back of it. So various companies are betting on metaverse, and likewise the countries too are betting big on metaverse, where Dubai is all set with its metaverse strategy and wants to become the center of Web3. So where do you see Dubai in the next 5 years? Okay, so Dubai, I've been involved in quite a lot of the visionary stuff there as well, as I live in Dubai. So there are so many things. If you look at the whole Dubai industry, why do people go there? They go there to create their business. They go there for the obvious tax benefits. They go there for lifestyle. They go there for holidays, vacations. They go there to invest in various things, properties, all that. They go there for shopping. They go for entertainment, that sort of thing. Again, if you think about what I said about my real universe, so that's your real universe, right? Now, yes, Dubai is building everything from land on metaverse, where you can build and put your projects on there, through to shopping malls, through to entertainment places, through to gaming, and all these things, banking, all on the metaverse. So they're already doing that. And I know a lot of companies, and I've invested in a few as well myself, right? Since you said that a lot of companies have invested in it, so investors are quite optimistic about metaverse, but they are a bit dubious, like how much revenue it will generate. So what are your views on this? Okay, so if you're an investor, don't expect and harass the founders every few months. What's happening? Where's the revenue? This thing will take minimum 12 months, minimum, all right, to see some reasonable revenue. Because to attract the user to come there and use it, you'll have the same old cycle we went through when .com started. So you'll have the early adopters. Who are the early adopters just now? Are the gaming kind of guys, the crypto guys, the exchange guys, the geeks of the world who want to buy in a different experience, right? So that will be your early adopters. The volume is not big, so those companies cannot sustain that. So where we come in and other investment companies come in, we fund them and finance them to take them through to that next 12, 24 months before even dreaming about revenue, profit share, and things like that. Because the minute you give them pressure, that's when they die, right? So in my view, what Dubai is doing, it's got investments coming from numerous places. It's got various events. Man, I did nearly 70 events last year in a space of less than 2 months. So he's got so much content, so much brains from all around the world. Exactly. So all that type, even last week I went to one of my friends' metaverse launch. So he's doing a shopping mall, yeah, and we're going to invest there. He's doing a shopping mall,
and has already started tying up with the LVMH and Sephora's of the world and the Nikes and Adidas and people like that. So I see that in my real universe where people will just go, yep, this, that, and the other. So, how do you think the digital identities such as blockchain, NFTs are going to shape the metaverse forward? So, the biggest problem with digital identity, in my view, is it's replicated on every single platform. You know, I'm Rupatel, I have X amount of ID things. Why not just a single Rupatel that is interoperable, every single platform going? Web3 will help that into a reality. So when people develop that platform, that's only me, and be it retina, fingerprint, voice, whatever 2-3 PFA kind of mechanisms are used for identity, then away you go. The traditional things with phone and SMS and all that, yeah, it's secure, but not that secure, right? So when all those come into the forefront, which is, in my view, at scale in the next 12 to 24 months maximum, that's when you see this whole metaverse Web3 thing exploding. So, metaverse is going to be the future of internet. But Metaverse and Web3 together. do you think the future of metaverse is bright, and what do you expect from 2023? So 23 will see a lot of different metaverses. I know many people building various metaverses and metaverses, some people call it, like, dare I say, Joel from MetaMask. Anyway, so there are various platforms being built, right? The interoperability on-chain, off-chain, the Web3 based of transactions from wallet, these are the key problems that I think will be solved next 12 months. Once that is solved, 24 onwards, in my view, we'll then see a lot of action. All right, so thank you so much, sir, for sharing your insights on metaverse and being on 302 TV. Thank you so much. Most welcome. Thank you. The Commodity Futures Trading Commission filed charges against Avram Eisenberg on Monday, accusing him of manipulating the Mango Markets decentralized exchange and stealing over $110 million in digital assets. The news comes a week after the Department of Justice charged Eisenberg with the October 11, 2022 hack. The goal of defendant's scheme was straightforward: to artificially inflate the value of his swap contract holdings on Mango Markets through price manipulation so that he could borrow a significant amount of digital assets that he had no intention to repay, the CTFC wrote in its filing. Mango Markets is a Solana-based decentralized exchange governed by a DAO made up of holders of its native token, Mango, that lets investors lend, borrow, swap, and use leverage to trade crypto. Executives of bankrupt crypto lender BlockFi have not withdrawn any of their own cryptocurrencies locked up in the platform since October, a lawyer for the company told a U.S. bankruptcy court for the District of New Jersey on Monday, contrasting it to fellow bankrupt crypto lender Celsius Network. BlockFi filed for bankruptcy in November, shortly after the collapse of crypto exchange FTX. Joshua Sussberg, a partner at law firm Kirkland & Ellis and representative for BlockFi, said BlockFi plans to file its assets and liabilities along with a statement of financial affairs on Wednesday, which BlockFi later confirmed on Twitter. Shortly after the first hearing in November, the company kicked off a sale process and has reached out to 106 domestic and international potential buyers for some or all of the business, Sussberg's presentation said. The company plans to ask for court approval of bidding procedures at a Jan 30 hearing. It's been less than a month since Donald Trump's official NFT trading cards launched
to a mostly perplexed response even from his supporters, and the ensuing hype was sizable but short-lived. Now, the NFT trading card project has slumped to new lows as trading demand continues to vanish. Secondary market trading volume for the Trump Digital Trading Cards project hit a new daily low of just over $21,000 on Sunday per data from CryptoSlam. The largest single-day tally for the project so far in 2023 is just shy of $33,000 on January 5. Sunday's tally marks a more than 99% decrease in daily volume from the peak day on December 17, when more than $3.5 million worth of the NFTs were traded soon after original primary sale. There were more than 2,000 unique buyers on that date last month and over 3,300 unique buyers on December 16 as prices started climbing. But on Sunday, when sales volume hit a new daily low, CryptoSlam reported just 28 unique buyers across 98 total transactions. That's all in this bulletin. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं मनोज दारा और मैं हूं रुचि शर्मा। इंडिया, वो देश जहां हमेशा से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद रहा है, वो अब नई टेक्नोलॉजी को भी सलाम कर रहा है। जी हां, धरती से सोना उगाने वाला ये देश अब टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में सबसे आगे निकलने की ठान चुका है। बिल्कुल, ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कॉटन कल्टीवेशन से जुड़े कि मामले में इंडिया वर्ल्ड के सबसे आगे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन 10.5 मिलियन हेक्टेयर्स में होता था और अब ये आंकड़ा बढ़कर 12.2 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है, जो कि वर्ल्ड एरिया का लगभग 37% हिस्सा है। ऐसे में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 के पायदान पर पहुंच चुका है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी का विजन और ये नारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को सच करके दिखा रहा है भारत। यकीनन। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम आज कॉटन इंडस्ट्री के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो इसीलिए क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत और उसके फायदों को न सिर्फ पहचान गई है, बल्कि बढ़ चढ़कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही है। बिल्कुल, नई टेक्नोलॉजी के साथ कौन अपने देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। कुछ ऐसे ही विजन रखते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी, जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर्स से अर्ज किया है कि वो कंज्यूमर्स को हाईएस्ट क्वालिटी एंश्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एक्सप्लोर करें। जी हाँ मनोज, पीयूष गोयल ने फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि फार्म टू फॉरेन में कॉटन की ट्रेसेबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विचार किया जा रहा है और इसे शुरुआत में छोटे पैमाने पर आजमाया जाएगा और फिर वक्त के साथ इसे एक्सपैंड किया जाएगा। रुचि, लेकिन ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है और ये तो होना ही था, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इनहेरेंट नेचर को बदलते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से लेकर प्रोडक्ट्स का शेल्फ्स पर पहुंचने तक का ये जो सारा सफर है, नजर रखने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने पिछले 1 साल में तेजी देखी गई है। इम्यूटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जैसे फीचर्स की मदद से यूजर्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप की हिस्ट्री को
देखना पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल मनोज, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और आपको बता दूं कि RFID या QR कोड्स की मदद से सप्लाई चेन प्रोसेस में DLT का इस्तेमाल करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। ऐसे में कॉटन जैसे नॉन मॉडिफिएबल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में डॉक्यूमेंट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के इस्तेमाल से ऐसे गुड्स के लिए ये भी मुमकिन हो पा रहा है। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की आपने बात कही, बिल्कुल रुचि। इनफैक्ट 2020 में यूरोप के लिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप विच इज UNECE ने हुगो बॉस बर्बेरी और दूसरी फर्म्स के कोलैबोरेशन से गारमेंट इंडस्ट्री में कॉटन की ट्रेसेबिलिटी में सुधार के लिए DLT का इस्तेमाल करने के लिए एक पायलट कैरी आउट किया भी था। बिल्कुल, इतना ही नहीं मनोज, उस समय UNECE ने नोट किया था कि पायलट का पर्पस एक सॉफ्टवेयर या एक कमर्शियल सॉल्यूशन बनाना नहीं था, बल्कि सभी इंडस्ट्री एक्टर्स को फ्री में अवेलेबल एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। बिल्कुल जाहिर है कि टेक्नोलॉजी की इस रेस में इंडिया क्यों पीछे रहे, इसलिए श्री पीयूष गोयल ने FTCCI कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स में अपने बजट का मिनिमम 5% वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विच इज ODOP स्कीम के लिए इनहेरेंट करने की रिक्वेस्ट की है। इंडिया दुनिया में कॉटन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स का हिस्सा है, ग्लोबल प्रोडक्शन रेट के इंप्रेसिव 22% भी कमांड करता है। बिल्कुल, अब चलिए आपको इंडिया की ब्लॉकचेन अडॉप्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इंडिया की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट फॉर्जरी का मुकाबला करने और लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस में सुधार करने के लिए DLT का रुख किया है। क्यों ना हो रुचि, बिकॉज DLT डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इट इज एक्चुअली अ वेरी बेस्ट एंड बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। वहीं तेलंगाना के साउथ इंडियन स्टेट इज द रीजन में DLT एडॉप्शन के पेस को सेट कर रहा है। प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने की अनुमति देने के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स भी बनाया है। बिल्कुल, दूसरी तरफ केरला स्टेट ने घोषणा की थी कि वो अपने डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल के जरिए मिल्क, वेजिटेबल्स और फिश जैसी खराब होने वाली आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए DLT का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी अगर उनको मिलती है तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर कि हर स्टेज पर वो अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैप भी कर सकते हैं। खास बात तो यही है रुचि कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो कुछ साल में 46% DLT को अपनाने पर विचार भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जी हाँ, सही आपने बिल्कुल कहा यहाँ पे, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं ये तो महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इंडिया में अब तक कई अलग अलग काम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया जा चुका है और वो दिन दूर नहीं जब हर एक चीज में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के किन स्टेट्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ये डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये डिटेल्स आप जान सकते हैं। हमने बात की अजय केडिया जो कि केडिया सिक्योरिटीज के फाउंडर भी है। आइए जान लेते हैं उनका कॉटन सेक्टर पर आउटलुक क्या है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम देखें तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा है बिकॉज इंडिया का डेमोग्राफिक भी काफ़ी बड़ा है। देखिए, जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक छोटा सेक्टर नहीं है, इंडिया के डेमोग्राफिक के हिसाब से काफ़ी बड़ा सेक्टर है और काफ़ी वाइडली डाइवर्सिफाई है। हम देखते हैं टेक्सटाइल में कुछ स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ स्टेट्स के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है और सेल्स भी हम देखते हैं पैन इंडिया होती है। तो काफ़ी वेरियस डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस है डेमोग्राफिक की वजह से। लीकेजेस काफी ज्यादा है या प्रोडक्टिविटी जो आनी चाहिए थी एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया काफी पिछड़ रहा है। एज ऑफ नाउ लीकेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने बड़े डेमोग्राफिक कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर लॉजिस्टिक गुड्स कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ लीकेजेस है, या प्रोडक्शन जब होता है हम देखते हैं मंडियों में फार्मर्स की अराइवल्स आती है बट उसका डेटा नहीं मिल पाता है जो पॉलिसी डिसीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अब तक हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट की काउंटिंग या एक्सपोर्ट की जो स्टैटिस्टिक है वो काफी हद तक सपोर्टिव और हमें एक अपडेट प्रॉपर मिलता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के अंदर अगर हम बात करें फार्मर टू ट्रेडर, ट्रेडर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, तो ये सारे डेटा है उसको सिंक रहना चाहिए, तो ही हम कोई भी इंडस्ट्री के लिए जब डैशबोर्ड बनता है या इंडस्ट्री को
तो तभी जाके हेल्प होती है। तो काफ़ी चैलेंजेस है, और इंडिया में चैलेंजेस इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक साइज है वो काफ़ी बड़ा है। अदरवाइज आज प्रोडक्शन के लिहाज से भी अगर हम देखें तो लगभग हम 350 लाख बेल्स के आसपास का प्रोडक्शन करते हैं। दुनिया में टॉप 3 में हमारा प्रोडक्शन आते हैं। बट जो साइज ऑफ लैंड है उसको कैसे इंप्रूव करे, सेल्स को कैसे इंप्रूव करे, तो जब तक कोई हमारे पास एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं आती है तब तक ये चैलेंजेस है वो कंटिन्यू हमारे इंडिया में दिखते रहेंगे। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी लीकेजेस मार्केट में बने हुए हैं। तो ये सब चैलेंजेस आज की डेट में टेक्सटाइल सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि इंडिया का प्रोडक्शन अच्छा नहीं, इंडिया का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, इंडिया का कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है, बट जो लीकेजेस है उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए कोई एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए। अजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आगाज नहीं हुआ था या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन नहीं हुआ था कॉटन इंडस्ट्री या किसी और इंडस्ट्री में, तब जो फार्मर्स हैं वो किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे थे? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है आज की डेट में, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस रहता है वो काफी हद तक बायर और सेलर के बीच में कम हो जाता है। साथ में अगर वैल्यू चेन पार्टिसिपेट के अंदर सप्लाई मैनेजमेंट है, यहाँ पे हम लोग तकलीफ देख रहे हैं इंडिया में, बिकॉज डेमोग्राफिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, हमारे जो कैश फ्लो है वो अटक जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अननेसेसरी जो कैश रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ लीकेजेस इन सिस्टम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाए। लेकिन बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो काफ़ी नई है इंडिया के लिए और एक्चुअली कारगर है काफ़ी, क्योंकि इंटरनेशनल में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अगर इंडिया में खास करके अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो ये बायर और सेलर को एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए एक सीमलेस प्लेटफॉर्म देगा, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एंड ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा, वो भी लोअर कॉस्ट पे। साथ में ईच स्टेज पे हम देख सकते हैं कि ऑडिट एंड ट्रायल रहेगा कि कहाँ पे लीकेजेस है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज ट्रैक होगी तो ही उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। और साथ में ब्लॉकचेन हमें हेल्प कर सकती है फ्रॉड इन टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं प्राइस डिस्पैरिटी या फिर ओनरशिप इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, ये काफ़ी इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकेस कुछ भी कंसर्न्स है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए उसको हम प्रॉपर मार्किंग कर सकते हैं, प्रॉपर उसका ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉपर उसका ट्रेल ले सकते हैं हम लोग। तो जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स परचेजेस ट्रांजेक्शन हुए हैं या होने वाले हैं ये एक सिमलेस एक साइकिल से गुजरते हुए दिखाई देंगे। और इनफैक्ट जैसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि आप इस सेक्टर में लगभग 20-25 साल से इस सेक्टर को ट्रैक भी कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से ये सेक्टर को कितना फायदा होगा आपकी राय से? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी वेरियस सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। खास करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज काफी रहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इस चीज को एक सीमलेस लाइन में लाया जा सकता है, जो ट्रैक एंड ट्रायल्स रख सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर भी प्रॉपर जैसे हम मटेरियल कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने लीकेजेस है, ये सब ट्रैक एंड ट्रायल हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर इन जैसे हमने रिसेंटली देखे, हमारे पीयूष गोयल जी ने जो स्टेप के लिए बताई है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली जो लीकेजेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी हद तक कम होगा, और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के बाद मे भी हम जो ग्रोथ देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की वो और बूस्ट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी के लिए और काफी जॉब क्रिएशन भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से जो लीकेजेस है वो काफी हद तक कम हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और 3.0 को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। Web3 की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई।
पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3 टीवी के स्टूडियो में हूँ। माई पॉइंट इज दैट अगर मैं एक सिंगल ग्रीन स्क्रीन के साथ इतनी इमेजिनरी उड़ान भर सकती हूँ, तो जरा सोचिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ विजनरी फिल्म मेकर क्या नहीं कर सकते। और जहां विजनरी फिल्म मेकर्स की बात आती है, वहां एंटरटेनमेंट की दुनिया के दिग्गज राइटर, डायरेक्टर और इन्वेंटर जेम्स कैमरन का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर 2, एलियंस, टोटल रिकॉल और टाइटैनिक जैसी ब्रेथ टेकिंग मूवीज बनाने के बाद वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं ऐसी पेशकश जिसने सबका दिल नीला नीला कर दिया है। अब इस नीले नीले क्लू से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार 1 ने ब्रेथ टेकिंग न्यू 3D टेक्नोलॉजी के जरिए मानो हर तरफ सनसनी मचा दी थी। कैमरन ने इस फिल्म को 10 साल पहले ही अपने मन में आकार दे दिया था, लेकिन उसे दर्शकों के बीच लाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को बनाने में उन्हें लंबा समय लग गया। रिलीज के बाद सिनेमा की दुनिया को एक नया आयाम देने वाली फिल्म ने सभी का फिल्म देखने का नजरिया ही बदल दिया। फिल्म मेकिंग के तरीकों में क्रांति लाने के लिए कैमरन ने रियल फुटेज और मोशन कैप्चर्ड CGI को मिक्स कर 3D और CGI को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए खुद टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। $237 मिलियन के भारी भरकम बजट से बनी अवतार ने वर्ल्ड वाइड $2.92 बिलियन की कमाई की थी। अवतार 1 आज तक की वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ब्लॉकबस्टर है। The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much. I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. It is just remarkable to be able to see the movements and the performance go straight into the character. And it's like, there's Kate and then, hey, there's Renard. So that has been fascinating to me. What is this? Don't know what अवतार ही नहीं बल्कि इसके पहले भी अपनी सभी फिल्मों में जेम्स कैमरन ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अवतार को नोवेल टेक्नोलॉजी इमेज बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर ने अलग बनाया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान एक्टर्स को कैमरे से लैस स्पेशल हेडगियर को सिर पर पहनना था। CGI के अलावा बड़े पर्दे पर अवतार को दर्शकों के सामने लाने के लिए डिजिटल एनिमेशन, स्टेरियोस्कोपिक 3D फ्यूजन कैमरा सिस्टम, वर्चुअल कैमरा और साइमल कैम जैसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया था। कैमरन एक कहानीकार के रूप में समझाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को टूल किट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर किस तरह से रियलिस्टिक टच दिया जा सकता है। कैमरन ने अपनी फिल्म मेकिंग से ये साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अहम भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं रिसेंटली रिलीज अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में। तो इस फिल्म में भी जेम्स कैमरन ने इसे अवतार 1 से भी विजुअली बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अवतार 2 में फिल्म मेकर ने सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस फिल्म को उन्होंने कैसे शूट किया। तकरीबन $400 मिलियन के बजट में बनी अवतार 2 ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। ऐसे में देखते हैं कैमरन की टेक्नोलॉजी से बनी फिल्म में मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से फिल्म को इन्फ्लुएंस किया है। सबसे पहला नाम वर्चुअल रियलिटी का आता है, जिसकी मदद से रियल अंडर वाटर एक्सपीरियंस को दर्शकों ने ऑन स्क्रीन अनुभव किया है। फिल्म की कास्ट और क्रू ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से रियल टाइम में इमेजिनरी पेंडोरा को एक्सप्लोर किया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑगमेंटेड रियलिटी का आता है। पेंडोरा की दुनिया AR की वजह से ही रियलिस्टिक लगती है। जटिल शरीर वाले एलियंस की फिल्म में AR के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, जिसे परफॉर्मेंस कैप्चर के रूप में भी जाना जाता है। ये लोगों या वस्तुओं के मोशंस की रिकॉर्डिंग और उन मोशंस को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एनिमेटेड वस्तुओं में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही खत्म होती है हमारी आज की स्पेशल स्टोरी, लेकिन अवतार मूवी सीरीज का सिलसिला जारी रहेगा। जेम्स कैमरन ने अवतार 3 पर काम शुरू कर दिया है। भाई मैं तो अवतार 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप भी होंगे।
दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, स्वागत है आपका 3.0 टीवी में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को हमने अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा तो बना लिया है और बेशक टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जीवन काफी हद तक आसान भी हो गया है। आजकल वेब3 टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। वेब3 दुनिया की सबसे लोकप्रिय टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरा विश्व अपना रहा है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे, पर क्या आपको पता है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अब भारत की सरकार ने भी अपनाया है। उसे पूरे जोरों शोरों से हर क्षेत्र में उपयोग करना भी शुरू कर दिया है, चाहे क्षेत्र टेलीकॉम का हो, टी बोर्ड, सेबी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर या फिर टूरिज्म। इन क्षेत्रों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसके बेहद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी फीचर की वजह से उपयोग किया जा रहा है। इन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत सरकार ने भारतीयों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और भारत की डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रण किया है। इसलिए भारत सरकार की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बेलफ्रिक्स नामक कंपनी को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नियुक्त किया है। ये कंपनी विदेशी कंपनी लाइफ क्लिप्स INC की सब्सिडियरी है, जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तकनीक की सहायता प्रदान करती है और जिनके हेडक्वार्टर्स एवेंचुरा, फ्लोरिडा और यूनाइटेड स्टेट्स में भी मौजूद है। बेलफ्रिक्स कंपनी अपने डिसेंट्रलाइज्ड बेल शेयर एप्लीकेशन का उपयोग करके जून 2023 के अंत तक लगभग 1 अरब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पहचान पत्र जारी करेगी। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में 14 डिजिट नंबर होगा, जो विशिष्ट रूप से व्यक्तियों को भारत के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स के रूप में पहचाना जाएगा। किसी व्यक्ति का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा नंबर एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान स्थापित करेगा, जिसे देश भर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स स्वीकार करेंगे। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो पिछले 2 साल में कोविड-19 की महामारी के दौरान इंडियन डिजिटल हेल्थ केयर मार्केट ने काफी तेजी पकड़ी और हेल्थ केयर इकोसिस्टम में डिजिटल परिवर्तन की पहल कर दी। भारत सरकार के अनुसार ये तेजी 2027 तक ये $10.7 बिलियन यानी करीब 882 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। बेलफ्रिक्स BT के डायरेक्टर वजीम जदीर ने कहा कि आइडेंटिटी डैप का उपयोग भारत के सभी राज्यों में डिजिटल हेल्थ केयर आइडेंटिटी यानी आभा ID जारी करने के लिए किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट ID और हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बेलशेयर वॉलेट में स्टोर किया जाएगा, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर बनाया गया है। तो वजीम जदीर आगे कहते हैं कि बेलफ्रिक्स गवर्नमेंट हेल्थ केयर डेटा को इंटरऑपरेट करने के लिए फैसिलिटीज और प्रैक्टिशनर मॉडल्स को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों से भी संपर्क करेगा। इस प्रोजेक्ट में बेलफ्रिक्स की तकनीकी सहायता करने वाली कंपनी योसिन के संस्थापक सतीर शेखर ने कहा कि ये हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत प्रक्रिया में क्रांति लाएगा। तो भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वास्तविक दुनिया के किन किन समस्या को हल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए आप सभी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना भी बेहद जरूरी है, ताकि इस टेक्नोलॉजी के साथ आप भी अपडेटेड रहें। ऐसे ही वेब3 दुनिया में हो रही सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।
नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्ष की शुरुआत के बाद से टॉप क्रिप्टो करेंसी में तेज बढ़त नजर आ रही है। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों ने 24 घंटे की रैली का अनुभव किया, जिससे वे 3 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले दिन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 1.30% की बढ़त हुई है, जिससे टोटल $850 बिलियन हो गया है। 24 घंटे की टोटल वॉल्यूम 88.95% बढ़कर $45.35 बिलियन हो गई है, जिसमें डीफाई का हिसाब उस फिगर का 8.22% है। स्टेबल कॉइन्स की टोटल वॉल्यूम अब 24 घंटे के मार्केट का 91.98% है, जो $41.71 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.34% से थोड़ा कम होकर 38.98% पर आ गया है। सोलाना का बॉन्क 24 घंटे में 50% क्रैश हो गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने $17,200 पर फ्लैट ट्रेड किया, जबकि ईथर ने पिछले 24 घंटे में 2% की बढ़त के साथ $1,325 के आसपास ट्रेड किया। धीमी शुरुआत के बाद से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने रफ्तार पकड़ी है। CBDCR के रिटेल यूजर्स की संख्या इस महीने के अंत तक 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में ये संख्या करीब 16,000 है और भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 1 दिसंबर को ई-रूपी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि डिजिटल करेंसी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। सूत्रों ने कहा, पायलट के लॉन्च के बाद से लगभग 16,000 यूजर्स ने लगभग 64 लाख रुपए लेने का लेन देन किया और इस्तेमाल में आसानी, जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ बिंदुओं के साथ उम्मीद है कि रफ्तार और तेज हो सकती है। डिजिटल रूपी होलसेल पर पायलट 1 नवंबर को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में ई-रूपी डब्ल्यू के लिए एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 200 करोड़ है। रिटेल पायलट प्रोजेक्ट में 8 बैंक भाग ले रहे हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, द येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। ई-रूपी का इस्तेमाल वॉलंटरी है और ये सर्कुलेशन में टोटल करेंसी का हिस्सा है। 8 जनवरी को पोस्ट की गई एक लीगल फाइलिंग के अनुसार लगभग 117 पार्टियों ने इनिशियल बिड्स की समय सीमा के रूप में FTX यूनिट्स को खरीदने में रुचि व्यक्त की है, जबकि क्रिप्टो कंपनी के बैंक्रप्सी के केस में सालों लग सकते हैं। लेजरएक्स, FTX जापान, FTX यूरोप और स्टॉक क्लियरिंग प्लेटफॉर्म एम्बेड की बिक्री को प्राथमिकता दी है, ये दावा करते हुए कि वे जल्दी से नहीं बेचे जाने पर अलग होने और वैल्यू खोने का जोखिम उठाने में सबसे आसान है। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए FTX ग्रुप द्वारा हायर्ड इन्वेस्टमेंट बैंक पेरेला विनबर्ग के एक पार्टनर पेरेला विनबर्ग द्वारा साइंड एक लीगल डिक्लेरेशन के अनुसार 8 जनवरी तक ग्लोबली अलग अलग फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक काउंटरपार्टी सहित लगभग 117 पार्टियों ने डेटर्स के लिए एक या अधिक बिजनेसेस की संभावित खरीद में रुचि व्यक्त की है। कॉफस्काई के अनुसार अब तक FTX ने 59 कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स पर साइन किया है। लेजरएक्स, FTX US की डेरिवेटिव्स आर्म और एम्पायर की कुछ बची हुई कंपनियों में से एक 56 एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैक को लीड करती है। 9 जनवरी को फ्रांस की फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी की अध्यक्ष मैरी एनी बाबेट लायनी क्रिप्टो कंपनियों को एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मजबूर करना चाहती हैं, अगर वे पहले से ही देश में रजिस्टर्ड नहीं हैं। बाबेट लायनी पिछले साल फ्रेंच सेनेट द्वारा प्रस्तावित एक कदम का समर्थन करते हुए दिखाई दी थी, जिसके लिए क्रिप्टो फर्म्स को यूरोपियन यूनियन के नए MiCA रेगुलेशन से पहले कुछ रेगुलेटरी रिकॉग्निशन प्राप्त करने की जरूरत होगी, जो 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी होने के लिए तैयार है। रेगुलेटर के एक ट्वीट के अनुसार बाबेट लायनी ने एक इवेंट में कहा कि AMF पार्लियामेंट की तरह क्रिप्टो सर्विसेज के नॉन रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स के लिए मैंडेटरी लाइसेंसिंग के एक शासन के लिए एक क्विक ट्रांजिशन को बुलावा देता है। बायनांस सहित कई जाने-मानी कंपनियां ने AMF के साथ रजिस्टर किया है और रजिस्ट्रेशन में कंपनियों के गवर्नेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अनुपालन की जांच शामिल है। किसी भी प्रदाता को अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये फ्रेंच लॉ के तहत निर्धारित एक वॉलंटरी प्रोसीजर है।
कैल्विन हैरिस का पहला विया कॉन्सर्ट शुक्रवार 13 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जो उसके आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट के माध्यम से 2D में देखने के लिए फ्री होगा, जबकि यूरोप और एशिया के फैंस पिको वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के माध्यम से 3D में कॉन्सर्ट का अनुभव कर सकेंगे। हैरिस डिजिटली एनिमेटेड परफॉर्मेंस में एक वर्चुअल एवेटार के रूप में दिखाई देंगे, जिसका एम फैंस को कैल्विन के वर्चुअल यूनिवर्स के माध्यम से एक म्यूजिकल जर्नी पर ले जाना है। पिछले 24 घंटों में गाला में 143% से ज्यादा और 2022 में 60% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये गाला द्वारा ड्वेन जॉनसन और मार्क वेलबर्ग के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा के बाद आया है। इसने 4 दिनों में अपने गाला टोकन की 121% वृद्धि में सहायता की। गाला गेम्स ने 6 जनवरी को घोषणा की कि उसने 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ एक मोबाइल गेम स्टूडियो का अधिग्रहण किया है। स्टूडियो का टोटल रेवेन्यू $100 मिलियन से ज्यादा हो गया है और कई गेम वर्तमान में ऐप स्टोर में अवेलेबल भी हैं। कई सालों के विकास के बाद एप्पल का मेटावर्स में पहला बड़ा कदम एक हाई एंड मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कथित तौर पर इस स्प्रिंग सीजन में पहली बार दुनिया के लिए अनावरण किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी दिग्गज आने वाले महीनों में अपने एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस से पहले अपने हाइब्रिड हेडसेट को प्रदर्शित करने की संभावना है, जो आमतौर पर जून में होता है। कुछ थर्ड पार्टी डेवलपर्स कथित तौर पर पहले से ही डिवाइस के लिए ऐप बना रहे हैं, जिसे रियलिटी प्रो कहा जा सकता है। स्प्रिंग सीजन के घोषणा के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कथित तौर पर इस साल के अंत में नए आईफोन्स और दूसरे कई रिफ्रेश्ड एप्पल डिवाइसेस के साथ जारी किए जाएंगे। कथित तौर पर हेडसेट के ऑपरेटिंग सिस्टम को XROS कहा जाएगा, हालांकि इसे इंटरनली बोरियलिस कहा जाता है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने सोमवार को अब्राहम ईजनबर्ग के खिलाफ मैंगो मार्केट्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हेरफेर करने और डिजिटल एसेट्स में $110 मिलियन से ज्यादा चोरी करने का आरोप लगाया। जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा 11 अक्टूबर 2022 हैक के साथ ईजनबर्ग पर आरोप लगाए जाने के एक हफ्ते बाद ये खबर आई है। CTFC ने इसकी फाइलिंग में लिखा, प्रतिवादी की योजना का लक्ष्य सीधा था, मूल्य हेरफेर के जरिए मैंगो मार्केट्स पर अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग्स के मूल्य को आर्टिफिशियली बढ़ाना, ताकि वह बड़ी मात्रा में डिजिटल एसेट्स बोरो कर सके, जिसे चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैंगो मार्केट्स एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो एक DAO द्वारा शासित है, जो अपने नेटिव टोकन MNGO के होल्डर से बना है, जो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए लेंड, बोरो, स्वैप और लीवरेज का इस्तेमाल करने देता है। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क के विपरीत बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई के अधिकारियों ने अक्टूबर से प्लेटफॉर्म में बंद अपनी खुद की किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वापस नहीं लिया है। कंपनी के एक वकील ने सोमवार को न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक US बैंकरप्सी कोर्ट को बताया है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के तुरंत बाद नवंबर में ब्लॉकफाई ने बैंकरप्सी के लिए दायर किया था। लॉ फर्म कर्कलैंड एंड एलिस के पार्टनर और ब्लॉकफाई के प्रतिनिधि जोशुआ ससबर्ग ने कहा कि ब्लॉकफाई ने बुधवार को फाइनेंशियल अफेयर्स के एक बयान के साथ अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को फाइल करने की योजना बनाई है, जिसे ब्लॉकफाई ने बाद में ट्विटर पर पुष्टि की। ससबर्ग के प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि नवंबर में पहली सुनवाई के तुरंत बाद कंपनी ने एक सेल प्रोसेस शुरू की है और कुछ या सभी बिजनेस के लिए 106 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच गई। कंपनी 30 जनवरी की सुनवाई में बिडिंग प्रोसीजर्स की कोर्ट अप्रूवल के लिए पूछने की योजना बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल NFT ट्रेडिंग कार्ड्स जारी किए हुए एक महीने से भी कम समय बीत चुका है। यहाँ तक कि उनके समर्थकों से भी काफी हद तक हैरान कर देने वाली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जैसे जैसे ट्रेडिंग डिमांड में गिरावट जारी है, NFT ट्रेडिंग कार्ड प्रोजेक्ट अब नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रिप्टो स्लैम के डेटा के मुताबिक रविवार को ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स प्रोजेक्ट के लिए सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग की वॉल्यूम $21,000 से थोड़े ज्यादा के नए दैनिक निचले स्तर पर पहुंच गई। 2023 में अब तक 5 जनवरी को प्रोजेक्ट के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे टैली देखी गई है, जो $33,000 से थोड़ी कम है। रविवार की टैली 17 दिसंबर की चरम दिन में तुलना में डेली वॉल्यूम में 99% से ज्यादा की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है।
जब ओरिजिनल प्राइमरी सेल के तुरंत बाद $3.5 मिलियन से ज्यादा मूल्य के NFTs को ट्रेड किया गया था। एक महीने पहले उसी दिन 2000 से ज्यादा यूनिक बायर्स थे और 16 दिसंबर को जैसे ही कीमतें बढ़ने लगी 3300 से ज्यादा यूनिक बायर्स थे क्योंकि कीमतों में वृद्धि शुरू हुई थी। लेकिन रविवार को जब सेल्स वॉल्यूम एक नए दैनिक निचले स्तर पर पहुंच गया तो क्रिप्टो स्लैम ने टोटल 98 ट्रांजैक्शन में सिर्फ 28 यूनिक बायर्स की सूचना दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I'm your host Ruchi Sharma. And today we are going to talk about institutional crypto custody and how banks are housing digital assets. But before moving ahead, please like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. Despite the crypto winter, banks are now dipping their toes in crypto custody sector in anticipation of institutional investors adopting cryptocurrencies to hedge the risk from traditional finance. Until 2020, most of the crypto market action was largely driven by retail enthusiasm. It was only around August 2020 that institutions started to participate meaningfully in this asset class. As the United States Federal Reserve unleashed trillions of dollars of liquidity into the market during the COVID-19 pandemic, retail and institutional investors jumped onto the cryptocurrency bandwagon. While crypto loyalists claim large-scale institutional adoption over the last couple of years, the entire asset class is only around $1 trillion in size. That is quite small when compared to the gold market of $11 trillion and the bond market of over $100 trillion. There is still a long way to go for the institutional adoption of crypto and blockchain-based digital assets. Some institutions, particularly top-tier banks and fintech firms, have started building capabilities to offer digital asset products and services to their clients. This is because banks and fintech firms are starting to see cryptos
NFTs and other digital assets as a systemically important asset class. Not offering these products and services to their clients would be leaving a pot of money on the table. These clients that banks serve vary from hedge funds, asset managers, family offices, corporations, small and medium enterprises to even retail customers. However, it is easier for banks to serve their institutional clients first, as they would have to go through lower regulatory hurdles than when serving a retail audience. Financial institutions have focused on a few capabilities that have lower regulatory hurdles, such as custody and data analytics within the crypto space. While this is largely true with banks, fintech firms have taken a more retail-friendly approach. For instance, Revolut offers crypto services to its customers. What is digital asset custody? Digital asset custody is the process of storing cryptos, NFTs, and other forms of digital assets safely and securely. A new user typically creates an account on an exchange like Coinbase or Binance and buys cryptos there. These cryptocurrencies sitting in their exchange accounts are under the custody of the exchange. However, if a user wants to take custody of their digital asset holdings, they would typically move them to a wallet like MetaMask or Phantom. This is called self-custody. This can be intimidating for users as it requires remembering a private key. To date, about 4 million bitcoins have been lost due to owners losing their private keys. Self-custody may not be a solution for everyone. At the same time, institutions that provide custodial services to clients have had their dark days too. For instance, Celsius, a centralized crypto lending platform, held custody of its client assets and have had troubles servicing its customers. As markets hit peak crisis through the Terra episode, Celsius wasn't able to return the crypto assets of their customers due to poor liquidity management practices. Therefore, institutions offering custodial services must have high risk management standards to ensure their clients' digital asset holdings are safe and liquid. How do financial institutions approach digital asset custody? Banks have been custodians of retail and institutional money for decades and have done a pretty good job. Particularly after the Great Depression, the self-custody of assets were considered too risky, and that led to the rise of banking institutions. According to the Bank for International Settlements, reporting banks across the world held over $101 trillion in assets in 2022. The US accounted for about 20% of that at just over $20 trillion. This demonstrates that banks have historically been trusted with holding custody of both institutional and retail assets. As a result, it is only natural that institutional and retail investors rely on banks to offer digital asset custody solutions. However, unlike custody of conventional money, digital assets require a new set of considerations from a bank. So what are banks' custody considerations? Banks looking to set up digital asset custody typically look at two broad approaches: building and buying capabilities. Banks can choose to organically build custody capabilities. For instance, Nomura's Komainu and Standard Chartered's Zodia custody platforms are examples where major banks use their in-house technology to build digital asset custody solutions. These banks can use these solutions for their own clients and offer custody platforms for other banks to use too. However, banks are not in the technology business. When a bank chooses to buy custody capability, it may just acquire a custody provider or the technology from an external vendor. Once they acquire the technology capability from a vendor, they can offer custody services to their clients. Other alternatives are investing in a digital asset custody provider for long-term strategic synergies and/or partnering with the custody provider. In summary, they will look into inorganically created custody capability through strategic investment and acquisitions. Where a bank chooses to buy or inorganically bring in the digital asset custody capability from an external vendor, there are certain product considerations, like regulatory approvals. Banks must seek regulatory clarity and ensure compliance before choosing a custody provider. The custody platform under consideration must demonstrate compliance with regional regulatory policies around crypto custody. The Office of the Comptroller of the Currency in the US and the markets in crypto,
Assets in Europe drive custody regulations for their respective regions. As custody providers, banks will hold private keys on behalf of their clients. This adds additional operational risk, and banks must demonstrate that suitable controls are in place to ensure safekeeping. Blockchains and assets supported. When banks look at a potential custody platform, one of the key considerations would be the blockchains that the platform supports. Often these custody solutions support blue-chip assets like BTC and Ether. However, with more chains growing in stature, user base and transaction volume logged, clients may demand custody support for chains like Solana, Avalanche and others. Also, it may not be enough for custody platforms to just support crypto anymore. NFTs have started to make a mark, particularly within the art space. The most expensive NFT yet, the Merge, was sold for $91.8 million. As a result, private banking and wealth clients of banks may soon demand support for NFT custody too. This would be a key consideration for a bank looking to choose a custody platform. Last year, in particular, saw an influx of financial institutions incorporating support for crypto asset custody. For example, Bank of New York Mellon, or BNY Mellon, announced in February 2021 plans to hold, transfer and issue Bitcoin and other cryptocurrencies as an asset manager on behalf of its clients. Following in BNY Mellon's footsteps, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria started in June 2021 that it would offer Bitcoin trading and custody services in Switzerland. Then, in October of last year, US Bank, the fifth largest retail bank in the United States, announced the launch of its cryptocurrency custody service for institutional investors. Recently, Nasdaq also announced to launch crypto custody services as well. It's also important to point out that traditional banks have started working closely with crypto custodians and sub-custodians to introduce custody for digital assets. The partnership between traditional banks and sub-custodians is an important one. While sub-custodians are helping traditional financial institutions participate in the digital asset ecosystem, crypto custodians like Gemini and Coinbase are also playing an important role. Banks will eventually brand custody solutions as their own, which will be powered by Gemini, Anchorage, BitGo, or some other established crypto custodian. Moreover, digital asset infrastructure providers are also helping bridge the gap between traditional banks and the world of crypto. For example, Fireblocks has partnered with BNY Mellon to enable its digital asset custody solution. Custody is a lucrative yet crowded market in the crypto space, with institutional custody providers fetching multi-billion-dollar valuations. Crypto wallet and custody firm Ledger clinched a $1.5 billion valuation in June 2021, while Anchorage closed a $350 million funding round at a $3 billion valuation in December 2021. The rising demand for digital assets from institutional investors will result in traditional financial institutions working hand in hand with crypto custodians and service providers. However, as regulatory frameworks become clearer, we should see more innovative digital asset sub-verticals being embraced by financial services. Well, that's it in today's episode. We will meet again with exciting stories about the metaverse. Till then, keep watching 3.0 TV, like and share our videos, subscribe to our channel, and press the bell icon to get instant updates. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Have a great day. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. It's not surprising to see brands utilizing the modern technology as the metaverse swiftly takes shape. As the industry that sets trends, fashion is utilizing the immersive experience to boost its customer base and also to promote its products. Now, according to various reports, the metaverse in fashion market share is expected to increase to $6.61 billion by 2026. In March this year, the world witnessed the first ever Metaverse Fashion Week hosted in the 3D virtual world, Decentraland. Well, Metaverse Fashion Week is returning for its second run in 2023 from 28th to 31st of March. Key additions to the 2023 event includes physical digital bridges, support for brands, and perhaps most notably, interoperability between virtual worlds. Numerous companies have already begun releasing collections exclusively for the metaverse and earning millions on fashion NFTs. So, are you curious to know what the fashion houses are doing in the metaverse? Let's find out. Taking the crown as one of the earliest metaverse movers, Gucci has embarked on a number of initiatives that have propelled the Italian luxury brand into new fashion heights. The iconic luxury brand has remained active in its exploration of virtual worlds, gaming, blockchain, and NFTs. Well, Gucci has also launched Gucci Vaultland in the sandbox. The Gucci area is open to the public for free. Additionally, users can have fun, learn something new, and unwind in this captivating, immersive experiences elegant Gucci metaverse setting. Next on the list is Louis Vuitton. Louis Vuitton company launched the NFT game Louis the Game on the 200th anniversary of the founder's birth, which attracted a lot of attention and reached #1 on the list of free iOS games for a while. As part of the game, players can travel to the world where they can explore the heritage of a fashion house and collect candles that serve as keys to access the next level. After Louis Vuitton, next on the list is Nike. Going all in all into the metaverse, Nike has launched a number of digital-only initiatives leveraging blockchain and Web3 technology. Last year, the sportswear giant launched a virtual presence in the metaverse with the inauguration of Nikeland on Roblox. This metaverse space, modeled after the company's real-life headquarters, includes Nike buildings, arenas, and spaces where players can compete against each other in a wide array of mini-games, including dodgeball, and the floor is lava. Roblox users can also create their own collections and games with interactive sports materials. In addition, earlier this year, Nike also launched a collection of 20,000 NFTs dubbed the Crypto Kicks, with the collector dropping $130,000 for one pair alone. Next on the list is Adidas. Back in December of 2021, Adidas released its Into the Metaverse, a 30,000 strong NFT collection created in collaboration with the Bored Ape Yacht Club. The tokens brought digital and physical together, with buyers being able to purchase not only the NFTs but also the physical clothing attached to it. The virtual variables are most notably usable within the sandbox, a metaverse-like platform with physical products including tracksuits and hoodies. After Adidas, next on the list is Balenciaga. The fashion house has unveiled plans to launch a metaverse business unit in the near future. In 2021, the luxury label became the first to release an NFT capsule collection in the video game Fortnite, a wildly popular virtual world where players can build their own games. As such, users can visit and buy virtual Balenciaga items at the Fortnite Balenciaga store, including statement pieces like the Hourglass bag glider and the Speed sneaker pickaxe. They can also choose from a collection of avatar skins and accessories. These virtual variables can be used across multiple game modes. After Balenciaga, next on the list is Dolce & Gabbana.
Dolce & Gabbana is hoping to leave a mark in the metaverse with NFT collections aimed at pushing the boundaries of fashion even further. This year, founders Domenico Dolce and Stefano Gabbana have continued designing part NFT, part physical pieces to supplement fashion lovers' metaverse wardrobes with another Dolce & Gabbana collection filled with 20 full looks of wearable NFTs. Well, brands are embracing the metaverse as it can prove to be a successful strategy. And there are various reasons behind it, such as massive margins, secondary market profits, high personalization, engagement, and accessibility. We can clearly see that the move into virtual fashion is here, and it's happening in a big way. Well, that's all in this special story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share, and subscribe to our channel. And for instant updates, hit the bell icon. एक वक्त था जब टिकट्स की हार्ड कॉपी को खूबसूरत याद के तौर पर संभाल कर रखने का अपना ही अलग मजा था। फिर चाहे वो किसी सर्कस की टिकट हो, किसी एडवेंचर पार्क की, किसी मूवी की या फिर किसी कॉन्सर्ट की। लेकिन बदलते वक्त के साथ उन ट्रेडिशनल पेपर टिकट्स की जगह ले ली डिजिटल टिकट्स ने। लेकिन महज एक क्यूआर कोड को स्कैन करने में वो मजा कहाँ। खैर, ट्रेडिशनल टिकट्स के फटने या खोने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। साथ ही क्यूआर कोड सिस्टम से अटेंडीज की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती। ऐसे में एनएफटी टिकटिंग ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों तरह की टिकट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। साथ ही ये उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन देती है जो पेपर एंड डिजिटल टिकट्स नहीं देती। एक तो एनएफटी टिकटिंग के फायदे, साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस। जाहिर है ऐसे में एनएफटी टिकटिंग के ट्रेंड को तेजी पकड़ने में वक्त नहीं लगा और अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या एनएफटी टिकटिंग डिजिटल टिकटिंग का वजूद मिटा देगी। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, आज स्टोरी में मैं रुचि शर्मा आपको डिटेल में बताऊंगी। दरअसल एनएफटी टिकट से इशुअर और रेसिपिएंट दोनों को काफी फायदे होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत इशुअर्स इन डेप्थ अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही एनएफटीज के जरिए टिकट होल्डर्स के साथ न्यू एंड इनोवेटिव तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इशुअर्स नोटिस भेज सकते हैं, सरप्राइज गिवअवेज अरेंज कर सकते हैं, साथ ही टोकन गेटेड साइट्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बेहद आसानी से होल्डर से जुड़ा डेटा कोलेट करके। सिमिलरली एनएफटी टिकट होल्डर्स को किसी इवेंट की महज टिकट नहीं मिलती, बल्कि एक इम्यूटेबल और इंटरैक्टिव डिजिटल एसेट मिलता है जो किसी शो या फेस्टिवल में सिर्फ एंट्री नहीं दिलाता, बल्कि होल्डर्स को कई तरह के एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी देता है, जैसे कि किसी फैन क्लब का एक्सेस जो सिर्फ उन एनएफटी टिकट होल्डर्स के लिए अवेलेबल हो। एनएफटी टिकटिंग में कुछ ऐसे फायदे हैं जो अटेंडी और ऑर्गेनाइजर दोनों के लिए हैं, जैसे कि नंबर 1, फॉर्जरीज और फ्रॉड्स रोकना। क्योंकि टिकट से जुड़ी तमाम जानकारी ब्लॉकचेन पर होती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजर और अटेंडी दोनों पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई टिकट ओरिजिनल सेल से रीसेल में जाती है तो भी ब्लॉकचेन लेजर पर उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई की जा सकती है। और अगर किसी एनएफटी टिकटिंग में रीसेल अलाउड ना हो तो एनएफटीज को नॉन ट्रांसफरेबल टाइप में ही क्रिएट किया जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट सेविंग। पुराने ट्रेडिशनल टिकटिंग तरीके के मुकाबले एनएफटी को बाय एंड सेल करने का कॉस्ट बहुत ही कम है। साथ ही टिकट्स की वैलिडिटी और ओनरशिप आसानी से वेरीफाई की जा सकती है। नंबर 3, रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। 1 मिनट से भी कम समय में एनएफटीज क्रिएट और सेल की जा सकती है। साथ ही इन टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान और फास्ट होता है, महज एक ईमेल या मैसेज की मदद से। नंबर 4, परपेचुअल रेवेन्यू। कुछ प्रोग्रामेबल एनएफटीज में मर्चेंडाइज, कंटेंट, रीसेल्स और रॉयल्टी स्प्लिट्स को लेकर सेट रूल्स होते हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजर फ्यूचर रीसेल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज एनालाइज कर सकते हैं,
बिना इस बात की चिंता किए कि कोई NFT कोडिंग में उसे चेंज कर सकता है। इतना ही नहीं, जब NFT होल्डर्स किसी टिकट को सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को उस प्राइस का एक छोटा सा हिस्सा भी मिलता है। नंबर 5, न्यू इनकम स्ट्रीम्स। NFT टिकटिंग बहुत सी इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करती है, जैसे कि NFT टिकट्स रीसेल करना एज कलेक्टिबल्स, फूड और बेवरेज डिस्काउंट के लिए NFT टिकट्स को यूटिलाइज करना और उन फैंस को रिवॉर्ड करना जिन्होंने बहुत से इवेंट्स की टिकट्स ली हैं। नंबर 6, प्लानिंग बेटर फ्यूचर इवेंट्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के पास सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके ऑर्गेनाइजर्स फ्यूचर इवेंट्स बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFT टिकटिंग बेहद तेजी के साथ ट्रेडिशनल टिकटिंग इंडस्ट्री को ओवरटेक करके उसके लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे में वो कौन सी टॉप 5 कंपनीज हैं जिन्होंने NFT टिकटिंग की कमान संभाल कर रखी हुई है, आइए जानते हैं। नंबर 1, येलो हार्ट। येलो हार्ट एक NFT मार्केटप्लेस है जो न सिर्फ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए टिकटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर NFT कलेक्टिबल्स भी मौजूद हैं। येलो हार्ट कई आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे कि किंग्स ऑफ लियोन, मरून 5 और XXX टेंटासियन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी अपनी मोबाइल ऐप है और तेजी से बढ़ता यूजर बेस भी। येलो हार्ट का टिकटिंग सिस्टम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, Amazon, स्नैपचैट, स्टबहब और सीट गीक पर टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2, गट्स पूरी तरह से गेट प्रोटोकॉल पर रन करता है और अब तक 600,000 टिकट्स बेच चुका है। करंटली गट्स नेदरलैंड्स में सबसे बड़ा टिकटर है और वक्त के साथ और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। गट्स डिजिटल स्मार्ट टिकट्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, रीसेलिंग के साथ साथ थिएटर्स, कॉन्सर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स, फेस्टिवल्स के लिए भी टिकट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 3, विकेट एक इटालियन NFT टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्मार्ट टिकट्स, सेलिंग एंड रीसेल एंड एनालिटिक्स ऑफर करता है। ये टिकटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है थिएटर्स, नाइट क्लब्स, कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, बिजनेस इवेंट्स के लिए। विकेट का एम है कि वो इटालियन मार्केट से सेकेंडरी टिकटिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दे, क्योंकि इटली में कंपनीज ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना महंगी टिकट्स बेचती हैं सेकेंडरी मार्केट पर। विकेट भी गेट प्रोटोकॉल पर बिल्ट है। नंबर 4, NFT टिक्स एक नॉन कस्टोडियल L1 इथेरियम बेस्ड लेकिन मल्टी चेन केपेबल प्लेटफॉर्म है जो सीमलेसली इंटीग्रेट करता है बाकी EVM कंपैटिबल चेन्स के साथ, जैसे कि पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, BSC, अवलांच और फैंटम। इस पर कोई टोकेनोमिक्स नहीं है। इस पर सारी ट्रांजैक्शंस ETH या फिएट के साथ की जाती हैं। नंबर 5, सीटलैब एक NFT मार्केटप्लेस है जो जल्द लॉन्च होगी। सीटलैब का एम है कि वो रॉयल्टीज के साथ रीसेल अलाउ करे ताकि ऑर्गेनाइजर्स के रेवेन्यू बढ़े। इसका नया सोल्यूशन नियर ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा। प्रॉब्लम्स दैट NFT टिकटिंग सॉल्व। नंबर 1, लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम रीसेल एंड स्कैल्पिंग। क्योंकि सेकेंडरी टिकट मार्केट में रीसेलर्स बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ाते हैं और स्कैल्पर्स 40% टिकट्स ऑनलाइन खरीदते हैं ताकि उन्हें रीसेल कर सके, ऐसे में NFT टिकटिंग रीसेल वैल्यू और गैस फीस को लिमिट करती है और सेकेंडरी टिकट सेल को कंट्रोल करती है। ऐसे में टिकट सेलर्स के लिए एडिशनल $15 बिलियन की मार्केट खुलती है। नंबर 2, लैक ऑफ डेटा ऑन सेल्स एंड एक्सचेंजेस। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को लैक ऑफ डेटा की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जब टिकट रीसेल की जाती है। ऐसे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तमाम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में मदद करती है और उनके काम को इजी एंड फास्ट बनाती है। नंबर 3, टिकट फ्रॉड। बड़े इवेंट्स में टिकट फ्रॉड आम बात है। तकरीबन 12% टिकट सेल्स फ्रॉडुलेंट होती हैं। जाहिर है NFT टिकटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत हद तक इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। नंबर 4, टिकट प्रोडक्शन। फिजिकल और डिजिटल टिकटिंग में प्रोडक्शन की जरूरत होती है और डिजिटल टिकट क्रिएट करने में अक्सर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में NFT टिकटिंग फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसमें भी गैस फीस इश्यूज हैं। ऐसे में टिकटर्स इसे स्टेबल, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गेट, पॉलीगॉन और नियर ब्लॉकचेन्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजी इन दिक्कतों को सुलझा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFT टिकट्स टिकटिंग कंपनीज का फ्यूचर है। इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है,
खबरों की माने तो मार्क क्यूबन जल्द NFT टिकटिंग को NBA पर लाने की तैयारियों में है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तेजी से NFT टिकटिंग इंडस्ट्री अपने पांव फैला रही है, वो ऑनलाइन इवेंट टिकटिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगी, क्योंकि 2026 तक NFT टिकटिंग की सेल वॉल्यूम $94.27 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ ही स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV। Do like, share and subscribe to 3.0 TV. This is Ruchi Sharma signing off. Have a great day. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, स्वागत है आपका 3.0 TV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में। मैं संदीप कसालकर। मैं रोशनी शिंगरे। दुनिया भर में फैले नशे के कारोबार में एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी है जिन्हें उनकी चालबाजी की वजह से लंबे समय तक याद किया जाता है। आज हम एक ऐसे ही ड्रग रैकेट और उसे चलाने वाले मास्टरमाइंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप ना कहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। हैरतअंगेज बात यह है कि LSD किंग के नाम से जाने जाने वाले इस सरगना ने अपने पूरे रैकेट को बड़े ही शातिर तरीके से किसी अड्डे से नहीं बल्कि कर्नाटका के बेलारी सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से ऑपरेट किया है। मैं समझ गई संदीप, आप जरूर LSD किंग यानी रघुनाथ कुमार की बात कर रहे हैं, जो लैपटॉप और फोन के जरिए डार्क वेब के ड्रग मार्केट को किसी प्रोफेशनल की तरह चला रहा था। इतना ही नहीं, अपने इस काले धंधे को पुलिस या जांच एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए रघुनाथ कुमार UK, US, कनाडा, नेदरलैंड्स और पोलैंड से मंगाए गए ड्रग्स को कथित रूप से हर्बल प्रोडक्ट्स बताकर अलग अलग ठिकानों पर जोमैटो, स्विगी और अमेजॉन जैसी सर्विसेज से डिलीवरी करता था। रोशनी, डिलीवरी करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने नशीले प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी कुमार बड़ी सफाई से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और विकल जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफर दिया करता था। मजेदार बात यह थी कि उसने अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रेस्टोरेंट के मेनू से मिलता जुलता एडवर्टीजमेंट बना लिया था। पेमेंट गेटवेज की टेक्नोलॉजी के बदलते कुमार ने क्रिप्टो करेंसीज में भी पेमेंट्स लेना शुरू कर दिया। हाँ संदीप, कुमार के टेलीग्राम ग्रुप में दुनिया भर के नामी गिरामी हस्तियां शामिल थी, जैसे फैशन डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेना के वरिष्ठ अधिकारी के बेटे तक का नाम शामिल है। इससे तो लगता है संदीप, इस सारे मामले में कहीं न कहीं विदेशी डाक सेवा के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बिल्कुल रोशनी, लेकिन क्यों किया कुमार ने सब और कहां से ऐसा करने का उसे आइडिया आया? कुमार को कहते तो सभी LSD किंग है, लेकिन इस LSD किंग का भी एक रोल मॉडल है और वो रोल मॉडल है अमेरिका के टेक्सास में रहने वाला रॉस ऑल्ब्रिट नाम का एक मिडिल क्लास ग्रेजुएट। रॉस ऑल्ब्रिट जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। 2013 में रॉस को गिरफ्तार किया गया था। ये वही शख्स है जिसने अपनी तरह का पहला कुख्यात डार्कनेट मार्केट वेबसाइट सिल्क रोड लॉन्च किया था। इसके जरिए वो US में ड्रग्स बेचता था। रॉस के इस ड्रग चैनल की खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम पता बताए बिना, यानी बिल्कुल गुमनाम तरीके से ड्रग खरीद सकता था और वो भी क्रिप्टो करेंसीज में। तो कहा जा सकता है कि अपने कथित रोल मॉडल के नक्शे कदम पर चलते हुए कुमार ने भी क्रिप्टो के बदले ड्रग्स बेचने का काम हाई लेवल पर शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉस की तरह ही कुमार भी कॉलेज ड्रॉप आउट था। जी हाँ रोशनी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इस रैकेट का भंडाफोड़ करना पुलिस के लिए लोहे के चने
चबाने जैसा काम था, क्योंकि कहानी पता होने के बावजूद सबूत जमा करने के लिए एनसीबी को लगभग 11 महीने का लंबा समय लगा था। संदीप, ये तो रही कुमार की जालसाजी और पूरे ड्रग से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कहानी, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि आखिर कुमार जांच एजेंसियों के रडार पर कब और कैसे आ गया। हाँ रोशनी, ये एलएसडी किंग तो शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाता, लेकिन एक बार हुआ यूं कि कोलकाता के विदेश डाक सेवा के दफ्तर में यूएस और कनाडा से आए उसे 44 ड्रग पार्सल्स किसी ने क्लेम ही नहीं किए। अनुमान तो यह है कि ऐसे पार्सल वापस वहां भेज दिए जाते हैं जहां से आए हैं, लेकिन डाक विभाग को इन पार्सल्स पर शक हुआ और उन्होंने एनसीबी को खबर कर दी। ओह, तो एनसीबी के आने के बाद कहानी और इंटरेस्टिंग होती चली गई। 11 महीनों तक एनसीबी ने तरह तरह के डिजिटल सुरागों को इकट्ठा किया और आखिर में कुमार तक पहुंच गई। कुमार जो बेलेरी सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से अपना यह पूरा गोरख धंधा चला रहा था। कुमार को जून 2021 में एलएसडी ब्लॉट्स की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वो तो पहले से ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह कुमार रघुनाथ यानी कथित एलएसडी किंग के ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। एक ऐसा ड्रग सिंडिकेट था जिसके दुनिया भर में वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उच्च शिक्षित और नई तकनीक में माहिर डीलर्स और सप्लायर्स भी थे, जो कुमार को अपना काला कारोबार बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलाने में मदद कर रहे थे। इस मामले की एक बड़ी कड़ी यानी गुहान सर्वोत्तमन यानी सर्वो को भी एनसीबी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। यह सर्वो डिजिटल दुनिया में एट एंटी मैरी के नाम से जाना जाता था। गुहान के पास 30 ग्राम हाई क्वालिटी वीड और 0.45 ग्राम एक्सटेसी ड्रग बरामद किया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना भी डेटा इंटरनेट पर हमें दिखता है वो डार्क नेट पर मौजूदा डेटा के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% ही है, और ऐसी ही डार्क नेट की दुनिया का फायदा कुमार जैसे जालसाज उठा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स जेल में बैठकर अपने ड्रग्स रैकेट को चला रहा था, वो अगर बाहर होता तो क्या क्या नहीं करता। जुर्म तो आखिर जुर्म है, लेकिन ड्रग्स एक ऐसा जुर्म है जो किसी भी देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है, और इस सारे भंडाफोड़ के लिए एनसीबी ने जरूर काबिले तारीफ काम किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें अपने आसपास सावधानी बरतें, सतर्क रहे। सतर्क रहने के साथ साथ अपना ख्याल रखें, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर और मैं रोशनी शिंगरे फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए 3.2 टीवी। देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Ever since Metaverse took to center stage, the internet is buzzing with this latest immersive technology that promises users an experience out of the universe and straight inside of Meta Universe Web3. Interesting, isn't it, Ruchi? Yes, of course. We have been covering the developments so far. Many companies have shown interest in employing this technology to mark their presence in this new technosphere that has become a catchphrase these days. And leading technology companies have raised their investments in Web 3.0 technology adoption, with few running budgets of millions of dollars to mark their presence in this fast expanding spectrum. The trend is fast catching up with several other companies as well,
But its technology companies such as Meta or Twitter, recently acquired by Elon Musk, to the OTT platform Netflix and several others have joined the race of attracting user base, a key to valuation growth. Web3 effectively enables traditional revenue streams to accrue to the users of a platform, enhancing the user value proposition relative to their Web2 equivalents. Web 3.0 enables the facility for sharing information and interacting with each other through images, video, and audio in immersive three-dimensional environments. The next generation of the internet has been garnering interest from venture capital firms and many popular tech companies. Here is an outline of some of the top tech companies in the field of Web 3.0 in different industries. Meta, Instagram, Twitter, Steemit, Netflix, Alphabet, Spotify, Amazon, Shopify, Tesla, Apple, IBM, Nvidia, Sony, among others. The favorable opportunities associated with Web 3.0 technologies create interest in details about Web 3 companies to invest in right now. At the same time, it is also important to notice how the tech companies in different sectors utilize Web 3 technologies. Web 3.0 is playing a central role in the establishment of Metaverse. Vishakha, there are several reasons behind the adoption of this technology. Let me explain you with live examples. We have heard several stories of attack on individuals' privacy of social media like Facebook, Instagram, Twitter users. Hence, there is growing need for protecting individual privacy, which has gathered steam. Yes, Ruchi, the emergence of Web 3.0 is seen as one such technology that addresses the user's concern in the existing digital age. That is ensuring privacy. So internet users these days give top priority to privacy for their personal and professional information more than ever. The necessity of Web 3 companies has not evolved solely on the grounds of problems in data ownership. As a matter of fact, firms collect data through the analysis of web activities of individuals. Companies can use these insights to target customers with specific schemes which would match their interests. True. So Web3 removes the intermediaries and provides the foundation for decentralizing the internet. The expansion of Web3 has successfully attracted the attention of top tech companies such as Meta, Apple, and Amazon. Many more will join the bandwagon soon. Meta has spent millions of dollars. That's a lot of money. Well, that's all for now. Keep watching for such interesting developments. This is me, Ruchi Sharma, signing off. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like, share, and subscribe to our channel. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. दुनिया भर में कॉफी या चाय की चुस्की के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती और उनकी खुशबू के बगैर दिमाग की बत्ती नहीं जलती। सही कहा ना? लेकिन कभी सोचा है कि विदेश से लाई जाने वाली कॉफी देश में मिलने वाले के मुकाबले में ज्यादा अच्छी क्यों होती है? वह भी इस सच के बावजूद कि यह हमारे देश में ही एक्सपोर्ट की गई होती है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। अक्सर कॉफी की खेती करने वाले किसान अपनी मेहनत की सही कीमत पाने के लिए A1 क्वालिटी के कॉफी बीन्स को देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करते हैं और उसके बाद जो बचते हैं वो हमारे कप में पाई जाती है। मिल गया ना जवाब?
लेकिन कॉफी की क्वालिटी से लेकर किसानों की कमाई आने वाले तक सभी दिक्कतों को एक्विस टेक्नोलॉजी ने हल कर दिया है। दरअसल कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्विस द्वारा डेवलप किए गए एक ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप जो कॉफी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो कॉफी बोर्ड ने इस ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को कर्नाटका में लागू भी कर दिया है। इस ऐप के कारण किसानों की आय में लगभग 43% की बढ़त भी हुई है। इस पहल के साथ कॉफी बोर्ड ने कॉफी बिजनेस के बढ़ते खिलाड़ियों को नहीं बल्कि आदिवासी कॉफी प्रोड्यूसर्स को भी लागत और फाइनल प्रोडक्ट की बराबरी में मुनाफा देने की दिशा में कदम भी उठाया है। तो दुनिया भर में कॉफी की बढ़ती मांग के चलते इसमें मुनाफाखोर और मिलावट करने वाले अक्सर मकई, गेहूं, सोयाबीन, चावल, बीन्स, यहां तक कि स्टार्च सिरप तक मिला भी देते हैं। अब इस ऐप के बाद इस मिलावटखोरों के मुंह का स्वाद जरूर कड़वा हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कॉफी के शौकीनों की संख्या काफी बढ़ गई है। कॉफी के शौकीन लोग दुनिया भर से अलग अलग कॉफी की टेस्ट को आजमाना भी चाहते हैं। ऐसे में यह ऐप कॉफी के बिजनेस के बड़े बड़े खरीदारों को कॉफी उत्पादकों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जो कॉफी उत्पादकों के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होगा। कहते हैं ना, ऑफिस की मीटिंग हो या फिर कोई रोमांटिक डेट, चाय की प्याली या फिर कॉफी के मग पर की गई बातें कभी खाली नहीं जाती। तो कॉफी बोर्ड की इस डिजिटल पहल से अगर हमारे कॉफी उत्पादकों के बिजनेस में भी तेजी देखने को मिली तो वो भी कॉफी के मग के साथ ये बात जरूर कहेंगे। आज से 3 दशक पहले 1992 में साइंस फिक्शन ऑथर नील स्टीफनसन ने अपनी हिट नॉवल स्नो क्रैश में मेटावर्स शब्द को कॉइन किया था और अब ठीक 30 साल बाद अपने इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए नील क्रिप्टो की दुनिया के एक और धुरंधर पीटर वेसेनेस के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। नील और पीटर दोनों ने 8 जून 2022 को अपनी खुद की मेटावर्स फोकस ब्लॉकचेन लमीना 1 क्रिएट करने की अनाउंसमेंट की और ये भी बताया कि वेसेनेस सीईओ की भूमिका में होंगे और स्टीफनसन चेयरमैन की कमान संभालेंगे। तो आखिर क्या है लमीना 1 को लेकर नील स्टीफनसन का विजन, आइए जानते हैं। नील स्टीफनसन ने मेटावर्स के लिए अपने विजन को रिवाइज किया है। नए विजन के मुताबिक लोग मेटावर्स को मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रपोज्ड वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स या हॉलोलेंस जैसी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की बजाय फ्लैट 2D स्क्रीन्स के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वेसेनेस और स्टीफनसन द्वारा को फाउंडेड लमीना 1 एक ओपन मेटावर्स के लिए बेस लेयर के रूप में काम करेगी। इतना ही नहीं, ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए स्टीफनसन ने ये ऐलान किया कि मेटावर्स स्क्रीन्स पर क्रिएट किया जाएगा, ना कि VR हेडसेट्स पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफनसन ने मेटावर्स में हाई क्वालिटी वीडियो गेम्स रोल आउट करने की उम्मीद ही नहीं की थी। जी हाँ, तकरीबन 30 साल पहले जब स्टीफनसन ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में लिखा था तो उन्होंने फ्यूचर में बड़े पैमाने पर कंज्यूमर्स के लिए हाई क्वालिटी वीडियो गेम्स रोल आउट करने की उम्मीद ही नहीं की थी। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि थैंक्स टू गेम्स बिलियंस ऑफ पीपल अब फ्लैट 2D स्क्रीन्स पर 3D एनवायरनमेंट में आराम से नेविगेट कर रहे हैं। स्टीफनसन ने आगे कहा कि मॉडर्न गेम डेवलपमेंट अभी भी डेवलपर और कंज्यूमर दोनों के लिए स्क्रीन के अराउंड काम करती है और अगर कुछ भी हो तो मेटावर्स के लिए एक हाइब्रिड अप्रोच जिसमें 2D स्क्रीन्स और AR/VR टेक दोनों का साथ में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि VR से प्योरली ऑपोजिट होगा। सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर लमीना 1? स्टीफनसन के साथ उनके विजन पर काम करे वेसेनेस ने कॉइनडेस्क के साथ लमीना 1 को लेकर प्लान के बारे में बात करते हुए बताया कि इस ब्लॉकचेन की पहली जर्नी अवालांच के फ्रेंडली फोक एंड पार्टनरशिप के बीच कहीं होगी। हालांकि फिलहाल किसी प्लान को फाइनलाइज नहीं किया गया है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल बैकर्स में इथेरियम को-फाउंडर जोसेफ लुबन, जियोफ एंट्रेस, मैथ्यू रोजैक, पैट्रिक मर्क एंड डेविड जॉनसन शामिल हैं। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब मेटावर्स का मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड वीडियो गेम से लेकर लाइफ के एक इमर्सिव फ्यूचर तक कुछ भी हो सकता है।
What are the lessons learned from Web 2.0? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के टाइटन्स मेटावर्स के अपने विजन को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले डेकेड में इस सेक्टर की ग्रोथ $1 ट्रिलियन तक होने की उम्मीद की जा रही है। लमीना वन ये इंश्योर करने के लिए काम कर रहा है कि वो सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप और इनइक्वालिटी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को जारी रखते हुए पहले हुए मिसस्टेप्स को दोहराने से बच सके। लमीना वन एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज करता है, जैसे कि एक ज्यादा मॉडर्न और इंटीग्रेटेड Web3 कम्युनिटी और इकोसिस्टम जो ट्रूली ओपन मेटावर्स के लिए फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में है। कार्बन नेगेटिव लमीना वन चेन क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए थ्राइविंग वाइब्रेंट इकोनॉमीज बनाने में मदद करने के लिए नए इंसेंटिव मैकेनिज्म के साथ हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और एक इकोनॉमिक डिजाइन ऑफर करेगा। What Snow Crash predicted? अर्ली 21st सेंचुरी में सेट स्नो क्रैश आने वाले फ्यूचर को लेकर की गई इमेजिनेशन थी। उस समय लिखी गई कहानी में ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कैसे हुई और फेडरल गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर कुछ जायंट कॉर्पोरेशंस के सामने कैसे खो दी, यही है ये कहानी। मेटावर्स एक एस्केप है और नोवेल का मेन कैरेक्टर एक नियरली ब्रोक कंप्यूटर हैकर और पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर है जो प्रोटैगनिस्ट है और अपना ज्यादातर समय वहीं बिताता है। वो गॉगल्स और ईयरफोन्स पहनकर मेटावर्स तक पहुंचता है और डिजिटल दुनिया के अंदर अपने खुद के कस्टमाइज्ड अवतार के रूप में दिखाई देता है। मेटावर्स में अवतार अम्यूजमेंट पार्क्स, शॉप्स, ऑफिसेज और एंटरटेनमेंट वेन्यूज के साथ हजारों किलोमीटर चौड़ी सड़कों पर टहल सकते हैं। कम साधन वाले लोग अक्सर मेटावर्स तक पहुंचने के लिए पब्लिक टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर अच्छी टेक्नोलॉजी के यूजर्स द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता है। ज्यादातर कहानी प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो एक कंप्यूटर वायरस को रोकने की कोशिश कर रहा है जो मेटावर्स यूजर्स के लिए रियल वर्ल्ड ब्रेन डैमेज का कारण बन रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी that some metaverse elements already exist। बुक में आज से 30 साल पहले लिखी हुई चीजें अपने समय से काफी आगे हैं। जी हाँ, स्नो क्रैश कैरेक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हेडसेट आज के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की तरह साउंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्चुअल अवतार दशकों से वीडियो गेम में है और रोब्लॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट के माइनक्राफ्ट या एपिक गेम्स के फोर्टनाइट जैसे बड़े ऑनलाइन कम्युनिटीज के यूजर्स अवतार्स के साथ वर्चुअल वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्नो क्रैश में मेटावर्स में आज की क्रिप्टो करेंसी से सिमिलर एक इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी है और नॉवल वर्चुअल रियल एस्टेट पर रियल मनी स्पेंड करने के विचार को एक्सप्लोर करती है जो पहले से ही ब्लॉकचेन एनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डीसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स पर मौजूद है। नील स्टीफनसन की नॉवल और लमीना वन होगी अफोर्डेबल। पूरी कहानी जानने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि नील स्टीफनसन की नॉवल स्नो क्रैश में मौजूद मेटावर्स की दुनिया हाल में उनके द्वारा 2D पर फोकस की गई दुनिया से काफी हद तक अलग होगी। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नील स्टीफनसन का 2D फोकस मेटावर्स वर्ल्ड आज की महंगी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के मुकाबले बेहद सस्ता होगा जो आम लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। नील स्टीफनसन के दिमाग की उपज जिन्होंने पहली बार अपनी 1992 की पॉपुलर बुक स्नो क्रैश में मेटावर्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और पीटर वेसेनेस जो बिटकॉइन के शुरुआती दिनों से फाउंडेशनल लीडर रहे, दोनों ने साथ मिलकर लमीना वन को प्लान किया जो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन पर्पस है जिसे ओपन मेटावर्स को एम्पावर करने के लिए बनाया जा रहा है। लमीना वन की चेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफिक मॉडल और एक्सटेंसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप्स इसे इस जनरेशन के सबसे क्रिएटिव माइंड के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश करेगी जो फ्यूचर की डिजिटल सोसाइटीज को तैयार कर रहे हैं। Last but not the least, it is probably the first carbon negative blockchain in the world। क्या नील स्टीफनसन का मेटावर्स उनकी बुक की तरह हिट होगा? क्या उनके मेटावर्स का वर्जन मेटा और गूगल और बाकी VR AR मेटावर्स के वर्जन पर भारी पड़ेगा या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Hope you like the story। मेटावर्स से जुड़ी ऐसी और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए do watch my videos। This is रुचि शर्मा signing off। Do like, share and subscribe to Crypto TV। Have a great day।
जो आपने देखा एक ब्लॉकचेन रिलेटेड एक खबर सामने आई है बेंगलुरु में कॉफी फार्मर जो है हाँ कॉफी फार्मर जो है उनके लिए ट्रेसेबिलिटी ऐप बना है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि वेब3 टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे जा रही है। खास करके बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर एक सेक्टर के लोग उसको अपना रहे हैं। क्या बात है संदीप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, बहुत ज़्यादा उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। वेब3 टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन साथ ही अफसोस की जैसे कहते हैं चांद में एक दाग है, वैसे हैकिंग की भी जो ये इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले साल $4 बिलियन के हैक हुए थे और इस साल अब तक $3 बिलियन के हैक ऑलरेडी हो चुके हैं। इनफैक्ट अक्टूबर को तो हैकटोबर कहा गया था, इतने ज़्यादा हैकिंग के इंसिडेंट। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना अडॉप्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस बनता है जो लोगों को इससे पीछे खींचता है। नहीं, अगर बात करें हैकिंग की तो हैकिंग में सबसे ज़्यादा जो मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूँगा तो वर्म होल को सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ था। उसके बाद बीनस्टॉक था जिसमें कि $160 मिलियन का हैक हुआ, फिर नहीं बीनस्टॉक में $182 मिलियन का हैक हुआ, फिर विंटरम्यूट में $160 मिलियन का हैक हुआ। तो हैक्स बहुत ज्यादा जो है सामने आ रहे हैं और हम बहुत तरह के हैकर्स का नाम सुनते हैं, कहीं व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये अगर व्हाइट मैं वही पॉइंट पे आने वाला था जी। उसमें अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें कैटेगरी की गई है, कोर्स दिए गए, लाइक ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, व्हाइट हैट हैकर्स हो गए, ग्रे हैट हैकर्स हो गए। ये सब अगर आप हैट ये वर्ड आप सुन रहे तो आप कुछ क्लिक हुआ रहेगा। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहीं ये पढ़ा था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे पुराने जमाने में जो काउबॉयज होते थे तो जो व्हाइट हैट्स पहनते थे दे यूज्ड टू बी गुड मैन, और जो ब्लैक हैट्स पहनते थे वो होते थे गून्स, जो चोरी करने आए हैं, कुछ डाका डालने आए हैं। तो यहाँ भी आई थिंक उसी से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है और ये कैटेगरीज बनाई गई है। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और सबसे पहले बात करें तो ब्लैक हैट हैकर जो कि इंडस्ट्री में सबसे खतरनाक हैकर के तौर पर माना जाता है। तो ब्लैक हैट हैकर का काम अगर जो है वो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो जिनके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनका काम ही वही है कि वो उसमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करे, कुछ फ्लॉज उसको फाइंड आउट करे, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करे। एक्सप्लॉइट करने के बाद उसमें जो उन्होंने जो डेटा रिसर्च किया है, उनके पास जो डेटा है वो डार्कनेट वेबसाइट पर उसको सेल करें। उनका काम ही है ब्लैक हैट हैकर्स का। लेकिन जहां बुरा है वहां पे अच्छा भी है। तो जहां ये ब्लैक हैट हैकर्स है वहीं पे व्हाइट हैट हैकर्स भी हैं जो कि गुडविल पे काम करते हैं, जो कि कुछ अगर स्टार्टअप्स हैं या कोई कंपनी है उनके सिस्टम को देखते हैं वहां पे कहाँ कोई वीकनेस है सिस्टम में या कहाँ कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको वो टारगेट करते हैं। और कई बार वो कंपनीज को बताते भी हैं कि आपका ये इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, तो उसको फिर वो ठीक करते हैं, बट दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। ऐसा नहीं कि वो कुछ रिवॉर्ड्स मांगते हैं या इसके लिए कुछ पेमेंट मांगते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनी उनको हायर कर लेती है। इनफैक्ट इट्स वेरी अम्यूजिंग टू नो कि ज्यादातर जो साइबर सिक्योरिटी लीडर्स हैं वो एक जमाने में व्हाइट हैट हैकर्स आ गए थे। यानी कि व्हाइट हैट हैकर्स की इमेज इतनी अच्छी है कि उन्हें आगे इस तरह से प्रमोशन भी मिलते हैं। और बहुत सारी भी कुछ हुआ था लेकिन यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज करती हैं अपनी वेबसाइट्स, एप्स लॉन्च करने से पहले। वो बहुत से ऐसे व्हाइट हैट हैकर्स को बुलाती हैं और देखती हैं और उनको एक तरह से चैलेंज करती हैं कि आप कुछ इसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढ के दिखाइए, जो कि ऑब्वियसली उनके भी फायदे में होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स को। जिस तरह से अगस्त 2021 में CDU में पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन जब हुआ था तो उसकी ऐप को एक व्हाइट हैट हैकर ने हैक किया था, लेकिन उसे जैसे मैंने कहा कि मिसअंडरस्टूड किया गया और उल्टा उस पर केस कर दिया गया। हालांकि बाद में जब वो चार्जेस लगे तो पता चला कि इट वाज ऑल इन गुड विल एंड इट्स द पर्सन वाज अ व्हाइट हैट हैकर, तो फिर वो चार्जेस वापस ले लिए गए। लेकिन आई एम श्योर अब वक्त बदल रहा है, लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो उसके कंसेंट अगर वो लेता था कंपनी का तो शायद वो आई थिंक वो कहीं मिस हुआ। तो कंसेंट अगर आप ले तो इट वर्क्स बोथ वेज, दोनों को फायदा होता है। तो इनके साथ अगर आप शायद सुना होगा ग्रे हैट हैकर के बारे में, ये दोनों का मिक्सचर कैसे हो गया? वो ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है। तो ग्रे हैट हैकर का काम ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका काम ही वही है कि वो वल्नरेबिलिटी ढूंढना, पर वो वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। जो स्टार्टअप होती है ना कंपनी, शुरुआत में वो उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को उनके पास रखते हैं और वो उनको क्रिमिनल नहीं कहा जाता, बिकॉज वो कंपनी को बाद में इन्फॉर्म भी करते हैं कि अब ये ऐसा हम लोगों ने हैक किया हुआ है, इसका रिपोर्ट हमारे पास है, ये पूरा का पूरा रिसर्च हम आपको दे सकते हैं, बट उसके बदले में आपको ये जो डिमांड की गई मनी है आपको हमें देनी है। यानी कहते हैं इंटेंशंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां व्हाइट हैट हैकर्स की इंटेंशंस अच्छी है, ग्रे हैट हैकर्स जो है उनकी इंटेंशंस थोड़ी सी
इतनी क्लियर नहीं है। Clear नहीं तो या तो वो डेटा रख लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, या फिर कहीं बेच देते हैं, या फिर पैसे मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे हैकर्स को इतने कोड्स दिए गए, रेड, ग्रीन, ब्लू भी, RGB कलर। तो इसी तरह से अगर मैं ग्रीन हैट हैकर्स की बात करूं तो ग्रीन हैट हैकर्स जो हैं वो इतने नॉलेजेबल नहीं जितने कि ब्लैक हैट हैकर्स को जैसे महारत हासिल है ना, तो ये दीज आर बिगिनर्स। तो ये छोटे मोटे फिशिंग अटैक्स करते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर आप देखा होगा बहुत बार कि कुछ लिंक आपके पास आता है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इंस्टाग्राम पे मुझे मेरी एक फ्रेंड का ही लिंक मिला कि मैं किसी ब्यूटी पैजेंट में मैं पार्टिसिपेट करी, प्लीज वोट कीजिए। अब मुझे लगा यार कर देती हूँ, दिल पे पत्थर रख के मैंने वो क्लिक किया, लेकिन उल्टा मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो इस तरह के छोटे मोटे जो अटैक्स हैं वो ग्रीन हैट हैकर्स करते हैं। आई थिंक वो यहीं से शुरुआत करते हैं, बाद में नॉलेज ले लेके वो ब्लैक हैट हैकर्स बन जाते हैं। उसके बाद आ रहा है ब्लू हैट हैकर। तो ब्लू हैट हैकर कहाँ से आया? ये अवतार फिल्म से तो नहीं आया ब्लू, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली बोल सकते हैं आप उसको, पर उसका टर्म मैं ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि ब्लू हैट हैकर व्हाइट हैट हैकर के समान ही होते हैं। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो एज अ फ्रीलांसर करते हैं, पर ब्लू हैट हैकर जो होते हैं उन्हें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है एज ए जॉब। वो जॉब पे होते हैं, उनको वो पेरोल पे होते हैं कंपनी के। तो उनका काम यही है कि उनको उनके जो वेबसाइट्स है, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, उनके ऊपर उनको फोकस करना होता है कि इसमें कई वल्नरेबिलिटीज भविष्य में हो नहीं हो, प्लस फ्लॉज हो नहीं हो, लुपेन होल्स जो है वो उनको देखना ही है। उनका काम ही वही है। तो ये अच्छे होते हैं लाइक व्हाइट हैट हैकर्स। सिस्टम अपग्रेडेड रहे हमेशा, कोई इसको हैक ना कर पाए। लेकिन मैं कहूंगी ये जो पूरा एक हायरार्की है ना हैकर्स की, इसमें सबसे ऊपर है रेड हैट हैकर्स। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक हैकर्स को हैक करते हैं। कैसे करते हैं? बिल्कुल CIA एजेंट, अंडरकवर एजेंट की तरह काम करते हैं। हाँ, स्लीपर सेल। तो डार्क वेब में जाते हैं, इनके ब्लैक हैट हैकर्स की कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, किसे वो टारगेट करने वाले हैं, क्या हैक करने वाले हैं, और फिर वो इन ब्लैक हैट हैकर्स को रोकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा काम तो ये रेड हैट हैकर्स ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो संदीप, अगर हम जैसे हमने इतने सारे हैकर्स, अलग अलग हैकर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किस तरह के हैकर्स हैं क्या नहीं है। कोई ऐसा क्लियर कट एग्जांपल है जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा हो जहां कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में इस केस में व्हाइट हैट हैकर्स भी इन्वॉल्व थे और ब्लैक हैट हैकर्स भी इन्वॉल्व थे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर बात करें सबसे बड़ा हैक जो हुआ था, वर्म होल हैक अटैक जो हुआ था, उसमें उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। 3.0 ने सभी ये हैक्स के बारे में ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन दे दी है। पर वर्म होल अटैक जो है वो वर्म होल अटैक जो है उसके बारे में 300 मिलियंस का हैक हुआ था, 300 में, जो कि इथेरियम में हैक हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, एक व्हाइट हैट हैकर उसमें आ गया। व्हाइट हैट हैकर ने एंट्री मारी, उसका नाम है सत्या। तो सत्या ने उसमें एंट्री मारी। तो सत्या ने एंट्री मारने के बाद उसने ये अटैक को रोका। एक्चुअली उसने जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट की उसको रोका, और उसको कंपनी ने क्या किया, उसको 10 मिलियन का उसको बाउंटी ऑफर किया गया जी उसको, जो कि ये 10 मिलियन का सबसे अभी तक का इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बाउंटी कहा जा सकता है। तो ये वर्म होल अटैक के बारे में आपको बता सकता हूँ जी। तो आपकी इसी एग्जांपल से मुझे याद आया कि कुछ ऐसा ही सिमिलर पॉलीगॉन के साथ भी हुआ था। पॉलीगॉन का जो नेटिव टोकन है मैटिक, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक वल्नरेबिलिटी थी, और ऐसा देखा जा रहा था कि 9 मिलियन मैटिक टोकन्स जो है वो हैक होने वाले थे या हो सकते थे, विच अगर हम कन्वर्ट करें इन डॉलर्स तो $18.5 बिलियन का बड़ा अमाउंट बनता है। लेकिन यहाँ भी जिस तरह से आपने बोला कि व्हाइट हैट हैकर क्या कहते हैं, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो लियोन स्पेस वॉकर वो आए और उन्होंने इस वल्नरेबिलिटी को देखा, डिटेक्ट किया, इस वीकनेस को डिटेक्ट किया, और उन्होंने ये हैक होने से बचाया। और इसके लिए उनको $2.2 मिलियन जो है दिए गए एज रिवॉर्ड्स, क्योंकि व्हाइट हैट हैकर्स को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि जैसे बग इंस्टॉल करने से पहले जो ब्लैक हैट हैकर जो कि ताक में था कि उसको तो ये हैक करना ही करना है, उन्होंने $1.5 मिलियन का जो है हैक कर लिया। बट स्टिल इफ वी कंपेयर इट विद $18.5 बिलियन तो बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो यहाँ बचा लिया गया था। तो संदीप, यहाँ पे हम इतने हैक्स की बात करें, आई एम श्योर जो लोग ये शो हमारा देख रहे हैं वो भी सोचोगे कि किस तरह से हैक से बचा जाए। तो क्या कुछ ऐसे सिंपल से स्टेप्स है जिससे आम लोग जो ये शो देख रहे हैं, आम लोग जो सोशल मीडिया या कोई भी वेबसाइट्स यूज करते हैं, वो कैसे बच सकते हैं इन हैक्स? जी, मैं सभी यूजर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये बेहद ही सिंपल है। सबसे पहला, जो भी आपके पास जो मैलिशियस लिंक आपके सोशल मीडिया पर आती है, आपके ईमेल में आती है, उससे आप दूर रहे। वो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप वो वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो जहाँ पर वायरसेस होते हैं।
तो आप उससे दूर रहे। उसके बाद सबसे बड़ी बात उसके बाद आती है तो आपका एंटीवायरस स्ट्रांग होना ज़रूरी है, फायरवॉल सिस्टम आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है, जो कि हमेशा अपडेट आपको करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये सभी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो इससे आप 101% आप उससे दूर रह पाओगे। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो संदीप ने आपके साथ शेयर किए। तो अगर इन सिंपल से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपके अकाउंट, आपकी डेटा, आपका पैसा जो है वो सेफ हो सकता है और हैकिंग से आप बच सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यानी रुचि शर्मा को दीजिए इजाजत। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हैकिंग पर हमारी रिसर्च जारी रहेगी और लगातार लेटेस्ट अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए 3 TV। नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। 3.OTV के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में आपका फिर एक बार स्वागत। तो अब तक के एपिसोड्स में हमने वेब3 में हो रही फिशिंग और साथ ही उसके अलग अलग प्रकार के अटैक्स के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपने इन्हें मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई सभी लिंक्स को जरूर देखें। ये फिशिंग की दुनिया इतनी जटिल है कि इसमें हो रहे अटैक्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी फिशर्स आमतौर पर अपने फेक ईमेल और वेबसाइटों को रियल दिखाने के लिए कई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं। नंबर 1, कॉपी कैटिंग। जैसा नाम वैसे ही उसका काम, यानी सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज की नकल करना, तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट हो, लोगो हो या फिर वेबसाइट की कलर थीम। कॉपी कैट फिशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं उनकी ब्रांडिंग से खुद को परिचित करें। इस तरह आप धोखेबाजों को आसानी से पकड़ सकते हो। नंबर 2, स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स। फिशिंग ईमेल में अक्सर स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां होती है। आमतौर पर फिशर अपना मैसेज भेजने की जल्दी में होते हैं, इसलिए प्रूफ रीड नहीं कर पाते हैं। कुछ मामलों में वे जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं उसमें वो निपुण नहीं होते हैं। इस तरह से यदि आपको इस तरह का ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है तो आप उसे तुरंत ही डिलीट करें। नंबर 3, मिसलीडिंग लिंक्स। फिश करने का यह तरीका बहुत ही आम है, जिसे हम अपनी इनबॉक्स में हमेशा देखते हैं। इस तरह के अटैक में आपको ईमेल में एक फेक लिंक भेजी जाती है, जिसे क्लिक करते ही आपको फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। ये लिंक्स छोटे यूआरएल्स या एम्बेडेड होते हैं, जिससे ओरिजिनल मैलिशियस वेबसाइट को छिपाया जाता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उस यूआरएल को ध्यान से चेक करें, क्योंकि एक ऑथेंटिक लिंक डेस्टिनेशन को विजुअली मिमिक करने के लिए फिशर्स छोटे एरर्स का उपयोग करता है, जैसे स्मॉल आई को अपर केस आई के साथ सब्स्टिट्यूट करना। नंबर 4, यूजिंग अ पब्लिक ईमेल इंस्टेड ऑफ अ कॉर्पोरेट वन। इस तरह के फिशिंग में अटैकर अक्सर एक पब्लिक ईमेल अकाउंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट की तुलना में पब्लिक डोमेन के साथ फेक ईमेल बनाना आसान होता है। इसलिए जांच लें कि जो ईमेल आपको भेजा गया है वो डायरेक्टली कंपनी से है या कोई पब्लिक डोमेन से। उदाहरण के लिए अगर ईमेल @companyname.com के अलावा @gmail.com से आ रहा है तो फिर आपको सतर्क होना जरूरी है। नंबर 5, कंटेंट मिसअलाइनमेंट। इस फिशिंग में जब अटैकर वैध ईमेल की नकल करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हमेशा सही डिटेल्स नहीं मिलती है, इसलिए इसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग या टोन अलग अलग होता है। कई बार मैसेजेस और एम्बेडेड इमेजेस मिसमैच भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर ईमेल में क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन बटन क्लिक हियर टू साइन अप का होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी क्रिप्टो फिशिंग हमले से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, जिन ईमेल्स में लिंक या अटैचमेंट हो उसे हमेशा सावधान रहे। जब संदेह हो तो पता लगाने के लिए ईमेल भेजने वाले से संपर्क करें। नंबर 2, ऐसी अटैचमेंट न खोले या उन वेबसाइटों के लिंक पर क्लिक न करें जो संदिग्ध दिखाई देती है। नंबर 3, अपने एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। नंबर 4, अपने अलग अलग अकाउंट्स के लिए कभी भी एक ही पासवर्ड का उपयोग न करें। नंबर 5, अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे तुरंत इनेबल करें। नंबर 6, अपने वॉलेट एड्रेस या अपनी प्राइवेट की सहित
किसी को भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कभी न बताएं। नंबर 7, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस के लिए एक भरोसेमंद वॉलेट और एक्सचेंज का ही उपयोग करें। नंबर 8, संदिग्ध वेबसाइटों से ब्राउजर ऐड ऑन डाउनलोड न करें। नंबर 9, पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय वीपीएन का उपयोग जरूर करें और जहां तक हो सके पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना ही करें तो बेहतर। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि फिशर्स किस तरह से फिशिंग ट्रिक्स का उपयोग करते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। नमस्कार। अगर अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है तो मेटा का भविष्य पूरी तरह से होगा सवालों के घेरे में। क्या मेटावर्स मेटा के लिए बनेगा $1 बिलियन की ग्रेव? आखिर क्यों मार्क ज़करबर्ग की $10 बिलियन की सेल्फी बनी एक इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक? क्या मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता कि उनका मेटावर्स दिखता है कितना खराब? ये सवाल अब सभी पूछने लगे हैं। 2021 की सबसे चर्चित खबर शायद फेसबुक के मेटा में रीब्रांडिंग की घोषणा थी। घोषणा के बाद से लोगों ने मेटावर्स में शादी भी कर ली। लेकिन इतना ही नहीं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी वर्चुअल वर्ल्ड स्पेस में फल फूल रही है और लोग मेटावर्स में लैंड के प्लॉट्स पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का नाम बदलने के बारे में ज़करबर्ग के बयान ने मेटावर्स को अखबारों के पहले पन्नों पर ला दिया। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक कैसा मेटावर्स बना रहा है और आखिर क्यों ये सवालों के घेरे में घिरता ही चला जा रहा है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेटा की वेबसाइट क्या कहती है। तो इसमें कहा गया है कि हम मेटावर्स को जीवन में लाने में मदद करने के लिए दुनिया भर में क्रिएटर्स और डेवलपर्स का समर्थन कर रहे हैं। कनेक्शन का भविष्य 3D में होगा। हम मेटावर्स में कनेक्शन के फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। तो ज़करबर्ग के मेटावर्स को आने में अभी काफी समय है। हालांकि इन्वेस्टर्स और यूजर्स पहले से ही निराश हैं। मार्क ज़करबर्ग की $10 बिलियन की सेल्फी हाल ही में एक इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक बन गई। तस्वीरें विशेष रूप से इम्प्रेसिव नहीं थी। इनफैक्ट फर्स्ट इंप्रेशन इतना भयानक था कि ज़करबर्ग का खूब मजाक उड़ाया गया। तो हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले ज़करबर्ग ने फ्रांस और स्पेन में गेम की रिलीज का जश्न मनाते हुए फेसबुक पर होराइजन वर्ल्ड्स का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था कि इमेज मार्क के डेड आइड अवतार को एक एम्प्टी लैंडस्केप में खड़ा दिखाती है, जो केवल आईफिल टावर और स्पेन के अनफिनिश्ड सग्राडा फेमिलिया के एक छोटे वर्जन से पॉपुलेटेड है। इस इमेज ने कुछ समय के लिए ट्विटर पर सेकेंड लाइफ ट्रेंड किया। लोगों ने कहा कि ये किसी भी तरह दशकों पुराने लाइव सिम से भी बदतर लग रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि होराइजन वर्ल्ड्स सबसे खराब दिखने वाली ऑफरिंग्स में से एक है और मेटा ने अपने होराइजन मेटावर्स के VR सेंट्रिक वर्जन का पीछा करते हुए $10 बिलियन को पानी की तरह खर्च किया। यहाँ तक कि अपनी कंपनी का नाम भी बदला इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए। और अब ये इसका रिजल्ट है। तो अब मार्क ज़करबर्ग ने इसका जवाब दिया नई सेल्फी के साथ और कहा कि पहली सेल्फी को लॉन्च का जश्न मनाने के लिए बहुत जल्दी में लिया गया था। खैर, ऐसा लगता है कि मार्क ज़करबर्ग ने मजाक पर ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने इसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक अपडेटेड सेल्फी साझा की और अपने कैप्शन में उन्होंने कहा, होराइजन और अवतार ग्राफिक्स के मेजर अपडेट्स जल्दी आ रहे हैं। मैं कनेक्ट पर और शेयर करूंगा।
आपको बता दें कि कनेक्ट अपकमिंग मेटा कॉन्फ्रेंस है जो प्रिंसिपली VR और AR पर फोकस्ड है। जकरबर्ग ने पिछली सेल्फी को संबोधित करते हुए कहा, इसके अलावा मुझे पता है कि इस सप्ताह की शुरुआत में मैंने जो तस्वीर पोस्ट की थी वह बहुत ही बुनियादी थी। होराइजन में ग्राफिक्स आर कैपेबल ऑफ मच मोर। यहाँ तक कि हेडसेट पर भी और होराइजन में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। यदि मेटावर्स के ग्राफिक्स रैडिकली नहीं बदलते हैं तो मेटा के मेटावर्स प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने का खतरा है। इसके साथ साथ Q2 2022 के लिए फॉर्मर फेसबुक ग्रुप ने पहली बार सेल्स में डिक्लाइन की सूचना दी है। ये केवल एक्सपेंसिव मेटा प्रोजेक्ट नहीं है जो अरबों को निगल रही है, पूरे ग्रुप के लिए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू घट रहा है। इसकी वजह कंपटीशन से मिलने वाले ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। यूजर्स ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम समय बिता रहे हैं। ये एडवर्टाइजिंग सेल्स को कम करता है। यहाँ तक कि रील जैसे फीचर्स जिसे मेटा ने टिकटॉक से कॉपी किया था, ओरिजिनल पोस्ट के साथ साथ इन्हें भी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। हाल ही में इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ने नेगेटिव हेडलाइंस बटोरी जब कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जैसे काइली जेनर और किम कार्डेशियन रीसेंट अपडेट्स के खिलाफ बैरिकेड्स पर चले गए। आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी चाहते थे कि इंस्टाग्राम टिकटॉक को दोहराने के अपने प्रयासों को कम करे और फोटो शेयरिंग पर ध्यान केंद्रित करके अपनी जड़ों पर वापस जाए। इसलिए मेक इंस्टाग्राम अगेन ट्वीट्स काफी चर्चा में रहे। मेटावर्स को जकरबर्ग का प्रेस्टीज प्रोजेक्ट माना जाता है और इन द लॉन्ग टर्म मेटा को ओरिजिनल फेसबुक कोर बिजनेस के गिरते यूजर नंबर्स और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को कम करना चाहिए। जकरबर्ग मेटावर्स में वेब 3.0 का भविष्य देखते हैं और ये मेटा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगली विजुअल डिजाइन के अलावा जकरबर्ग के मेटा प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर हेडविंड का सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स मेनली मेटावर्स एडवोकेट्स हैं। उनका ओपिनियन है कि मेटावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाना चाहिए और ये एक कॉर्पोरेशन के हाथों में नहीं होना चाहिए। श्रिंकिंग यूजर नंबर्स, डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कोर बिजनेस, ज्यादा अट्रैक्टिव कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स और एक मेटावर्स जो न केवल अपने ग्राफिक्स के कारण यूजर्स को डराता है। मेटा ग्रुप को ये सब सुनने के साथ साथ भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सोशल मीडिया ग्रुप का शेयर 1 साल से फ्री फॉल में है। ग्रुप का फ्यूचर बेहद ही क्वेश्चनेबल है। हालांकि ह्यूज करेंसी फ्लो के कारण अगले कुछ सालों में ये सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी दिवालिया नहीं होगी, लेकिन विकास की कहानी संदिग्ध है। मार्क जकरबर्ग के मेटावर्स के भविष्य में क्या शामिल होगा, ये देखने के लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। तो आज के एपिसोड को यहीं रैप करते हैं। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dhara. Despite the mainstream market's negative reaction, blockchain gaming appears to have exploded in particularly just this year. Big name venture capital firms across the financial landscape have shown a strong outpouring of support for the potential yet polarizing gaming subsector.
According to DappRadar and blockchain gaming analysis, the blockchain gaming industry has seen a whopping 2,000% rise in activity and overall growth since the beginning of 2021, totaling 52% of the overall blockchain activity. Security incidents such as the recent $600 million Ronin Bridge breach reminds us the interoperability comes with a cost. At the same time, the conflict in Ukraine and the poor performance of the cryptocurrency market hampered gaming sector steady expansion last year. The metaverse continues to flash one of the most intriguing potential in the blockchain industry as game dApps continue to flourish. Since April, venture capitalists and other investors have invested more than $3 billion in blockchain gaming and metaverse ventures. Q1 of 2022 witnessed an inflow of $2.5 billion in investments from the blockchain gaming space, compared to the $4 billion raised by the sector across overall 2021, showing a significant acceleration in money poured into the space. So let's talk about venture capitalists and investors who have made a big bet on this. Andreessen Horowitz, also known as A16Z, one of the dominant forces in the venture capital industry, has launched a $600 million fund dedicated to gaming sector with a sub-focus on Web3, saying it believes gaming infra and technologies will be the key building blocks of metaverse. The A16Z team said the coming metaverse will be built by gaming companies using game technologies, and the industry has already solved many of the problems that need to be solved to create metaverse. It believes games will become the dominant way of people they spend time. The move of A16Z marks nearly $3 billion commitment by venture capital funds and the gaming industry giants into the Web3 gaming or metaverse projects since mid-April. Venture firms such as White Star Capital raised $120 million for its decentralized finance and gaming focus fund, along with $200 million of allocation of blockchain gaming projects by Framework Ventures, both taking place in April 2022. Last month, Epic Games, created by the popular Fortnite title, raised $2 billion to create a metaverse with funding from Sony and Lego. Let's showcase an overview of the blockchain games. The blockchain games attracted 1.22 million unique active wallets, which is UAW, in March of this year, with Axie Infinity being responsible for 22,000 of those in spite of the $615 million Ronin Bridge hack. A rise in popularity of play-to-earn NFT games on Ethereum sidechain has been a big contributor to the growth, with platforms like Crazy Defense Heroes, Pegaxi, Arc8, and Avagochi spurring a 219% increase in Polygon's gaming activity since the beginning of 2022. Activity on the likes of BAC and Ronin, on the other hand, has dropped off since the end of the year as users attempt to minimize risk or more volatile chains. So let's dig deep and review some of the top games. First on the list is Polygon game Crazy Defense Heroes CDH, and Pegaxi has been among the best performing games. Pegaxi on-chain activity has attracted 420% in same time frame and attracted over 16,000 UAW, which is users active wallet, in March. The tower defense game CDH has seen a steady rise in its player base, attracting over 134,000 daily user active base in March, registering a 540% growth from the end of December. The blockchain activity of Mobox increased 10% from the previous quarter on the back of solid roadmap and the moves around the Momverse. On the other hand, the Wax Alien World and Binance Bomb Crypto struggled to keep their blockchain activity on the same levels as the last year. Morgan Stanley has estimated the economic potential of the metaverse into at least a $8 trillion industry. Venture capitalists and investors are throwing capital at Web3 gaming projects at a record rate. However, security issues like the Ronin Bridge exploit and the challenges to achieve full interoperability reminds everyone involved that the mainstream adoption is still a few steps away. That's all for today. This is Manoj Dara signing off. Keep watching Crypto TV. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा।
इंटरनेट के तेजी से हो रहे विकास ने डिजिटल एज की कुछ सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स को जन्म दिया है, जैसे कि नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स। भारत में भी नॉन फंजिबल टोकन्स में रुचि बढ़ रही है। एनएफटी के लिए प्रमुख बाजारों और एप्लीकेशंस में गेमिंग, कलेक्टिबल्स, फाइनेंशियलाइजेशन और सोशल नेटवर्क्स शामिल हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने एनएफटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के कारण आर्थिक विकास की संभावना ज्यादा है। दुनिया भर में मेटावर्स की बढ़ती मांग के साथ कई बिजनेस ओनर्स इंडिया में मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनियों की सहायता से अपनी परियोजनाओं को मेटावर्स टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं। बढ़ती डोमेस्टिक मार्केट्स, डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम और ह्यूज स्किल पूल के कारण अलग अलग बिजनेसेस इंडियन कंपनीज के साथ काम करना चुन रहे हैं, जिनकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में मेटावर्स का भविष्य उज्जवल है। इंडिया में बॉलीवुड, स्पोर्ट्स से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स और आम लोग एनएफटी ट्रेंड को अपना रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम ही सबसे बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन ने नवंबर 2021 में अपने पिता की कविता मधुशाला को एनएफटी का रूप दिया था। उसके बाद सलमान खान, रजनीकांत, कमल हासन, मनीष मल्होत्रा और सनी लियोनी ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। फिल्मों के मामले में अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड, दक्षिण सुपरस्टार यश की KGF 2, प्रभास स्टारर राधेश्याम और अन्य कई फिल्मों के सीन्स, पोस्टर्स और लिमिटेड कलेक्शन एनएफटी फैंस के लिए जारी की जा चुकी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनएफटी का फीवर देखने को मिला है। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी के अलावा कई अन्य स्टार्स भी एनएफटी को अपना चुके हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु पुलिस ने अपने आउटस्टैंडिंग टीम मेंबर्स को सोल बाउंड टोकन्स यानी एनएफटी के फॉर्म में डिजिटल मेडल्स जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टाग्राम पर एनएफटीज लॉन्च, रेडिट की अवतार एनएफटीज, टाइम का एनएफटी में पहला फुल मैगजीन इशू शामिल है। एनएफटी का जिक्र हो और मेटावर्स का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेटावर्स को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्रीज ने भी अपनाया है। मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया अब लोगों के लिए बेहद खास बनती जा रही है। इसमें शॉपिंग, गेमिंग, कॉन्सर्ट अटेंड करना, एजीएम रखने से लेकर ट्रेलर रिलीज और टूरिज्म तक कई चीजें मौजूद हैं। यहाँ तक इंडिया में एशिया के पहले मेटावर्स वेडिंग तक को किया जा चुका है। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मेटावर्स के ट्रेंड को जोर शोर से अपनाया है। श्रीमारू डिसेंट्रलैंड मेटावर्स पर सिनेमा ओपन करने वाला है। वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट ने फर्स्ट वर्चुअल प्लॉट पूजावर्स को अपने नाम किया है और पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी भी मेटावर्स में बल्ले बल्ले लैंड के मालिक बन चुके हैं। दूसरी तरफ प्रभास की राधेश्याम से लेकर यश की KGF 2, अजय देवगन की रुद्रा से लेकर अमिताभ बच्चन की झुंड और कमल हासन की विक्रम तक कई फिल्मों ने मेटावर्स में एंट्री कर ली है। इसे एक कदम आगे ले जाते हुए पूजा एंटरटेनमेंट की अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां मेटावर्स में रिलीज की जाने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तनिष्क और मेक माई ट्रिप जैसी इंडियन कंपनीज ने मेटावर्स स्पेस में एंट्री की है और डिजिटल फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। डिजिटल दुनिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए मार्केटिंग टूल के रूप में मेटावर्स रिलेटेड टूल्स और एनएफटीज इस्तेमाल करने वाली कंपनियां कई सेक्टर्स में फैली हुई हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस की एजीएम को मेटावर्स में होस्ट किया गया था। वहीं शहरों के मामले में तमिलनाडु अब मेटावर्स हब बनने जा रहा है और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टर्मिनल 2 को मेटावर्स में लाने से लेकर कर्नाटका में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार द्वारा मेटावर्स में मौजूद थीम पार्क का ब्लूप्रिंट भी शेयर कर दिया गया है। इंडिया में अधिकांश मिलेनियल्स और जेन ज़ी ने मेटावर्स और एनएफटी के बारे में अपनी रुचि दिखाई है। इंडिया पहले से ही गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है। हाल में कड़े रेगुलेशन के बावजूद मार्केट वेंचर्स के लिए ओपन है। मेटावर्स में हो रहे इस क्रांति का सभी इंडस्ट्री प्लेयर्स अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही ताजा जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया धीरे धीरे नहीं बल्कि काफी तेजी से हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है और इसमें ब्लॉकचेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, एसेट को ट्रैक करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक इम्यूटेबल लेजर की तरह है, यानी एक डेटाबेस जिसमें कोई अनधिकृत छेड़छाड़ संभव नहीं होती। और इन्हीं बातों का प्रयास ब्लॉकचेन के जरिए हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम में शेयर लेजर पूरी जानकारी का डेटाबेस है। इस डेटाबेस को डॉक्टर, मरीज और पेशेंट हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सभी संबंधित लोग देख सकते हैं। ब्लॉकचेन को एक नए ब्लॉक के रूप में अपडेट किया जाता है। इसमें सभी पक्षों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का जॉइंट ओनर और कंट्रीब्यूटर माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि EMR को ही ले सकते हैं। ब्लॉकचेन पर EMR को पेशेंट का इलाज कर रहे डॉक्टर अपडेट कर सकते हैं। वहीं पेशेंट भी अपनी मेडिकल जांच की रिपोर्ट EMR में अपडेट कर सकते हैं, जिसे उनके साथ साथ डॉक्टर भी देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मौजूद ये इम्यूटेबल लेजर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हर तरह से फायदा पहुंचा रहा है। मेडिकल स्कूल की डिग्री हासिल करनी हो, क्लिनिक की जमीन इत्यादि संबंधी जानकारी हो या फिर किसी क्लिनिकल ट्रायल संबंधी कोई रिकॉर्ड, सब अब ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरतों में फिट बैठते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा सकता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन एक सही टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में बड़ी आसानी से भरोसेमंद डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लॉकचेन आम लोगों में हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर विश्वास स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन ब्लॉकचेन के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद डेटा का साइज और नेचर थोड़ी बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। ब्लॉकचेन पर बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के दौरान HIPAA और GDPR जैसे कंप्लायंस की जरूरत पेचीदगी को बढ़ाती है। लेकिन कुछ कंपनियां और संस्थान इसे आसान करने में जुट गए हैं। हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हेडरा कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैशग्राफ का इस्तेमाल करती है। वही डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म सेफमेयो क्लिनिक कोविड-19 टेस्ट और हेल्थ सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ने वाले टेक्नोलॉजी के जमाने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रिसीवर के बीच अब सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। और वो दिन दूर नहीं जब ब्लॉकचेन भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को और अधिक आसान, तेज और फायदेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और दिलचस्प स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Shikha Singh and in today's special segment, I am going to tell you about an extraordinary story of a man
and his electronic chip. We have all heard of the film Ravan, which is one of the most expensive films ever made. What if I told you that there is a real-life counterpart to Shah Rukh Khan's character G1 in the film? Yes, you heard that right. A Swiss IT professional called F418, whose real identity is not yet revealed, surgically implanted a lightning-enabled chip into his left hand to make Lightning Network payments. It's worth noting that F418's NFC implant into a human is one of its kind. F418 has made the entire process open source and accessible, including health warnings on GitHub. He has called the process Lightning Paw. Now the question is, what exactly is the Lightning Network payment? Why did he implant the chip in his hand? Did implanting the chip in his hand work for him? Did it hurt while the chip was implanted? Is the procedure medically safe? We will of course get to know all of these things, but in the meanwhile, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more updates. Well, Lightning Network is a second layer payment protocol that operates on the top of Bitcoin blockchain. It allows for near instant and near free transactions by enabling users to make multiple payments without having to wait for the transactions to be confirmed on the blockchain. Most importantly, the Lightning Network creates a network of payment channels between users, allowing them to transact directly without the need for each transaction to be recorded on the blockchain. Users use a smartphone or a Bolt card to transact on payment channels. But unlike other users, F418 went above and beyond by surgically implanting a Lightning-enabled chip in his hand. F418 stated that he experimented with the body modification and Lightning Network payments for entertainment purposes. He does not recommend that Bitcoin enthusiasts take control of the Layer 2 Payments Network, or LN, as he did, he said in an interview with Cointelegraph. F418 loftily declared that while most of the people carry cards, it's his hand that has the wow factor. However, his attempts to pay failed as the first implant F418 used was defective. Undeterred, he visited a medical professional to surgically remove the implant before trying again. The second attempt succeeded. The chip sits neatly in his left hand and can now make LN payments without reaching for a Bolt card or a smartphone. F418 added that the chip does not hurt at all even if he goes to the gym. While the process is medically safe, the only problem with the implant is that you cannot make them entirely safe. It's not the same security as the Bolt card. You can only do LN URL withdrawals. It's not safe. Plus, if you make a mistake during the implantation process, it's not a good idea to take the chip in and out of the body as it could cause harm or infection, F418 explained. So it's best to get it right the first time. To make a payment, he simply places a hand near a compatible NFC reader. Now, if someone asks you for a payment in cryptocurrency, you don't need your smartphone or your Bolt card. You can simply tell them, "Talk to my hand." Well, that's it in today's special segment. This is Shikha Singh signing off. We will meet again with more exciting updates from Cryptoverse. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get instant updates. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. For the past few years, the word metaverse was most popular among science fiction fans. And
now the entire world is discussing its uses, functionality, and so on. I agree, Ruchi. Various companies have started their metaverse journey by recognizing and understanding their target demographics. According to various reports, the global metaverse market is expected to reach $427.9 billion by 2027 with a compound annual growth rate of 48.2%. Well, those are very interesting numbers, Vishakha. With the growing demand for the metaverse around the globe, many business owners are turning their projects into metaverse technology with the assistance of metaverse development companies in India. And Ruchi, interestingly, various businesses choose to work with Indian companies due to factors like increasing domestic markets, a dynamic startup ecosystem, and a huge skill pool. Wow, the future of the metaverse in India looks really bright. So let's get to know about the top metaverse development companies in India. Yes, let's start with Hyperlink Infosystem, which has become leading and most popular metaverse development company for global clients. Yes, Vishakha. Hyperlink Infosystem is headquartered in India and has offices in the United States, the United Kingdom, France and Canada. The firm has worked with around 2,700 plus clients globally since its beginning. They have started working on latest technologies including AI, NFT and metaverse. It also has the ability to provide secure, efficient, transparent and permissionless transactions. Well, not only Hyperlink Infosystem, but the most valuable IT services brand, Tata Consultancy Services, is also on the list. TCS is ranked among the most valuable IT services brands globally and is one of the most well-known IT firms in India. The company provides a variety of services including enterprise apps, metaverse solutions, cloud solutions, blockchain, the Internet of Things, mobile apps and much more. And Vishakha, how can we forget global software development firm Finjit? Whether it's sports, fashion, art, healthcare, film or technology industries, Finjit can offer you customized metaverse projects. Their services include web development, mobile app development, metaverse, IoT and enterprise software development. Ruchi, Deloitte, the company which helps in clients and society using next generation technologies, is too on the list. Deloitte professionals leverage today's technologies such as AI, blockchain, Internet of Things, metaverse to develop the most advanced computational infrastructure for the clients. That's right, Vishakha. These factors are the reason that various businesses choose to work with Indian companies. Yes, Ruchi, the Indian companies such as Tech Mahindra transforms the consumer experience while producing tangible business results. And to create business-to-business metaverse-based solutions, they provide industry-leading network and technology capabilities such as ubiquitous artificial intelligence, blockchain, 5G, augmented reality, virtual reality, and quantum computing. Well, that's interesting, and there are many more such companies in the list such as Travancore Analytics, Infosys, Accenture, Capgemini and Edge Data Systems. Well, that's all in today's special segment. We will meet again with more exciting updates from Metaverse sector. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. This is me, Ruchi Sharma, signing off. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Have a great day. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। माई पॉइंट इज दैट अगर मैं एक सिंगल ग्रीन स्क्रीन के साथ इतनी इमेजिनरी उड़ान भर सकती हूँ तो जरा सोचिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ विजनरी फिल्म मेकर क्या नहीं कर सकते।
और जहां विजनरी फिल्म मेकर्स की बात आती है, वहां एंटरटेनमेंट की दुनिया के दिग्गज राइटर, डायरेक्टर और इन्वेंटर जेम्स कैमरन का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर 2, एलियंस, टोटल रिकॉल और टाइटैनिक जैसी ब्रेथ टेकिंग मूवीज बनाने के बाद वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं ऐसी पेशकश जिसने सबका दिल नीला नीला कर दिया है। अब इस नीले नीले क्लू से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार 1 ने ब्रेथ टेकिंग न्यू 3D टेक्नोलॉजी के जरिए मानो हर तरफ सनसनी मचा दी थी। कैमरन ने इस फिल्म को 10 साल पहले ही अपने मन में आकार दे दिया था, लेकिन उसे दर्शकों के बीच लाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को बनाने में उन्हें लंबा समय लग गया। रिलीज के बाद सिनेमा की दुनिया को एक नया आयाम देने वाली फिल्म ने सभी का फिल्म देखने का नजरिया ही बदल दिया। फिल्म मेकिंग के तरीकों में क्रांति लाने के लिए कैमरन ने रियल फुटेज और मोशन कैप्चर्ड CGI को मिक्स कर 3D और CGI को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए खुद टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। $237 मिलियन के भारी भरकम बजट से बनी अवतार ने वर्ल्ड वाइड $2.92 बिलियन की कमाई की थी। अवतार 1 आज तक की वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ब्लॉकबस्टर है। The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much. I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. It is just remarkable to be able to see the movements and the performance go straight into the character. And it's like, there's Kate and then, hey, there's Renard. So that has been fascinating to me. What is this? Don't worry. अवतार ही नहीं बल्कि इसके पहले भी अपनी सभी फिल्मों में जेम्स कैमरन ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अवतार को नोवेल टेक्नोलॉजी इमेज बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर ने अलग बनाया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान एक्टर्स को कैमरे से लैस स्पेशल हेडगियर को सिर पर पहनना था। CGI के अलावा बड़े पर्दे पर अवतार को दर्शकों के सामने लाने के लिए डिजिटल एनिमेशन, स्टेरियोस्कोपिक 3D फ्यूजन कैमरा सिस्टम, वर्चुअल कैमरा और साइमल्कैम जैसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया था। कैमरन एक कहानीकार के रूप में समझाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को टूल किट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर किस तरह से रियलिस्टिक टच दिया जा सकता है। कैमरन ने अपनी फिल्म मेकिंग से ये साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अहम भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं रिसेंटली रिलीज अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में। तो इस फिल्म में भी जेम्स कैमरन ने इसे अवतार 1 से भी विजुअली बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अवतार 2 में फिल्म मेकर ने सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस फिल्म को उन्होंने कैसे शूट किया। तकरीबन $400 मिलियन के बजट में बनी अवतार 2 ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। ऐसे में देखते हैं कैमरन की टेक्नोलॉजी से बनी फिल्म में मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से फिल्म को इन्फ्लुएंस किया है। सबसे पहला नाम वर्चुअल रियलिटी का आता है, जिसकी मदद से रियल अंडर वाटर एक्सपीरियंस को दर्शकों ने ऑन स्क्रीन अनुभव किया है। फिल्म की कास्ट और क्रू ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से रियल टाइम में इमेजिनरी पेंडोरा को एक्सप्लोर किया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑगमेंटेड रियलिटी का आता है। पेंडोरा की दुनिया AR की वजह से ही रियलिस्टिक लगती है। जटिल शरीर वाले एलियंस की फिल्म में AR के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, जिसे परफॉर्मेंस कैप्चर के रूप में भी जाना जाता है। ये लोगों या वस्तुओं की मोशंस की रिकॉर्डिंग और उन मोशंस को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एनिमेटेड वस्तुओं में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही खत्म होती है हमारी आज की स्पेशल स्टोरी, लेकिन अवतार मूवी सीरीज का सिलसिला जारी रहेगा। जेम्स कैमरन ने अवतार 3 पर काम शुरू कर दिया है। भाई मैं तो अवतार 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप भी होंगे। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए 3 TV।
P2E यानी प्ले टू अर्न क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे और हमारी स्टोरी P2E सेगमेंट 1 में हमने आपको इस बारे में डिटेल में समझाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं M2E क्या है? इफ नॉट देन डोंट वरी, मैं हूं ना। आज मैं आपको इस स्टोरी के पार्ट 2 में ना सिर्फ M2E गेम्स के बारे में बताऊंगी बल्कि इससे जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगी। लेकिन मूव टू अर्न क्रिप्टो गेम्स की दुनिया में एंटर करें उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। M2E यानी मूव टू अर्न बिल्कुल अपने नाम की तरह है, यानी जितना आप मूव करेंगे उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे। हाल फिलहाल में अगर इसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कभी मिली है तो वो है कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त। दरअसल ये वो टाइम था जब सभी अपने घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर थे, लेकिन इस गेम ने प्लेयर्स को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए मोटिवेट किया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। ये यूजर्स के लिए Web3 टेक्नोलॉजी के जरिए रिवॉर्ड अर्न करने का नया और बेहतरीन तरीका है। मूव टू अर्न गेम्स में आप जितना मूव करेंगे उसके बदले में उतनी ही ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अर्न करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ टॉप मूव टू अर्न क्रिप्टो गेम्स की, जिन्होंने बेयर मार्केट में भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। नंबर 1, मेटा जिम। मेटावर्स में मेटा जिम पहला एक्सरसाइज टू अर्न जिम है। ये कॉरस्पॉन्डिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन और ओन पॉलीगॉन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी MGCN के साथ आता है। इसमें फिटफाई, स्लीपफाई एंड गेमफाई फीचर शामिल है। मेटा जिम में यूजर्स NFT मेटावर्स अवतार से लैस हैं, जिन्हें मेटा जिम बडीज के तौर पर जाना जाता है। ये अवतार कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ बिहेवियर्स लॉक कर सकते हैं और मेटा जिम कॉइन यानी MGCN अर्न करने के लिए फिटनेस चैलेंज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल न्यू NFT क्लोथिंग, पावर अप्स और अपग्रेड्स को लेवल अप और मिंट करने के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल मेटा जिम अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। नंबर 2, STEPN। STEPN एक Web3 लाइफस्टाइल ऐप और मूव टू अर्न NFT गेम है, जो वर्कआउट पूरा करने के साथ ही रिवॉर्ड्स देती है। इसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और बहुत सी एक्टिविटीज से GMT टोकन्स अर्न किए जा सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा GMT की कमाई होगी। STEPN के टोकन का नाम GMT है। इसमें 600 मिलियन GMT कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 6 बिलियन की टोटल सप्लाई है। अप्रैल 28, 2022 को $4.11 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले STEPN ने मार्च 11, 2022 को $0.1008 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। STEPN DigiFinex, Binance, Woo Network, Tidex और Whitebit जैसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। नंबर 3, DotMoves। DotMoves एक मूव टू अर्न NFT गेम है जो वर्कआउट पूरा करने पर मूव टोकन्स अर्न करने का मौका देती है। इसके ऑग्मेंटेड रियलिटी फीचर के साथ कोई भी रियल वर्ल्ड लोकेशंस में वर्कआउट कर सकता है और उसके लिए रिवॉर्ड भी हासिल कर सकता है। किसी की भी प्रोग्रेस और रिवॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए DotMoves मूव पॉइंट्स इस्तेमाल करता है। करंटली आप फ्री स्टाइल फुटबॉल और डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन गेम आइटम्स खरीदने के लिए अर्न पॉइंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसमें अवतार और अपग्रेड भी शामिल है। इन सब के अलावा इसका इस्तेमाल प्राइजेस जीतने के लिए, कॉम्पिटिशंस और लीडर बोर्ड्स में एंटर करने के लिए भी किया जा सकता है। DotMoves के टोकन का नाम मूव है। इसमें 850 मिलियन मूव कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। अगस्त 29, 2021 को $0.0963 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले DotMoves ने जुलाई 20, 2021 को $0.0032 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। DotMoves, PancakeSwap, Gate.io, MEXC Global, Qcoin और CoinTiger जैसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। नंबर 4, GenoPets। वर्ल्ड्स फर्स्ट मूव टू अर्न NFT गेम के रूप में जाने जाने वाला GenoPets एक पेट रेजिंग गेम है जो आपको अपने स्पिरिट एनिमल की देखभाल करने पर जीन टोकन्स अर्न करने का मौका देता है। साथ ही डेली एंगेजमेंट के जरिए ग्रो करता है, यानी आप अपने पेट की जितनी अच्छी देखभाल करेंगे उतने ही ज्यादा आप जीन अर्न कर पाएंगे। GenoPets के टोकन का नाम जीन है। इसमें 3.9 मिलियन जीन कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और 100 मिलियन की टोटल सप्लाई है।
नवंबर 30th 2021 को $37.83 के साथ अपना ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाले जेनोपेट्स ने फेब 24 2022 को $5.28 के साथ अपना ऑल टाइम लो दर्ज किया था। जेनोपेट्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बिटगेट, पैनकेकस्वैप, बायबिट, बिटफॉरेक्स और डिजीफिनिक्स पर लिस्टेड है। प्ले टू अर्न गेमिंग अडॉप्शन के मामले में प्ले टू अर्न गेम्स का बोलबाला इंडियंस के बीच सबसे ज्यादा देखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया 34% के साथ सबसे आगे है, जबकि 29% के साथ दूसरे नंबर पर है हांगकांग, 27% के साथ तीसरे स्थान पर है यूएई, 25% के साथ चौथे पायदान पर है फिलीपींस और 23% के साथ फिफ्थ पोजीशन पर है वियतनाम। जॉइंट बिजनेसेस और वेंचर फंड मैनेजर्स गेमिंग इंडस्ट्री पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हाल फिलहाल में इस सेक्टर में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, उससे साफ है कि मूव टू अर्न इनिशिएटिव में मूव टू अर्न गेमिंग मॉडल की इमिनेंट प्रोग्रेस लाजमी है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंट्रिक NFT गेम्स के 2022 में खुलकर सामने आने की उम्मीद है, जो तमाम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और फिटनेस एक्टिविटीज के जंक्शन को मोनेटाइज करने के लिए अपनी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन P2E गेमिंग फिलीपींस में फ्लरिशिंग इंडस्ट्री के तौर पर साबित हो रही है, जिसने 2020 के मुकाबले पिछले साल रेवेन्यूज में तेजी से बढ़त देखी। यहाँ गेमिंग सबसे ज्यादा कंसोल्स, मोबाइल और पीसी पर एक्सेस की जाती है। ये फिलिपिनोज में स्पेशली यंगर जनरेशन के बीच बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रही है, क्योंकि गेमिंग को लेकर मेन में ज्यादा दिलचस्पी होती है। इसीलिए फिलीपींस में वुमेन के मुकाबले मेन ज्यादा कमाई कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, 22% वुमेन के मुकाबले 28% मेन जो प्ले टू अर्न गेम्स खेलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, 3 में से 1 फिलिपिनो गेमर NFT गेम्स खेलने की वजह से जॉब्स छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इससे जुड़े फास्ट फैक्ट्स पर नजर डालें तो सर्वे में शामिल हुए रिस्पोंडेंट्स, जिनमें से 97% फिलीपींस बेस्ड थे, उनमें से 59% गेमर्स ने कहा है कि वो NFT गेम्स को अपनी प्राइमरी फुल टाइम जॉब के रूप में खेलना पसंद करेंगे। NFT गेम की डिमांड पिछले साल एक्सी इन्फिनिटी के राइज के साथ बढ़ी, जो फिलीपींस में गेमर्स के लिए प्राइमरी इनकम का एक पॉपुलर सोर्स बनकर सामने आया है। The future of P2E and M2E वर्ल्ड ओवर डोमेस्टिक स्पेस में फुल P2E इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन एशिया और ईस्टर्न यूरोप में इसका स्कोप और फ्यूचर कैसा होगा, इसके संकेत पहले से ही मिल चुके हैं। वहीं STEPN जैसे M2E प्रोजेक्ट्स का फोकस खास तौर पर मूविंग एस्पेक्ट और अपने टोकनोमिक्स को बढ़ाने की तरफ है। ऐसे में मूव टू अर्न एप्स का अर्लीस्ट फॉर्म फ्यूचर में कितना सस्टेनेबल होगा, ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। जहां P2E ज्यादा एस्टैब्लिश है, वहीं M2E एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है। हालांकि दोनों के हेल्थ इंप्लीकेशंस बहुत अलग हैं। प्ले टू अर्न उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो चाहे फिट हो या ना हो, दोस्तों के साथ वर्चुअली हैंग आउट करने के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो वहीं मूव टू अर्न उन इंडिविजुअल्स के लिए मोटिवेशनल हो सकता है जो एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मैकेनिज्म Web3 गेमिंग इंडस्ट्री के पिलर्स बने रहना चाहते हैं और वक्त के साथ ग्रो करना चाहते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। 3.0 TV के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी न किसी बातों पर
या फिर किसी चीजों पर अनुमान लगाते रहते हैं और कई बार वे सच भी होते हैं। बिल्कुल वैसे ही वेब 3 टेक्नोलॉजी में इस तरह के अनुमान लगाने को ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है, जो अब क्रिप्टो जगत में भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का अटैक खासकर आपके पासवर्ड को चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एयर क्रैक NG, जॉन द रिपर, L0PHT क्रैक और रेनबो क्रैक उसको ज्यादातर उपयोग करते हुए देखा गया है। सही पासवर्ड मिलने तक ये टूल्स विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादातर अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा इन टूल्स को उसे क्रैक करने में समय लगता है। यदि पासवर्ड छोटा हो तो इस काम में केवल कुछ ही सेकंड्स लग सकते हैं। इसलिए आमतौर पर कंपनियों में यूजर्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए मैंडेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक और क्या क्या कर सकता है। यह अटैक आपका पासवर्ड और व्यक्तिगत डेटा चुराकर आपके ऑनलाइन अकाउंट्स और नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंच सकता है। लॉगिन इंफॉर्मेशन को हासिल कर आउटसाइड पार्टियों को बेच सकता है। आपके अकाउंट्स में जाकर जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उन्हें फिशिंग लिंक या फर्जी कंटेंट भेज सकता है। वेब पेजेस और अन्य सार्वजनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का गलत तरीके से प्रचार कर सकता है। डोमेन को हानिकारक कंटेंट वाली वेबसाइटों पर फॉरवर्ड भी कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक की इस टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर IT पेशेवरों द्वारा नेटवर्क सिक्योरिटी की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक के 3 तरीके हैं। पहला हाइब्रिड ब्रूट फोर्स, दूसरा रिवर्स ब्रूट फोर्स और तीसरा क्रेडेंशियल स्टफिंग। तो आइए देखते हैं ये अटैक्स किस तरह से होते हैं। नंबर 1, हाइब्रिड ब्रूट फोर्स अटैक। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अटैक है। इस अटैक में पासवर्ड को डिकोड करने के लिए एक डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है, जिसमें अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्डों की एक लंबी लिस्ट होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने आपका पासवर्ड केवल पासवर्ड रखा है या फिर 1 2 3 4 5 6 जैसे कुछ नंबर्स रखे हैं, तो हाइब्रिड ब्रूट फोर्स उसे तुरंत ही पहचान लेता है। नंबर 2, रिवर्स ब्रूट फोर्स अटैक। इस अटैक में पोटेंशियल यूजर नेम्स की लिस्ट के ऑपोजिट एक कॉमन सेट ऑफ पासवर्ड या फिर सिंगल पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, क्रेडेंशियल स्टफिंग। इस अटैक में अगर अटैकर को लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है तो वो उसका उपयोग कई वेबसाइटों और नेटवर्क सर्विसेज तक पहुंचने के लिए कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, कई लोग विभिन्न वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करते हैं, जिससे अटैकर आपके सभी अकाउंट्स तक आसानी से पहुंच सकता है। इन ब्रूट फोर्स अटैक से आप तो बच सकते हो, लेकिन आपको कुछ आसान पर बेहद ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। आमतौर पर कमजोर पासवर्ड और केयरलेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ब्रूट फोर्स अटैक के कॉमन टारगेट्स होते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें, कम से कम लॉगिन अटेम्प्ट्स करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जरूर इस्तेमाल करें। आखिर में आपकी कंपनी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज पर भी खास ध्यान देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो एम्प्लॉयज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनसाइडर अटैक्स के शिकार हो सकते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. A happy new year to all the viewers of 3.0 TV. I am Manoj Dara. So,
While 2021 will be remembered as the year when the cryptocurrency market reached $3 trillion mark, along with the rise of non-fungible tokens and the metaverse, 2022 will be remembered as the year when central banks' reactions to the ensuing inflation caused significant headwinds. What went wrong? The Terra collapse bought multiple funds, most notably Three Arrow Capital, which had downstream impacts on creditors, notably BlockFi, Celsius, Voyager, and Genesis. The bankruptcy of FTX and Alameda has actually put an extra pressure on the creditors, disrupted the bankruptcy of Voyager, causing to the bankruptcy of BlockFi, and forced Genesis and Gemini to cease withdrawals, eliminated equity investors in the company, and caused a sharp decline in the value of linked tokens. Next on the list is the Fed rate hike. Like broader financial markets, the crypto market had responded acutely to the US Federal Reserve's actions, particularly the Fed's rate hikes along with the monthly consumer price index releases, which generated expectations on how the central bank may leverage interest rates as a tool to curb inflation and going forward as well. Simultaneously, 2022 kept both market participants and the broader investors captivated, as many of the large centralized institutions that service the digital assets or speculate on it have blown up spectacularly. So let's understand the top trends of 2022. First on the list is Bitcoin. Bitcoin's price fell below its 2017 cycle high in June for the first time since January 2021. Although Bitcoin's price dropped 64.1% year to date, its dominance remains stable at 40% odd of the total digital market capitalization. Next on the list is all of the top 10 cryptocurrencies by the market capitalization experience negative price return as low as 81% and above. Nevertheless, exchange-associated tokens such as BNB and OKB and meme coins like Doge perform better than BTC and other layer 1 protocols. Next is, as the market experienced a steep downturn, stablecoins became the exit gateway. The annual stablecoin adjusted transactions volume crossed $57.2 trillion in 2022, a 19% year-on-year growth. Next, since Jan 2022, Bitcoin future volume decreased by 52%, more than Ethereum's future, a 28% decline. The number of layoffs in 2022 was the highest. So in short, we are in 2023. Investors must be aware of the macro and systematic concerns affecting the crypto industry. The Federal Reserve of the United States monetary policy reactions on inflation has continued to destabilize the market. That's what the market participants are saying. And they feel that the crypto contagion from the previous bankruptcies is still causing market volatility, with growing regulatory pressures and minor capitalization expected to continue into the new year as well. That's all there is in this special story. This is Manoj Dara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Thank you. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी भारत तेजी से आगे निकल चुका है। भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया भर में तीसरे नंबर का स्थान अर्जित कर चुकी है। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के 118 से ज्यादा एक्सेलेरेटर्स, 26,500 एक्टिव एंजल्स, 150 वेंचर कैपिटल्स के साथ तरक्की की राह पर है। भारत ने भले ही क्रिप्टो का स्वागत नहीं किया है, लेकिन क्रिप्टो की इकोसिस्टम देश में बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से कमाई का जरिया बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई एप्लीकेशंस में किया जा रहा है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी असंगठित अर्थव्यवस्था में काम करती है। यही बड़ी आबादी फ्रॉड का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। भारत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई नहीं है। भारतीय बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अलग अलग एरियाज जैसे ट्रेड फाइनेंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और लॉयल्टी एंड डिजिटल आइडेंटिटी में ब्लॉकचेन की टेस्टिंग को कुछ वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया था। भारत में सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन को अपनाया है।
TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम निजी क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन टी बोर्ड, कॉटन इंडस्ट्री, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्रों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है। कई भारतीय कंपनियां ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ दुनिया को आशाजनक परिणाम दे रही हैं। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी को और अधिक सुचारू रूप से अपनाने के लिए अलग-अलग संगठन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनियों तक पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किए गए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि ब्लॉकचेन जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का लोगों के जीने और काम करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस साल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने न्यूक्लियस विजन और तेलंगाना और गोवा की सरकारों के साथ पार्टनरशिप में इनॉग्रल इंटरनेशनल ब्लॉकचेन कांग्रेस को होस्ट करने की घोषणा की है, जो दुनिया भर के सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के बड़े नामों को साथ लाएगी। भारत ब्लॉकचेन और वेब3 डेवलपर्स के लिए हॉटस्पॉट में से एक है। भारतीय ब्लॉकचेन डेवलपर्स की दुनिया भर में मांग है और हम इसे एक बढ़ते ट्रेंड के रूप में देख सकते हैं। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और दिलचस्प स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं रुचि शर्मा, आप देखते रहिए 3.0 TV। We are entering 2023 in a place where we know only the good actors will survive, and I hope by the end of 2023 we would have eliminated most of the bad actors, and we need a lot of media channels like yours to actually come and cover what entrepreneurs think, what the investors think, so that the broader market is aligned and the broader market understands the risks when they enter the cryptocurrency space. Governments, academia, corporates, startups, investors, everybody is aligned to see how many more innovations will come, or value-driven innovations should come for through these technologies. I think good to see that how Web3 TV has really contributed on awareness side, various fundamentals aspect, explanatory video side. So let it continue for years together. The coming year is going to be really fantastic, and this is the year which we are going to start building the products. So far we have been literally we have been caught down by a lot of scams and other things which keeps on hitting us hard. But I think the moment we start to build the real time use cases and products, that's where we are going to achieve the whatever the hard work that we have put in the last few years, it's going to give the real fruits for us. 2023 is going to be very exciting, as most of these ideas which were conceptualized in 2022 will see execution in 2023, and the metaverse adoption will also increase by minimum 20%. The year 2023 is gonna rocking year for metaverse, as many industry have used AR VR metaverse for some pilot project. This year 2023 is the year where they will scale it up. They will try to adopt at high level at many departments, and we expect that this metaverse race is going to be more sharp, more precise, and more strong. What we will see in the next year is the rise of the true Web3 startups and the companies, and you will see that companies that will be built to last for the next 15-20 years, and I think I'm super excited, super bullish on it, because Loka is definitely going to be one of them. So 2023, I think Web3 ecosystem will continue to grow. As far as the asset prices, I think these are some of the inefficient systems. So as you know, Red and Nassim Taleb, inefficiency out of a system will definitely weed out, and that is what is happening. And I think these kind of inefficiencies, when they have been brought forward,
People are now more cautious about smart contract audits. People are more knowledgeable about bringing in transparency through proof of reserves and other concepts. And I think regulatory agencies are also looking at it, what can be done to bring in more regulations here or better regulations here. So I think with these, the Web3 ecosystem will continue to expand in 23. And at the same time, I hope with more self-regulations and external regulations, I think centralized markets or centralized entities within the blockchain space will also improve. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Manoj Dar and Happy New Year to all the viewers. So, cryptocurrencies continue to suffer from the prolonged winter season, and there is a big concern on the Bitcoin mining hash rate. So, we have a reason and we will tell you why. The recent winter has sent shivers to the spine of related industries. Bitcoin mining activities too suffered heavily in the recent times. That's what the news reports have suggested. The reason being the chilly weather conditions observed in United States by the December end. Yes, the hash rate of Bitcoin miners, the key parameter to a certain success, witnessed a sharp drop. Essentially, a Bitcoin network accumulates hash rate per second from the miners that are online. So, every guess made by a miner towards solving the next block determines this hash rate. So this also helps validate the level of security and mining difficulties of the blockchain network. Recently, the Bitcoin mining hash rate witnessed a sharp drop as the storm tore through the multiple states of the United States. Grids across the region came under immense pressure as freezing cold temperature led to the increase in demand by the residents to heat their homes. To ensure adequate energy availability, some of the mining operations had to wind down. Since number of Bitcoin miners decided to pause their operations to freeze some of the energy, they had to take a hit on the hash rate contributed by the country. There has been an increase in the hash rate since then, but market participants believe the worst is not yet over. By Christmas Day, the global hash rate tanked almost 40%, dropping from a previous day peak of 276 exahashes per second to 175 exahashes per second. On the same day, the hash rate increased by 39%, bringing it back to the roughly around 244 EHS. Since then, the hash rate has continued to wobble day in day out and now has dropped back to the 212 EHS levels once more. This shows that while miners have turned some of their machines back on, they may be shutting them down once more as the extremely cold weather persists. Energy prices, debt burden, and Bitcoin price declines continue to influence the fortunes of the mining industries. In November, hash rate declined by 13.1% from all-time highs. However, of the major hash rate declines since 2016, that's still relatively small compared to the handful of down periods over 15% during that time. As of now, the hash rate is around 250 EHS and down 7.84% from its all-time high of approximately 276 EHS. This is the largest downward difficulty change observed since July 2021, when the Chinese mining ban caused a series of downward difficulties adjustments. After a 452% rise in value on its November 2021 peak of $19.1 billion, the market wiped out 90% of its value in less than a year. In an environment of rising global energy prices and rising interest rate, the mining industry will continue to feel the heat. And this suggests that the miners may continue to sustain with the squeezing market conditions, and they will have to be prepared for the worst of the downward of public miner market capitalizations and hash rate prices, which is actually nothing but miner revenue per terahash. So yet the activities will continue regardless of tough times, because every 10 minutes the block will be mined. That's all there is in this special story. This is Manoj Dar signing off, but keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Thank you.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Metaverse Magic, where we bring you major updates from the global metaverse space. To begin with, here's some good news for the metaverse gaming industry. The gaming industry is the center of the metaverse today, and tech giants are betting big on it. According to a report by Valuates, gaming-led global metaverse market can reach $28 billion by 2028. Here's what the founder and CEO of Tamasha Live, Mr. Saurabh Gupta, has to say about it. Currently, we see, the gaming industry is of size more than $2.5 billion and would reach around $8.9 billion in the next 5 years. So this is the overall gaming, right? And out of that, there are multiple segments. There is real money gaming. There is people pay for playing games. So the Web3 segment is very, very small compared to the overall gaming space. Even in the next 5 years, real money gaming is going to dominate the space, which would be more than 50%. So how I see gaming is going to evolve, or basically metaverse is going to evolve in gaming. And now an exciting update for you all on Christmas celebrations in the metaverse. This year, we saw a lot of festivals being celebrated in the metaverse. And now, as Christmas is around the corner, leading blockchain development firm Entire is manifesting Christmas to the world through metaverse with its Anfestia Christmas celebrations. Yes, inviting the world to join the Anfestia Christmas festivities, Entire has come up with a Christmas carnival on metaverse replete with fun, games, music, dance, and an exciting opportunity to have your own metaverse avatar. Once participants enter Anfestia Christmas in Metaverse after registration, they can create their own virtual avatar and roam around enjoying all kinds of fun activities created by Entire. Well, there are some secrets awaiting you to unravel once you join the Anfestia Christmas celebrations. And out there in the metaverse, Mark Zuckerberg, the big daddy of Meta, has announced his big investment plans for 2023 too. Meta Platforms recently shared new details about its metaverse investments and announced plans to launch an updated version of the Oculus Rift 2 virtual reality headset next year. Meta obtained the Oculus line of VR headsets in 2014 through a $2 billion startup acquisition. Since then, the social media giant has brought several new VR devices to the market. Well, recently John Carmack, who was the consulting CTO of Meta's virtual reality initiative, including its Meta Quest headset, left the company. Mark Zuckerberg was recently asked some questions whether Meta was trying to shape the future of technology, to which his reply was, yes. That's a fairly broad statement, but yes. Well, according to reports, Meta is planning to invest $19.2 billion in its metaverse next year. From the auto sector, Italy too has something to celebrate since Fiat has opened world's first metaverse-powered dealership in Italy. Yes, Fiat has opened the world's first metaverse-powered car dealership in Italy, which will enable customers to research, configure, and even complete their next car purchase, recreating the feel of a showroom from the comfort of their homes. Initially, customers will be able to buy the flagship model 500 La Prima by Boccoli before the experience will be extended to the entire Fiat 500 lineup later this month. Before the end of the first quarter of 2023, customers will be able to explore additional Fiat models in the Metaverse store, while the digital experience will also be made available to other markets. There is Meta news coming in from India's Kerala also, where students will soon be able to experience education in the virtual world. Yes, the startup in Kozhikode Cyberpark hopes to take learning to the next level with its newly developed learning and training models for educational institutions and the corporate sector using modern technology such as augmented reality, virtual reality, and metaverse.
The company firmly believes that these innovative ideas will help make the learning and training process at school, college, and university levels a lot simpler. And as we wrap up, let's see what's on in the glamour world. In a partnership with Roblox and iHeartMedia, NYX Professional Makeup has debuted the House of NYX Professional Makeup. Part of iHeartland's immersive world, players can explore the brand's newest collection in an interactive space. Users will have different points of engagement to collect NYX Professional Makeup limited edition makeup looks for their Roblox avatars. The 3 looks feature exclusive Spring 2023 products, Vivid Matte Brights Liquid Liner, Smooth Whip Matte Lip Cream, Vivid Matte Liquid Liner, and Bear With Me Blur Skin Tint Foundation. The partnership will carry into 2023, where the brand's presence will also be spotlighted through the NYX Professional Makeup pink carpet. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such updates on Metaverse from all over the world. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like this video, share, subscribe 3.0 TV, and yes, do not forget to press the bell icon to get instant updates. नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। 3.0 टीवी के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एसएमएस फिशिंग, डीएनएस हाईजैकिंग और फिशिंग बॉट्स अटैक्स को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। अगर पिछला एपिसोड आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर जरूर देखें। जैसा कि हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में भी असली कम और नकली ज्यादा पाए जाते हैं। अब तक हमने फिशिंग के कई प्रकार देखे हैं। आइए इस एपिसोड में ऐसे कुछ और फिशिंग अटैक्स के बारे में जानते हैं। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फेक ब्राउजर एक्सटेंशन, आइस फिशिंग और क्रिप्टो मैलवेयर अटैक्स किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फेक ब्राउजर एक्सटेंशन से। फेक ब्राउजर एक्सटेंशन इंटरनेट यूजर्स के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक्सटेंशन मैलिशियस प्लगइन्स होते हैं जिन्हें आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और लॉगिन जानकारी सहित प्राइवेट डेटा चोरी करने के लिए बनाया जाता है। जब मैलिशियस प्लगइन्स आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल होते हैं, तब आपको ऐसे विज्ञापन दिखने शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होते हैं। इन विज्ञापनों पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल इस मैलवेयर से संक्रमित हो जाता है और आपको नकली वेबसाइटों पर भेज दिया जाता है। देखा जाए तो अधिकांश समय इन फेक वेबसाइटों या फिशिंग ईमेल का उपयोग नकली ब्राउजर एक्सटेंशन फैलाने के लिए किया जाता है। अगर आप नकली ब्राउजर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हो तो उसे निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो सकता है। ये एक्सटेंशन विशेष रूप से फिशिंग साइटों के रूप में कार्य करते हैं जिनमें आपके डेटा को टारगेट किया जाता है, जिनमें अधिकांश रूप से प्राइवेट कीज, मेमोनिक फ्रेजेस और की स्टोर फाइलें भी शामिल होती है। आइस फिशिंग अटैक में अटैकर आपको ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से अटैकर सीधे आपके टोकन पर कब्जा कर सकता है। इस अटैक में आपको एक फॉल्स ट्रांजैक्शन ईमेल किया जाता है जो एक रिलायबल सोर्स से आया हुआ प्रतीत होता है। फिर आपको अपनी प्राइवेट कीज का उपयोग करके ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है। क्रिप्टो मैलवेयर अटैक। अगर आप क्रिप्टो मैलवेयर अटैक के शिकार होते हैं तो आपको क्रिप्टो फिर से पाने के लिए फिरौती देनी पड़ सकती है, जो आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्रिप्टो मैलवेयर अटैक को फिशिंग ईमेल, फेक वेबसाइटें और फर्जी ब्राउजर एक्सटेंशन के माध्यम से फैलाया जाता है। ये मैलवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको आपके फाइलों को इंक्रिप्ट करना शुरू कर देता है, और जब ये फाइलें इंक्रिप्ट हो जाती है तब अटैकर आपसे उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। ये फिरौती भरा मैसेज आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अगर आप इन सारे फिशिंग अटैक से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर न करें। किसी भी ब्राउजर प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले उस प्लगइन के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और हाँ, अपने कंप्यूटर या मोबाइल का एंटीवायरस जरूर अपडेट करें। अगर आप इन छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे तो आप इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। इंटरनेट के तेजी से हो रहे विकास ने डिजिटल एज की कुछ सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स को जन्म दिया है, जैसे कि नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स। भारत में भी नॉन फंजिबल टोकन्स में रुचि बढ़ रही है। एनएफटी के लिए प्रमुख बाजारों और एप्लीकेशंस में गेमिंग, कलेक्टिबल्स, फाइनेंशियलाइजेशन और सोशल नेटवर्क्स शामिल हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने एनएफटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के कारण आर्थिक विकास की संभावना ज्यादा है। दुनिया भर में मेटावर्स की बढ़ती मांग के साथ कई बिजनेस ओनर्स इंडिया में मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनियों की सहायता से अपनी परियोजनाओं को मेटावर्स टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं। बढ़ती डोमेस्टिक मार्केट्स, डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम और ह्यूज स्किल पूल के कारण अलग अलग बिजनेसेस इंडियन कंपनीज के साथ काम करना चुन रहे हैं, जिनकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में मेटावर्स का भविष्य उज्जवल है। इंडिया में बॉलीवुड, स्पोर्ट्स से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स और आम लोग एनएफटी ट्रेंड को अपना रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम ही सबसे बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन ने नवंबर 2021 में अपने पिता की कविता मधुशाला को एनएफटी का रूप दिया था। उसके बाद सलमान खान, रजनीकांत, कमल हासन, मनीष मल्होत्रा और सनी लियोनी ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। फिल्मों के मामले में अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड, दक्षिण सुपरस्टार यश की KGF 2, प्रभास स्टारर राधेश्याम और अन्य कई फिल्मों के सीन्स, पोस्टर्स और लिमिटेड कलेक्शन एनएफटी फैंस के लिए जारी की जा चुकी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनएफटी का फीवर देखने को मिला है। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी के अलावा कई अन्य स्टार्स भी एनएफटी को अपना चुके हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु पुलिस ने अपने आउटस्टैंडिंग टीम मेंबर्स को सोल बाउंड टोकन्स यानी एनएफटी के फॉर्म में डिजिटल मेडल्स जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टाग्राम पर एनएफटीज लॉन्च, रेडिट की अवतार एनएफटीज, टाइम का एनएफटी में पहला फुल मैगजीन इशू शामिल है। एनएफटी का जिक्र हो और मेटावर्स का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेटावर्स को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्रीज ने भी अपनाया है। मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया अब लोगों के लिए बेहद खास बनती जा रही है। इसमें शॉपिंग, गेमिंग, कॉन्सर्ट अटेंड करना, एजीएम रखने से लेकर ट्रेलर रिलीज और टूरिज्म तक कई चीजें मौजूद हैं। यहाँ तक इंडिया में एशिया के पहले मेटावर्स वेडिंग तक को किया जा चुका है। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मेटावर्स के ट्रेंड को जोर शोर से अपनाया है। श्रीमारू डिसेंट्रलैंड मेटावर्स पर सिनेमा ओपन करने वाला है। वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट ने फर्स्ट वर्चुअल प्लॉट पूजावर्स को अपने नाम किया है और पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी भी मेटावर्स में बल्ले बल्ले लैंड के मालिक बन चुके हैं। दूसरी तरफ प्रभास की राधेश्याम से लेकर यश की KGF 2, अजय देवगन की रुद्रा से लेकर अमिताभ बच्चन की झुंड और कमल हासन की विक्रम तक कई फिल्मों ने मेटावर्स में एंट्री कर ली है। इसे एक कदम आगे ले जाते हुए पूजा एंटरटेनमेंट की अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां मेटावर्स में रिलीज की जाने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तनिष्क
और मेक माई ट्रिप जैसी इंडियन कंपनीज ने मेटावर्स स्पेस में एंट्री की है और डिजिटल फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। डिजिटल दुनिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए मार्केटिंग टूल के रूप में मेटावर्स रिलेटेड टूल्स और NFTs इस्तेमाल करने वाली कंपनियां कई सेक्टर्स में फैली हुई हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस की AGM को मेटावर्स में होस्ट किया गया था। वहीं शहरों के मामले में तमिलनाडु अब मेटावर्स हब बनने जा रहा है और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टर्मिनल 2 को मेटावर्स में लाने से लेकर कर्नाटका में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार द्वारा मेटावर्स में मौजूद थीम पार्क का ब्लूप्रिंट भी शेयर कर दिया गया है। इंडिया में अधिकांश मिलेनियल्स और जेन ज़ी ने मेटावर्स और NFT के बारे में अपनी रुचि दिखाई है। इंडिया पहले से ही गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है। हाल में कड़े रेगुलेशन के बावजूद मार्केट वेंचर्स के लिए ओपन है। मेटावर्स में हो रहे इस क्रांति का सभी इंडस्ट्री प्लेयर्स अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Shikha Singh, and in today's special segment, I am going to tell you about an extraordinary story of a man and his electronic chip. We have all heard of the film Ravan, which is one of the most expensive films ever made. What if I told you that there is a real-life counterpart to Shah Rukh Khan's character G1 in the film? Yes, you heard that right. A Swiss IT professional called F418, whose real identity is not yet revealed, surgically implanted a lightning-enabled chip into his left hand to make lightning network payments. It's worth noting that F418's NFC implant into a human is one of its kind. F418 has made the entire process open source and accessible, including health warnings on GitHub. He has called the process Lightning Paw. Now the question is, what exactly is the lightning network payment? Why did he implant the chip in his hand? Did implanting the chip in his hand work for him? Did it hurt while the chip was implanted? Is the procedure medically safe? We will of course get to know all of these things, but in the meanwhile, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more updates. Well, Lightning Network is a second layer payment protocol that operates on the top of Bitcoin blockchain. It allows for near instant and near free transactions by enabling users to make multiple payments without having to wait for the transactions to be confirmed on the blockchain. Most importantly, the Lightning Network creates a network of payment channels between users, allowing them to transact directly without the need for each transaction to be recorded on the blockchain. Users use a smartphone or a Bolt card to transact on payment channels. But unlike other users, F418 went above and beyond by surgically implanting a lightning-enabled chip in his hand. F418 stated that he experimented with the body modification and lightning network payments for entertainment purposes. He does not recommend that Bitcoin enthusiasts take control of the Layer 2 payments network, or LN, as he did, he said in an interview with Cointelegraph. F418 loftily declared that while most of the people carry cards, it's his hand that has the wow factor. However, his attempts to pay failed as the first implant F418 used was defective. Undeterred, he visited a medical professional to surgically remove the implant before trying again. The second attempt succeeded. The chip sits neatly in his left hand and can now make LN payments without reaching for a Bolt card or a smartphone. F418 added that the chip does not hurt at all even if he goes to the gym. While the process is medically safe, the only problem with the implant is that you cannot make them entirely safe.
It's not the same security as the Bolt card. You can only do LN URL withdrawals. It's not safe. Plus, if you make a mistake during the implantation process, it's not a good idea to take the chip in and out of the body, as it could cause harm or infection, F418 explained. So it's best to get it right the first time. To make a payment, he simply places a hand near a compatible NFC reader. Now, if someone asks you for a payment in cryptocurrency, you don't need your smartphone or your Bolt card. You can simply tell them, "Talk to my hand." Well, that's it in today's special segment. This is Shikha Singh signing off. We will meet again with more exciting updates from Cryptoverse. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get instant updates. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया धीरे धीरे नहीं बल्कि काफी तेजी से हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है और इसमें ब्लॉकचेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, एसेट को ट्रैक करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक इम्यूटेबल लेजर की तरह है, यानी एक डेटाबेस जिसमें कोई अनधिकृत छेड़छाड़ संभव नहीं होती। और इन्हीं बातों का प्रयास ब्लॉकचेन के जरिए हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम में शेयर लेजर पूरी जानकारी का डेटाबेस है। इस डेटाबेस को डॉक्टर, मरीज और पेशेंट हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सभी संबंधित लोग देख सकते हैं। ब्लॉकचेन को एक नए ब्लॉक के रूप में अपडेट किया जाता है। इसमें सभी पक्षों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का जॉइंट ओनर और कंट्रीब्यूटर माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि EMR को ही ले सकते हैं। ब्लॉकचेन पर EMR को पेशेंट का इलाज कर रहे डॉक्टर अपडेट कर सकते हैं। वहीं पेशेंट भी अपनी मेडिकल जांच की रिपोर्ट EMR में अपडेट कर सकते हैं, जिसे उनके साथ साथ डॉक्टर भी देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मौजूद ये इम्यूटेबल लेजर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हर तरह से फायदा पहुंचा रहा है। मेडिकल स्कूल की डिग्री हासिल करनी हो, क्लिनिक की जमीन इत्यादि संबंधी जानकारी हो या फिर किसी क्लिनिकल ट्रायल संबंधी कोई रिकॉर्ड, सब अब ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रखा जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरतों में फिट बैठते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा सकता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन एक सही टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में बड़ी आसानी से भरोसेमंद डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लॉकचेन आम लोगों में हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर विश्वास स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद डेटा का साइज और नेचर थोड़ी बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। ब्लॉकचेन पर बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के दौरान HIPAA और GDPR जैसे कंप्लायंस की जरूरत पेचीदगी को बढ़ाती है, लेकिन कुछ कंपनियां और संस्थान इसे आसान करने में जुट गए हैं। हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हेडरा कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैशग्राफ का इस्तेमाल करती है। वही डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म सेफमेयो क्लिनिक कोविड-19 टेस्ट और हेल्थ सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ने वाले टेक्नोलॉजी के जमाने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रिसीवर के बीच अब सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है और वो दिन दूर नहीं जब ब्लॉकचेन भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को और अधिक आसान, तेज और फायदेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और दिलचस्प स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV।
किसी फेमस NFT पर बेस्ड रेस्टोरेंट खोलना, उसके कैरेक्टर पर बेस्ड म्यूजिक वीडियो रिलीज करना या उस NFT पर बेस्ड मर्चेंडाइज सेल करना। इस तरह के राइट्स अक्सर आपको NFTs के साथ मिलते हैं। भले ही हर NFT IP राइट्स ना दें, लेकिन लाइसेंस हर NFT के साथ आता है और अब वक्त के साथ साथ इनमें भी हम वेरिएशंस देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं CC0 क्या है? नहीं, मैं किसी डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रही, बल्कि ये भी एक टाइप ऑफ लाइसेंस है फॉर NFTs, जो NFT मार्केट को बदल कर रख देगा। कम से कम फिलहाल तो यही उम्मीद की जा रही है। क्यों और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों NFT प्रोजेक्ट्स तेजी से CC0 फ्रेमवर्क ऑफ लाइसेंस को अपना रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कोई राइट्स रिजर्व नहीं होते। क्या क्या क्या? आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था ना, कि कहां तो BAYC ने अपने स्ट्रिक्ट IP राइट्स के चलते लोगों को कोर्ट तक घसीटा है, तो कहीं कॉपीराइट ओनरशिप पर लीगल फाइट चल रही है और यहाँ लाइसेंस की बात हो रही है और वो भी विद नो राइट्स रिजर्व्ड। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका फायदा क्या है? चलिए और ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और आपको डिटेल में बताते हैं CC0 के बारे में। CC0 मतलब क्रिएटिव कॉमन्स जीरो, जहां जीरो डिनोट करता है उस प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर नो राइट्स रिजर्व्ड। ये ऐसा कॉपीराइट है जिसके तहत क्रिएटर्स अपने वर्क पर किसी भी तरह की लीगल इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं और उसे इंस्टेंटली पब्लिक डोमेन में प्लेस कर सकते हैं। इस तरह के लाइसेंस में ओनर्स अपने NFT के आर्ट को मार्केट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे नया ब्रांड तैयार कर सकते हैं और भी बहुत कुछ मुमकिन है। इनफैक्ट हैरानी की बात तो ये है कि CC0 लाइसेंस के अंडर जरूरी नहीं है कि आप किसी कलेक्शन में से किसी NFT को ओन करें। कोई भी किसी भी कलेक्शन में से किसी भी NFT को इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि अपनी कंपनी के लोगो के तौर पर भी। Isn't that amazing? वो पहला प्रोजेक्ट जिसने इस लाइसेंस का इस्तेमाल किया और इसे बड़ा हिट बनाया वो है नाउन्स। इस प्रोजेक्ट का एम था पहले कम्युनिटी बिल्ड की जाए, फिर डाओ और फिर नाउन कैरेक्टर्स यूज करके नए डेरिवेटिव्स क्रिएट किए जा सके, और हुआ भी ऐसा। नाउन प्रोजेक्ट ने सनग्लासेस कलेक्शन लॉन्च की, फिर लिटिल नाउन्स NFT कलेक्शन और फिर इनिशिएटिव्स भी। नाउन्स प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर मूनबर्ड्स ने भी अपनी राह बदल ली। मूनबर्ड्स ने भले ही रेगुलर लाइसेंस के साथ शुरुआत की हो, लेकिन अगस्त 2022 में मूनबर्ड्स भी CC0 पर शिफ्ट हो गए। सिर्फ मूनबर्ड्स ही नहीं, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो CC0 को अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताते हैं आपको इन टॉप कलेक्शंस के बारे में। नाउन्स, लिल नाउन्स, MFers, गॉब्लिन टाउन WTF, क्रिप्टोड्स, एक्स कॉपी आर्ट, क्रिप्टो डिग बट्स, लूट प्रोजेक्ट, मूनबर्ड्स, ऑडिटीज _XYZ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस तरह के लाइसेंस का फायदा क्या है, क्यों उसे बड़े बड़े NFT प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं जहां कोई राइट्स रिजर्व नहीं है, कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए आपकी ये उलझन भी दूर कर देते हैं। दरअसल इस तरह के लाइसेंस को अपनाने के पीछे सोच होती है उस प्रोजेक्ट को एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाना जो इसमें वैल्यू ऐड करे। फिर डेरिवेटिव्स कलेक्शन के जरिए ओरिजिनल आर्ट से जुड़े मर्चेंडाइज ऐड करके और लगातार बढ़ती कम्युनिटी की मदद से इंटरैक्शन अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जिससे फिर कलेक्शन में सबका इंटरेस्ट बढ़ता है। जाहिर सी बात है, इससे क्रिएटर्स और NFT होल्डर्स दोनों को फायदा पहुंचता है। यही वजह है कि एक्चुअली अपनी कलेक्शन के राइट्स देने से क्रिएटर्स और होल्डर्स को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, क्रिएटर्स या DAO को फिर भी सेकेंडरी मार्केट में रॉयल्टीज मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, डेरिवेटिव्स क्रिएशन से ओरिजिनल कलेक्शन को और ज्यादा अटेंशन मिलती है। पॉइंट नंबर 3, डेरिवेटिव्स अक्सर ओरिजिनल कलेक्शन होल्डर्स को एयर ड्रॉप देते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटर्स या DAO नए प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं जिससे उनकी कलेक्शन की पॉपुलैरिटी और बढ़े और इस तरह से नए प्रोजेक्ट और ओरिजिनल प्रोजेक्ट दोनों को फायदा होता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 10 नॉन CC0 NFT कलेक्शन की टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के महज 8% के बराबर है टॉप CC0 NFT कलेक्शन की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। बावजूद इसके पिछले 30 दिनों में टॉप नॉन CC0 कलेक्शन की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 30% के बराबर है टॉप CC0 लाइसेंस कलेक्शन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वक्त के साथ बहुत सी कलेक्शन अब CC0 लाइसेंसिंग मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं। चलिए CC0 लाइसेंस के कुछ सक्सेसफुल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं।
आइकॉनिक NFT क्रिएटर एक्स कॉपी ने अपने आर्ट सेव एज राइट गाय को जैन 2021 को CC0 लाइसेंस के अंदर शामिल किया। इस CC0 लाइसेंस की बदौलत ऑलरेडी इस आर्ट से जुड़े बहुत से डेरिवेटिव्स शुरू हो गए हैं। CC0 लाइसेंस की अनाउंसमेंट के बाद मून बर्ड के डेरिवेटिव्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। इन्हीं में से एक है मॉर्न बर्ड, जहां क्रिएटर ने स्पेशली ये कहा कि कलेक्शन सिर्फ लाइसेंस की बदौलत मुमकिन हो पाई। अब इतना तो तय है कि ये CC0 लाइसेंस कोई ट्रेंड नहीं है जो वक्त के साथ फेड हो जाएगा, खास तौर पर नाउन कलेक्शन की जबरदस्त सक्सेस को विटनेस करने के बाद। और जिस तरह मूनबर्ड्स डाओ की तरफ बढ़ा और अपने लोगो या ब्रांड यूज को इंसेंटिवाइज किया, इस तरह से अपनी कलेक्शन की कॉपीराइट को रिलीज करके उसे डाओ के अंदर NFT होल्डर्स के साथ शेयर करना इन्वेस्टर्स के लिए काफी दिलचस्प है, जिससे किसी कलेक्शन के हिस्से को ओन करके उस ब्रांड के हिस्से को ओन किया जा सकता है। अब इससे अच्छा भला और क्या होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मेरे यानी रुचि के वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही 3.0 TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। हैव अ ग्रेट डे। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. India's regulator of banks, the RBI, has launched trials of its retail central bank digital currency or digital rupee in 4 major cities. The RBI has shortlisted 4 banks, SBI, ICICI, Yes Bank and IDFC for the pilot, and these banks have chosen some individuals and some merchants who are account holders for this. Many of us are wondering that why RBI has taken this step, why did RBI launch digital rupee and how will it function, its importance and its difference with cryptocurrency. To get a better understanding of this, we have invited Mr. Sudeep Bandyopadhyay of IndiTrade. Welcome to 3.0 TV, sir. Thank you for having me here. It's a pleasure to be with you guys and talk about this interesting topic. Please explain us in detail the importance of CBDC and what led RBI to launch CBDC pilot project in India, its importance and likely benefits from this new age technology which can disrupt our usual way of paper currency deals. The initiative taken by RBI to launch CBDC is unique and one of the most interesting developments in the financial markets in the recent past. We have been flooded with crypto exchanges, cryptocurrencies. However, the reliability and the bankability of cryptocurrency was always under big question mark. I think Indian Central Bank has stepped in that territory. A digital currency launched by a central bank will obviate, will take care of the concerns around credibility and reliability of the digital currency. So this central bank digital currency will have the same weightage, same credibility as currency notes have, without the additional hassle of physically handling currency notes and physically carrying currency notes. It benefits both the issuer, which is the central bank, and the user. The cost of issuance from a central bank's point of view comes down significantly, and for individuals, I think this is a completely hassle-free digital transaction which is akin to using cash. And the traceability, the biggest benefit in some way for cash is that it is not directly traced, directly linked. And some individuals for some transactions prefer that. Now digital currency will provide that anonymity will be provided by the digital currency.
CBDC places question mark on existence of banks, cryptocurrency and UPI, similarly on other technology-driven activity. So, sir, how do you think the CBDC can change scenario of financial transaction, and will it pose a threat to UPI? The biggest and most interesting aspect of CBDC is that we did not work with a bank or use a particular platform for linking. So in case of UPI, you are tied down to a particular system for using UPI, whether it's the particular system introduced by the government or some of the private players. You don't have to worry about any particular system in case of CBDC. CBDC is issued by central bank, and multiple bank platforms will be able to support that. As of now, RBI has allowed 4 large banks, including SBI and ICICI Bank, for this CBDC purposes. Going forward, we believe most banks will be brought under the net, and it will be a seamless transaction experience for the individuals and the users. It will be in that manner different from UPI, where you are still tied down to a particular system or a particular operator. Here it will be completely fungible, just like currency notes are. Central banks all over the world are thinking about launching pilots, but we must congratulate RBI to have gone off with the first CBDC, and I'm pretty confident that this will have a strong use case, and central banks all over the world will start following the example set by RBI. As far as the disadvantages of CBDC is concerned, we would go back to pretty much the same old argument of cash versus bank transaction. In case of cash, traceability becomes difficult. In case of cash, the handling becomes an issue. Whereas the handling part is being taken care of, the traceability challenges still remain, which in a way provides the benefit to the user of remaining anonymous while using the CBDC. On the other hand, from the regulatory point of view and from many other transaction tracking perspective, this CBDC will not be traceable to the extent bank transactions are. However, we believe that there is place for CBDC as well as bank transactions as well as currency. We believe in an ideal scenario, in a future world, all three, cash, CBDC as well as bank transfers, will coexist and make transaction experience more robust for individuals and corporations. All right, so thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you. Coexistence of banks, UPI and CBDC as well as seamless operations of India's financial process is what Mr. Sudeep Bandyopadhyay believes in. Ending on that optimistic outlook, this is me, Vishakha Thakur, signing off for now. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel, and for instant updates, do press the bell icon. Cryptocurrency bear markets can be brutal for new investors without sufficient experience. The swings are typically a lot more violent compared to traditional stock markets. And it is not unheard of some coins to lose 90% or more from their all-time high values. Not having sufficient knowledge or experiencing a cryptocurrency bear market for the first time can have investors commit many mistakes. With this in mind, learning from people who have been around in previous cycles as well as identifying these mistakes in advance could save both money and emotional hurdles.
Hello and welcome to 3.0 TV. I'm your host Ruchi Sharma, and today we are going to explore the mistakes that traders and investors make during a cryptocurrency bear market and how to avoid them. But before moving ahead, like and share our videos, subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon to get instant updates. Okay, let's get started. The first mistake is panic selling. Panic is universally bad. This is because when we panic, we experience an intense sensation of both fear and anxiety, and it usually comes as a response to an existing danger. When this happens, we tend to be more prone to losing control and making reactionary decisions that are devoid of common sense and logic. In the realm of trading and investing, panic selling refers to the action of a widespread sell-off of a cryptocurrency because of fear, rumor, or in general an overreaction instead of a reasoned and carefully planned analysis. Investing in a cryptocurrency is an act that should be based on sound, objective merits rather than emotions. During the times of aggressive sell-offs, many investors panic. This is entirely normal, but also likely to be the most common mistake. Remember, no asset goes up in a straight line. There will be bumps along the journey. So do not sell based on panic, but on sound objective judgment. The second common mistake is called marrying your bags. While you should avoid panic selling, this also does not mean that you should never sell. Realizing that you made a bad investment and casting your ego aside is just as important. Many people get married to their bags, meaning that they form an emotional attachment to the investment and foregoing reason and logic when the narrative behind it fails. This is something that happened to many people back in 2017 and 2018 when the ICO boom was peaking. Many investors got in early, made serious returns, but failed to realize them in chase of even higher ROI. Later on, when their cryptocurrency started crashing, they did not sell because they were convinced of their recovery. The fact of the matter is that many of the altcoins that have lost over 90% of their value since the all-time high are unlikely to revisit these levels. Do not be afraid to cut your losses and move on. The third common mistake is overtrading. This has a lot to do with mishandling emotions too. Overtrading is frequently the consequence of a few things: regret of misreading of investment thesis, missing an opportunity, the strong desire to recoup previous losses, and so forth. The one thing all of the above have in common is that they prompt emotion-based decision making. Remember, the market does not care for your emotions. The charts are nothing but a visual representation of information, and it is up to you how you will interpret this information. In all cases, though, this is a process based on nothing but objectivity, one where emotions have no room to thrive. This is also the fact that you pay additional trading fees when jumping in and out of trades. And if you're not managing this properly, they can add up pretty quickly. So be cautious and do not overtrade. The fourth common mistake is trying to time the bottom. Trying to time the bottom is another prevalent mistake that newcomers tend to make. It's a tale as old as time. BTC still has room to go down. I'll buy then. And then one of the two things happen. One, Bitcoin does go down, but they never buy, thinking once again that it has more room to drop. Number two, Bitcoin never goes down and they do not buy thinking that one last leg down will eventually come. But consider this. Imagine Bitcoin trading at $10,000 and you think it will go down to $8,000 in another 20% crash. You don't buy. And then Bitcoin goes on a parabolic bull run, hitting $100,000. Now ask yourself, were those 20% worth it? During the COVID crash in March 2020, when BTC dropped below $4,000, many people thought that the worst was yet to come as the world was on a brink of an economic disaster in the face of global lockdowns and a looming pandemic. But that never happened. Instead, BTC went on a rampant bull run where it topped $69,000 a year later.
The point is, nobody knows where the market will go. It is all just educated and informed guesses. Therefore, if you're not a professional trader, one of the best strategies you can use is the dollar cost average. If you DCA on the way down, that's even better. The idea is that you take the amount of money you want to invest and you break it down into smaller batches that you invest on a regular basis. For example, once every 2 weeks or once a month. This will get an average price between all the entries and will minimize the risk. The fifth common mistake is not paying attention to mental health. From all of the above, one thing should be crystal clear: your mental health is paramount. No amount of money is worth sacrificing your well-being. Now that cryptocurrencies have somewhat entered mainstream mediums of investment, it's important to bring this up as more and more people get into trading and investing in crypto. Pay attention to your mental health. Do not neglect it. During bear markets, prices tend to go down to the extremes, and it's commonplace for people to see their paper gains diminish. If that's the case, don't forget that there's life outside of crypto. It surely stings to lose life-changing money, but remember, there's no amount that's worth your health. So far, we have covered 5 common mistakes people tend to make during a bear market. But I want to make one thing absolutely clear: none of what I said before is financial or investment advice. For that, consult your financial advisor. The purpose of this episode is solely to entertain and educate. Investing in cryptocurrencies carries a high risk of capital loss. You can lose everything you invested. Therefore, never put in more money than you are willing to and can afford to lose. This is your host Ruchi Sharma signing off. We will meet again with more intriguing and educational content from the world of cryptocurrencies. Till then, keep watching 3.0 TV. Do not forget to like, share our videos and subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. Have a great day. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.0 टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और यदि बहुत लालच आ जाए तो फिर क्या पुरुष और क्या महिला। आज मैं आपको मुंबई के एक श्री 420 नहीं बल्कि श्रीमती 420 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने चीनी माफिया के साथ मिलकर 100-200 नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। मुंबई में रहने वाली 29 वर्षीय आरोपी महिला ज्योत्सना चतुर्वेदी, उसके द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का खुलासा शायद कभी होता ही नहीं अगर एक कॉलेज की 66 वर्षीय महिला प्रोफेसर अपने साथ हुए 36 लाख रुपए के स्कैम के बारे में साइबर क्राइम पुलिस के पास शिकायत न करती। एक दिन हुआ यूं कि इन बुजुर्ग प्रोफेसर को एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करने वाली महिला ने अपना नाम निकिता बताया। निकिता ने बताया कि investify.com कंपनी के जिस फंड में प्रोफेसर मैडम ने निवेश किया था, वो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से डूब चुका है। थोड़ी देर बाद शिव नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि यदि मैडम $5000 और निवेश करे तो उनके डूबे हुए पैसे रिकवर भी किए जा सकते हैं। साइबर पुलिस के लिए यह पूरा मामला उम्मीद से भी ज्यादा जालसाजी से भरा हुआ था। मामले की गहराई से छानबीन करने पर साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि इस कंपनी ने रवांडा के बैंक ऑफ किगाली में 14.52 लाख रुपए, कनाडा स्थित नुआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से 10 लाख रुपीस और 9.86 लाख रुपीस मुंबई के एक फर्म ल्यूना द सॉल्यूशन को ट्रांसफर किए गए थे। साइबर क्राइम पुलिस के लिए फॉरेन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना तो मुश्किल था, लेकिन एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने खोज निकाली कि एक संदिग्ध महिला मुंबई से ही इस कंपनी के अकाउंट की कमान संभाल रही है। लेकिन इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस तो फर्जी था ही, यहां तक कि जिस शख्स के नाम पर इस कंपनी का करंट अकाउंट था, उसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। फिर पुलिस ने कंपनी अकाउंट से जुड़े फोन नंबर पर मौजूद पते की और अपना रुख किया तो उनकी नजर खार के लिंक रोड पर रहने वाली 29 वर्षीय ज्योत्सना चतुर्वेदी पर पड़ी।
पुलिस जांच में पता चला कि ज्योत्सना एक चीनी गिरोह का हिस्सा थी, जिसमें 2 प्राइवेट बैंक्स के अधिकारी भी शामिल थे। फिर क्या था? पुलिस को इन सब लोगों को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगी। पुलिस ने investify.com से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। निवेशकों को शुरुआती कॉल में +44 कोड आता था, जिस वजह से उन्हें लंदन से फोन आने की गलतफहमी होती थी। लेकिन साइबर पुलिस को शक है कि इस धोखाधड़ी को लंदन नहीं बल्कि चीन से नियंत्रित किया जा रहा था, क्योंकि कई बिटकॉइन स्कैम्स के तार चीनी माफिया से जुड़े हुए पाए गए हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मुंबई की इस कांड की मुख्य आरोपी ज्योत्सना चतुर्वेदी भी बिटकॉइन स्कैम को संचालित करने वाली चीनी मास्टरमाइंड के सीधे संपर्क में थी। तो दोस्तों, आए दिन होने वाली साइबर क्राइम की ये घटनाएं यही दर्शाती है कि कभी भी निवेश करने से पहले हम प्राथमिक रूप से सभी तरह की संभव जांच पड़ताल जरूर करें। हो सके तो निवेश करने से पहले किसी जाने पहचाने वित्तीय सलाहकार की सलाह भी जरूर लें। सतर्क रहने के साथ साथ अपना ख्याल रखें और ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. साल 2022 क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर रहा, जहां क्रिप्टो प्राइसेस ही नहीं बल्कि NFT सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बुरी तरह गिरते हुए देखी हमने। लेकिन इस बुरे वक्त की दौर में भी एक ऐसा सेक्टर है जिसने ना सिर्फ तरक्की करी बल्कि खूब चमका, और वो है गेमिंग सेक्टर। तो क्या है इसके पीछे की वजह, और इससे जुड़े बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LYNC के को फाउंडर और NFT कलेक्शन इत्सुकी के फॉरेस्ट एल्डर विश्वास भूषण। Welcome to 3.0 TV, Vishwas. Thank you so much for inviting me over here. Yes, विश्वास, जैसे कि हमने बात कही कि 2022 जो साल था वो एक्चुअली क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा था। हमने टेरा लूना कोलैप्स देखा, हमने देखा बहुत सी जो कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट हो गई। साल खत्म होते होते भी हमने FTX कोलैप्स देखा। तो इन सब का एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पूरी जो है इंडस्ट्री पर पड़ा। कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ हर सेक्टर, लेकिन सिर्फ गेमिंग सेक्टर जो है वो अनअफेक्टेड रहा। आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गेमिंग सेक्टर अभी Web3 में अभी भी बहुत ज्यादा अर्ली है। क्योंकि अब अगर आप देखो तो हाउ मेनी गुड गेम्स आर एक्चुअली अवेलेबल, कितने जो Web3 बिग हिट गेम्स हैं वो आपने एक्सपीरियंस करा है 2022 में। 2022 में हमने Web3 गेम्स, प्ले टू अर्न, गेमिंग गिल्ड्स के बारे में सुना, राइट, एंड उसमें अभी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हमने देखा एरा ऑफ JPEG, हमने देखा एरा ऑफ PFP, हमने देखा कि कैसे NFTs मतलब पीपल कैन एक्चुअली बाय NFT, एंड फिर उसका मेटावर्स का कनेक्शंस। बट एट द सेम टाइम हमने अभी भी ट्रू डिजिटल ओनरशिप नहीं देखा है, हमने NFT एज इन गेम एसेट्स नहीं एक्सपीरियंस करा है। सो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू बिल्ड, एवरीवन इज लाइक इनटू गेमिंग, एंड इस सेक्टर में लाइक अभी भी लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज अभी भी ये बहुत अर्ली फेज में है। तो विश्वास, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम अर्ली फेज में हैं और इंडिया में आप इस सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम खास तौर पर अगर आपकी कलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी जो कलेक्शन है इत्सुकी वो 12 घंटे में सोल्ड आउट हो गई। एंड आई थिंक अपने आप में ये इकलौती ऐसी कलेक्शन थी इंडिया की जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा एक नेक कॉज भी है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम रियल वर्ल्ड और NFT को कनेक्ट कर देते हैं, and that's how Itsuki came into the picture. So Itsuki का अब cause ये है कि on transactions we are actually planting tree
अभी तक हमने 2000 ट्रीज प्लांट कर दिया है, उत्तराखंड में हमने प्लांट Amazing. करा है। सो वी हैव कोलैबोरेटेड विद संकल्प तारू लाइक इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर हेल्पिंग अस, एंड ये सारे ट्रीज ट्रैकेबल हैं एंड होल्डर्स आर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्लांटेशन। उनको ये परफेक्टली क्लियर है कि अच्छा हमने ये प्लांट करा और ये सर्टिफिकेट ऑफ प्लांटेशन हमें मिल रहा है, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्लांटेशन है वो सोल बाउंड टोकन, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकते तो ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड फिर हम इनसे एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनेटाइजिंग कार्बन क्रेडिट्स एंड एक्सप्लोरिंग गेमफाई। राइट, सो कुछ 6666 की जो कलेक्शन थी और आपने कुछ 2000 ट्रीज लगा दिए और कुछ 4000 और ट्रीज अभी आप लगाएंगे, राइट? सो हमारा ऐसा है कि हम एवरी ट्रांजैक्शन पे लगा रहे हैं। बिफोर जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक के पहले जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसमें हम सारे उतने ट्रांजैक्शन का हम लगाएंगे। सो हमने 2000 अभी लगाया है और टोटल ट्रांजैक्शन उसके पहले 13000 हुए थे। ओके, सो हम 13,000 ट्रीज लगाएंगे एंड 2000 ट्रीज से हम इन फ्यूचर ऑफसेट कर रहे हैं 96,000 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर हम 13,000 ट्रीज की बात करें सो द फिगर इज वेरी ह्यूज एंड उससे फर्क पड़ता है। उतना कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ऑफसेट नहीं हो रहा बट ऑक्सीजन भी जनरेट हो रहा है। राइट, तो यहाँ हमने बात की यूज केसेस की भी हमने थोड़ा सा मेंशन किया, तो विश्वास जो गेमफाई और मेटावर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है गेन कर रहा है क्रिप्टो यूजर्स में, और इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारे प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं जो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़ एंड यूज केसेस लेकर आ रहे हैं। कुछ इस तरह के नए यूज केसेस आप ज़रा बताएंगे, हमें मेंशन करेंगे उनके बारे में जो आजकल बहुत ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं गेमिंग सेक्टर में? कि we haven't experienced or we haven't witnessed one big hit in Web3 game। अब इसका प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सिंपल है कि सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मोबाइल गेमिंग और गेमिंग इंडस्ट्री 2010 में जो था हम उसी फेज में अभी राइट नाउ Web3 गेमिंग। बट डिफरेंस ये है कि तब सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग गेम्स पे फोकस करते थे, गेमिंग इकोनॉमिक्स पे फोकस करते थे, गेमिंग एक्सपीरियंस पे फोकस करते थे, एयर ड्रॉप पे फोकस करते थे, मैकेनिक्स पे फोकस करते थे, न्यू आइडियाज पे फोकस करते थे। अब वो सारी चीजें अभी नहीं एक्सप्लोर हो रही हैं बिकॉज लोग दे आर फॉलोइंग क्विक कैश, उनको क्विक सक्सेस चाहिए। बट अगर आप मास अडॉप्शन की बात करो तो अभी भी बहुत लोग हैं जो गेम लाइक Web3 गेम डेवलपर लाइक Web3 गेम्स बनाने के लिए रेडी हैं, बट उनको सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिकॉज दे डू नॉट हैव कैपिटल, उनके पास एनफ बड़ी टीम नहीं है बिकॉज एक इंडी गेम डेवलपर्स कैन नॉट अफोर्ड इट। तो विश्वास जो ये गेमफाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही टोकन सेंट्रिक है। सो जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं वो पहले अपने टोकन्स इशू कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, उसके बाद वो कोई ना कोई गेम बिल्ड करने की अनाउंसमेंट करते हैं। तो ऐसे में जो गेम्स हैं वो बेसिकली एक जरिया है टोकन्स को एक पुश देने का। तो ऐसे में टोकन्स कम फर्स्ट एंड गेम्स कम सेकंड। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? I think like so this is like one of my major issue why we started working on Link as well. Right. So Link is a GameFi infrastructure which simplifies blockchain gaming for everyone. But the point is कि आप एक basic example ले लो, let's say PUBG और Fortnite। कभी आपने ये सुना है कि Fortnite ने आपसे 2000 रुपए पहले मांगे गेम खेलने के लिए? नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने GTA खेलने के लिए 2000 रुपए दिए या फिर 3000 रुपए दिए, बट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर गेम। अब गेम के अंदर भी यू हैव टू पे एन अमाउंट विच यू डू नॉट ओन, समझ रहे हो? सो आई थिंक लाइक राइट नाउ मेजर फोकस ये होना चाहिए कि लोग गेमिंग एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करें। टोकन्स, नो डाउट कि टोकन्स इंपॉर्टेंट है, बट one should not hamper the gaming experience। आप ये सोचो ना कि आप सिर्फ इन गेम मार्केट, इन गेम एसेट का मार्केट साइज में बताऊं अगर आपको, सो दैट इज $54 बिलियन एंड ये आंकड़ा मैं मतलब 2021 का बता रहा हूँ आपको। राइट। एंड जो टोटल गेमिंग मार्केट है दैट इज मोर देन $250 बिलियन। राइट। अब ये $250 बिलियन में सिर्फ $54 बिलियन आपको इन गेम एसेट्स का है,
and we do not even own these in-game assets. Yes. क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे नहीं है. अगर मान लो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो $1,000-2,000 पर मंथ स्पेंड करते हैं गेम एसेट्स में. दे बाय दीज एसेट्स. बट अगर मान लो कि उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, दे फॉरगॉट देयर पासवर्ड और वो गेम ही बैन हो गया उनके कंट्री में, दे कैन नॉट यूज इट एक्चुअली. सो ये जो टोकन वाला पार्ट है कि यू हैव टू होल्ड एन एनएफटी टू प्ले द गेम, it should be more about like play the game on the rewards and get the NFT, upgrade the NFT. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान आता है, वो गेम खेलता है, उसको स्टिकीनेस लगता है, वो गेम और खेलता है, एंड ही कंप्लीट मल्टीपल माइलस्टोन्स एंड लेवल्स, देन ही गेट द पॉइंट्स व्हिच कैन बी टर्न इनटू अ टोकन. तो जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करी, ये बताइए विश्वास कि आपको क्या लगता है किस तरह के एलिमेंट्स या फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी प्लेयर का किसी गेम में इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, और इस वक्त करंट सिचुएशन या करंट टाइम्स में आपको क्या लगता है कौन सी गेम जो है जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है? सो एक तो लाइक Illuvium है. Illuvium is good game in terms of, and they are like doing really great in terms of providing a great gaming experience. उसके बाद अगर आप ये देखोगे कि छोटे छोटे गेम्स जो बहुत बड़े नहीं है, Dogami is really good. Dogami is like they became huge because उनका आइडिया बहुत सही था. Like you can actually own a virtual pet on your phone. So it reminds me of having a virtual pet as a dragon. So क्योंकि मेरे पास, मैं वो गेम खेलता था, and वो बहुत ही addictive है because you are owning a virtual pet and you have to feed it, you have to play with it. So but अगर ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में हो रही है तो और मजेदार है because now I truly own that particular pet. First focus on game. आप गेम्स पे फोकस करो. गेम शुड बी प्रायोरिटी हमेशा. एग्जैक्टली. मैं क्योंकि ये बता रहा हूँ ना, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है. आप YouTube पे 3-4 वीडियो देखोगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दोगे, फिर आप ट्वीट कर दोगे कि आई एम अ ब्लॉकचेन डेवलपर. राइट. बट डिप्लॉइंग अ ऑप्टिमाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी हार्ड. एंड एट द सेम टाइम आप ऑप्टिमाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने से भी कहानी खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है, बिकॉज यू हैव टू ऑडिट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. टोटल अगर नंबर ऑफ गेमर्स अगर देखो in the world, that is 3.4 billion. So 3.4 billion people are playing games. हर दूसरा इंसान दुनिया में गेम खेल रहा है. बट Web3 गेम्स में गेमर्स जो हैं like they are around like 5 million to 10 million and active तो बहुत कम. तो हमें ट्रैक्शन लाने के लिए पहले गेम्स लाने होंगे और उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा. अगर रिक्वायरमेंट है तो पिवट भी मारना पड़ेगा. And then we will gonna find 1 in a million idea, and this 1 in a million idea will gonna help other people to learn and to experiment more and to innovate more. अभी हम innovation phase में नहीं है, to be very honest, Web3 gaming sector में. ठीक है. तो विश्वास, जैसे हमने बात की कि 2022 में क्रिप्टो डाउनफॉल हमने देखा, लेकिन सेम उसी ईयर में जब ये क्रिप्टो डाउनफॉल चल रहा था, Web3 को बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट मिली और उस इन्वेस्टमेंट का 62.5% जो था वो गेम फाई के लिए या ब्लॉकचेन गेमिंग को गया, विच वाज अराउंड $4.5 बिलियन. तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. इस सक्सेस के पीछे क्या की फैक्टर्स या रीजंस आपको लगते हैं? द फ्यूचर ऑफ गेमिंग. मैं अगर ये बताऊं कि पहले जो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ गेम इंडस्ट्री देखोगे तो पहले आर्केड गेम्स थे. Normally people go to the gaming studio, like gaming parks, जहाँ पर वो गेम खेलते थे. फिर वो गेम्स आ गए कंप्यूटर गेम, लाइक आपके कंप्यूटर पर, आपके टीवी पे. फिर उसके बाद और एसेट्स आए, गेम्स आपके चले गए इंटरनेट पे. नाउ पॉइंट इज कि ट्रू डिजिटल एसेट ओनरशिप अभी भी नहीं है, एंड कैश फ्लो अभी भी वन वे में ही हो रहा है. Now blockchain gaming is still very early and it is actually unlocking true digital asset ownership. Also it is unlocking diverse cash flow. So इससे ये होगा, for example gaming industry already बहुत बड़ा है, and gaming industry में अगर आप अभी जितने भी investment हुए हैं, mostly infrastructure के towards like VCs का ज़्यादा inclination है. And that is also very important because एक simplified infrastructure अगर आ गया with a like
either like Link will bring it or either someone else. The whole point is कि बहुत सारे developers already हैं जो game बना रहे हैं एंड वो पुश कर देंगे गेम. तो अभी जो आपको $250+ बिलियन का मार्केट अभी एग्जिस्टिंग गेम इंडस्ट्री का है, दैट विल गोना लाइक बी $1 ट्रिलियन मार्केट, बिकॉज सिर्फ तब गेम नहीं होगा, क्योंकि तब फिर आपके टोकन्स होंगे, आपके इन गेम एसेट्स एज एन एनएफटी होंगे, डायनामिक एनएफटी, सोलबाउंड एनएफटी. इंडिया में क्या फ्यूचर दिखता है इसका? क्योंकि अगर हम सर्वेज देखें तो Web3 इकोसिस्टम के मामले में इंडिया 3rd आता है वर्ल्ड में, और साथ ही अगर P2E गेम्स की बात करें तो उसमें लीड कर रहा है इंडिया. ये भी एक सर्वे के मुताबिक कहा गया था. तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप इंडिया में इसकी कितनी ग्रोथ होगी? आई थिंक लाइक हमारे पास एक अनदर चांस है टू लीड द होल Web3 इकोसिस्टम. हमने Web2 में अपना चांस वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द चांस टू लीड Web2, बट Web3 में हमारे पास चांस है टू लीड दिस स्पेस. Why? Because सिर्फ it's not just about कि हम like we are a country of 1.4 billion people. सिर्फ वो बात है नहीं. बिल्डर्स अगर देखो ना, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हैं उसमें मोस्टली इंडियन ही बिल्डर्स हैं. राइट. like in terms of innovation, in terms of building the stuff, and number of projects भी अगर आप देखो Web3 में, India are actually like leading that particular space. थैंक यू सो मच विश्वास, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें गेमिंग सेक्टर के बारे में इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम भी हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much for inviting. It was really nice talking to you. इस बात में कोई शक नहीं कि गेमिंग सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और आने वाले साल में, आने वाले दिनों में हम इसमें और ज्यादा ग्रोथ होती हुई देखेंगे. इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही. दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. हैव अ ग्रेट डे. ट्रेडिशनल एक्सचेंज पर बिना जाए अपने ट्वीट करने के बारे में है. आपको बता दें कि ऐसा लोन ट्रेडिंग डेस्क और बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के फॉर्म में अवेलेबल है. इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. जनरली OTC ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो सेलर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट का एक वेरिड नेटवर्क मेंटेन करता है. अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की होड़ में OTC ट्रेडर्स लगातार बायर्स और सेलर्स की तलाश में रहते हैं जो अच्छे प्राइसेस पर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो. इसके अलावा OTC ट्रेडर्स लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट से बातचीत करते हैं और अटकलें लगाते हैं. इसीलिए उन्हें दी गई किसी भी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन के बेस्ट टाइम को वो डिटेक्ट करने में कैपेबल होते हैं. एक बार बायर्स और सेलर्स द्वारा ऑर्डर्स प्लेस किए जाने के बाद OTC ट्रेडर रिक्वेस्ट की गई ट्रांजैक्शन को खरीदने की कोशिशों में लग जाते हैं. क्रिप्टो OTC ट्रेडिंग क्या है? ओवर द काउंटर ट्रेडिंग का मतलब उन एजेंसियों या लोगों के जरिए ट्रेड करना है जो आपके लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, जो रेगुलर एक्सचेंजेस से अलग है. साफ लफ्जों में, अगर आप मेन स्ट्रीम सिविली रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के जरिए क्रिप्टो की परचेजिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग करने से बचना चाहते हैं तो समझिए OTC ट्रेडिंग का ऑप्शन आपके लिए ही बना हुआ है, जो प्राइवेसी, हायर ट्रांजैक्शन लिमिट और मार्केट फ्लक्चुएशन से गेट अवे प्रोवाइड करता है. ओवर द काउंटर ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है? OTC ट्रेडिंग के लिए कोई भी मेथड सेट नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है यूजर इंटरफेस की कमी, जो रेगुलर एक्सचेंजेस में भी होती है. ऐसे में ओवर द काउंटर ट्रेड अक्सर भरोसे पर किया जाता है, जहां सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पोस्ट किया जाता है, कोड दिया जाता है, नेगोशिएशंस किए जाते हैं और फिर आखिरकार सभी पार्टिसिपेंट के एग्रीमेंट पर ट्रांजैक्शन को पूरा किया जाता है. इसमें कभी कभी सिर्फ एक शख्स इन्वॉल्व होता है जो थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है
और जब बड़ी रकम की बात आती है तब एक एजेंसी बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाने के लिए वर्कलोड संभाल सकती है। ट्रेडिंग की सुविधा देने वाली ओटीसी एजेंसीज के पास फिएट और दूसरी मेजर क्रिप्टो करेंसीज के मामले में अर्जेंट लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए खुद के रिजर्व्स भी होते हैं। ओटीसी ट्रेडिंग के लिए साइन अप करना इजी होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी है। अब इजी इसलिए क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी ओटीसी एजेंसीज अवेलेबल हैं। लेकिन इसे चैलेंजिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपके ट्रस्ट पर सभी चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसे में अच्छी बात यह है कि कई मेन स्ट्रीम क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक ओटीसी डेस्क ऑफर करते हैं जो आपको बिना डरे बड़े अमाउंट में क्रिप्टो ट्रेड करने की अनुमति देती हैं। ट्रेडिंग के दूसरे फॉर्म से यह अलग कैसे है? ओटीसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के दूसरे फॉर्म्स के बीच मेन डिफरेंस ये है कि इसमें सेलर और बायर के बीच लार्ज वॉल्यूम में फिएट और क्रिप्टो की डायरेक्ट ट्रेडिंग की जाती है। वहीं दूसरे फॉर्म में जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडर और एक्सचेंज के बीच क्रिप्टो करेंसी की मदद से ट्रेड किया जाता है। हालांकि इसमें ट्रेड वॉल्यूम की स्ट्रिक्ट लिमिट्स भी शामिल होती हैं। किसे करनी चाहिए ओटीसी क्रिप्टो ट्रेडिंग? ओटीसी ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल सही है जो लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो ओटीसी ट्रेडिंग डेस्क ऑपरेट करती हैं, वो अक्सर बड़े ट्रेड्स को एक्सचेंज से दूर रखने के लिए ऐसा करती हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती है। ट्रेडिंग डेस्क यूजर्स में हेज फंड्स, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स एंड हाई नेट वर्थ वाले शामिल हैं, जो बड़े अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में सीमलेसली कन्वर्ट करते हैं। ऐसे एक्सचेंज बिटकॉइन। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस भी P2P मार्केटप्लेस ऑफर करती है, जिसे बड़ी आसानी से छोटे ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ओटीसी क्रिप्टो ट्रेडिंग इस्तेमाल करने लायक है? अगर आप क्रिप्टो करेंसी के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फिएट मनी या फिर कैश के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए ओटीसी ट्रेडिंग काफी हद तक सही है। असल में ये ट्रेड का सबसे अच्छा फॉर्म है अगर ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि ये आपका समय और आपका पैसा बचाता है और कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है। होप आप ओटीसी ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। ओटीसी ट्रेडिंग के पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के साथ मैं रुचि शर्मा फिर लौटूंगी पार्ट 2 में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Metaverse Magic, where we bring you major updates from the global metaverse space. To begin with India, here's some good news for metaverse developers. Deloitte's new report, Metaverse, the Hype, Possibilities and Beyond, says that one of the key drivers of economic possibilities within the metaverse will be Web 3.0's ability to spur digital transformation. Experts say the future of metaverse is bright in India as the country has a massive role to play in leading the metaverse revolution. Here's what the founder and CEO of Loka Metaverse, Mr. Krishnan Sundararajan, has to say about it. The future of metaverse is I can sort of subdivide it into two categories.
One is virtual worlds. So we will have companies like Loka, like Fortnite, Roblox, and the rest creating virtual worlds that are highly immersive in nature, where especially Unreal Engine 5 coming in, you will be in a world where you will sort of not be able to differentiate if what you're seeing is real or if it's virtual. It will be hyper realistic virtual worlds. That's one. Second are haptic devices. So when 5 senses of your body get engaged, currently with a VR device 2 senses get engaged, your eyes and your ears. When 5 senses get engaged, being in a hyper realistic world, wearing gadgets that help you sense the environment will help you replace reality in general. And that is what I think is going to be the future of metaverse: hyper realistic worlds, haptic devices to sense those hyper realistic worlds. And we have good news, and that too a big one for the African countries too. Meta is planning to offer the metaverse to Africa through smartphone apps, as it sees a huge business potential there. Meta is spending $50 million in 16 African countries to educate users on VR, AR and XR. VR and AR companies in Africa like Black Rhino and Embassy 3D have created immersive media content ranging from education, environmental conservation to gaming and entertainment. Well, the cost of mobile internet is highest in Africa, while internet speed in the continent is still the slowest in the world. Meta hopes its 2Africa submarine internet cable will help reduce internet costs in Africa. The cost of Meta's VR headsets is too high for an average African family, and Meta is not going to reduce the cost of its VR headsets anytime soon. And now let's move on to next year's big surprises in the auto sector. NVIDIA predicts that 2023 will be the year when many automotive companies will start integrating their operations with the metaverse. The company also believes that the implementation of metaverse tools will allow companies to monitor the whole production process of their vehicles, allowing them to propose improvements. All this will be possible only with the help of digital twins in the factories where these cars are being built. Also, according to a report, the global metaverse in e-commerce market is expected to grow by $85,885.22 million during 2023 to 2027. The fashion and entertainment world too promises more spice to life and beyond. Animoca brand subsidiary Darewise Entertainment has partnered with Skin Waders to launch Square, London's first NFT collection in Life Beyond Metaverse. Life Beyond, developed and published by Darewise Entertainment, is a science fiction multiplayer online role-playing game. It is built to give users a unique off-world experience and true digital ownership over their game assets. The partnership will further elevate Square's cult status for existing brand fans while bringing a new fashion following to the metaverse. Next on the list is Diepius Metaverse, that is all set to offer more to individual as well as business users. After experiencing success in the crypto space, DeFi Yield Protocol has announced a complete rebranding to Diepius. The experienced team conducted several months of research to come up with the best way to represent how they have evolved into the years. Users can take advantage of the Diepius Metaverse to bring their real-life businesses into a virtual space. Moreover, users can access unique opportunities to earn more rewards and in-game assets. The platform is set to offer unlimited possibilities for regular users and businesses through sustainable growth and constant innovation. While all this is quite encouraging for Metaverse, Mark Zuckerberg, the famed face of Facebook, does not seem to have anything encouraging on the table, at least from his own staff for the time being.
Meta staff are hitting out at Mark Zuckerberg in blind reviews because they think his metaverse obsession will single-handedly kill the company. The staff has been writing reviews since the day Meta axed 13% of its workforce. Some 44 employees' reviews of Meta were posted on Blind recently. Meta employees have posted almost 6,000 reviews of the company on Blind since 2020. It'd be a small number considering the size and reach of Zuckerberg's company, but nonetheless, his business decisions have indeed courted controversy in recent years. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such updates on Metaverse from all over the world. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like this video, share and subscribe 3.0 TV, and yes, do not forget to press the bell icon to get instant updates. एंड अ वेरी वार्म वेलकम। OTC से जुड़े इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पहले पार्ट में जहां मैंने आपको OTC ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, वहीं इसके पार्ट 2 में हम इंडस्ट्री प्लेयर्स और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। OTC ट्रेडिंग क्या है ये तो हमने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं इंडस्ट्री में मौजूद उन खिलाड़ियों के बारे में जो OTC सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्रैकन। दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट रेप्यूटेबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक है क्रैकन, जिसने साल 2018 में अपनी OTC सर्विसेज लॉन्च की। क्योंकि क्रैकन 45 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है और सीमलेस सर्विस की एक्सटेंसिव रेंज प्रोवाइड करती है, इसीलिए बड़े पैमाने में बिटकॉइन की बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये फोरमोस्ट OTC डेस्क मानी जाती है। इतना ही नहीं, अपने दायरे को और बढ़ाते हुए क्रैकन ने करंटली बिट ट्रेड और सर्कल ट्रेड को अक्वायर करने के साथ अपने OTC BTC एक्सचेंज सर्विस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। करंटली क्रैकन 45 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि ये फिएट करेंसी की वाइड वैरायटी को एक्सेप्ट करती है, जिसमें US एंड कैनेडियन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड्स, येन एंड यूरोस भी शामिल है। क्रैकन प्रिलिमिनरी कंसल्टेशन से लेकर फाइनल ट्रांजैक्शंस तक पर्सनल वन-ऑन-वन OTC सर्विसेज ऑफर करती है। ये सर्विसेज दुनिया भर के यूजर्स को 24/7 बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। क्रैकन में इंट्यूटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस और हाई लेवल की सुरक्षा है। अपनी OTC सर्विसेज के लिए ये कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं और इस पर मिनिमम ट्रेड साइज की शुरुआत $100,000 से होती है। बाइनेंस OTC। दुनिया में मौजूद पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात हो और बाइनेंस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाइनेंस भी क्रैकन की तरह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए पर्सनलाइज्ड डीप लिक्विडिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो लार्ज अमाउंट में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को फास्ट और एनोनिमसली एक्सचेंज करना चाहते हैं। दरअसल बाइनेंस OTC डेस्क बिटकॉइन OTC ट्रेडिंग को फीचर करती है और क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन की वाइड वैरायटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिपल या लाइटकॉइन। इस तरह से करंटली बाइनेंस OTC 75 से ज्यादा डिफरेंट टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सपोर्ट करती है। बाइनेंस OTC का मिनिमम ट्रेड साइज $10,000 है, ताकि एवरेज रिटेल ट्रेडर्स भी लार्ज स्केल बिटकॉइन ट्रेडिंग की एडवांटेज को एंजॉय कर सके। इसके साथ ही बाइनेंस वन-ऑन-वन पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग सपोर्ट और फास्ट सेटलमेंट ऑफर करती है, जो यूजुअली कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। कॉइनबेस 2011 में फाउंडेड कॉइनबेस जानी मानी डिजिटल करेंसी एक्सचेंज में से एक है। हाल ही में कॉइनबेस ने अपनी एक डेडिकेटेड सब्सिडरी लॉन्च की है, कॉइनबेस प्राइम, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के क्रिप्टो एसेट मेंटेन करती है। ये प्लेटफॉर्म एडवांस्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे OTC ब्लॉक ट्रेडिंग, मार्जिन फाइनेंस, एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम्स एंड मच मोर।
Coinbase इंस्टीट्यूशनल कवरेज प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड टीम की बदौलत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड और हैसल फ्री बिटकॉइन OTC ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में मदद करती है। ये प्लेटफॉर्म हाईली सिक्योर है और Coinbase की तरह इंटीग्रेटेड कस्टडी आर्किटेक्चर की एडवांटेज प्रोवाइड करता है। Bitfinex 2012 में फाउंडेड Bitfinex ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। Bitfinex क्लाइंट्स को अपनी OTC सर्विसेज के जरिए $100,000 और उससे ज्यादा वैल्यू की बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो एसेट्स को प्राइवेटली ट्रेड करने की अनुमति देता है। यूजर्स डायरेक्टली दूसरे Bitfinex क्लाइंट्स के साथ OTC ट्रेडिंग में एंगेज कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म के OTC डेस्क के जरिए इंस्टेंट लिक्विडिटी एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में Bitfinex ने ETH Finex ट्रस्टलेस नाम के ERC20 टोकन के ट्रेड के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड OTC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज 0.02% चार्ज करता है। क्लाइंट्स ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और टोकन सिलेक्ट करते हैं जिन्हें वो एक्सचेंज या रिसीव करना चाहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें 0.02% फी चुकानी होती है। क्योंकि ETH Finex एक पीयर टू पीयर सर्विस है, इसीलिए ये पूरी तरह से यूजर पर डिपेंड करता है कि वो बायर्स को ढूंढे या फिर थर्ड पार्टी ब्रोकर से मदद ले। हॉबी OTC 2013 में फाउंडेड हॉबी OTC यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग और जापान में ऑफिसेज के साथ सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को डिजिटल एसेट में ट्रेड करने की अनुमति देता है। हॉबी OTC डेस्क का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स एक ओपन ऑर्डर बुक एक्सचेंज के बाहर बिटकॉइन और दूसरी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम और USDT की हाई वॉल्यूम में एक्सचेंज कर सकते हैं। हॉबी OTC डेस्क सिक्योर और हाईली रेगुलेटेड है। हॉबी OTC से जुड़ी खास बात यह है कि ये कोटेशन से ज्यादा फी चार्ज नहीं करता है और ये सभी OTC ट्रेडर्स को आउटस्टैंडिंग 1-on-1 ट्रेड सपोर्ट ऑफर करता है। इतना ही नहीं, हॉबी OTC डेस्क का इस्तेमाल करके यूजर्स रोबस्ट लिक्विडिटी, मल्टी एसेट सपोर्ट और ग्लोबल एक्सिक्यूशन कवरेज की एडवांटेज उठा सकते हैं। वहीं बहुत से दूसरे ओवर द काउंटर ब्रोकर्स की तरह हॉबी OTC की मिनिमम रिक्वायरमेंट साइज $100,000 है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड में आपको OTC ट्रेडिंग से जुड़े हर एक पहलू को समझने का मौका मिला है। ऐसे में OTC एक्सचेंजेस के जरिए की जाने वाली बिटकॉइन ट्रेडिंग में शामिल सिग्निफिकेंट अमाउंट की वजह से इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप बिटकॉइन को खरीदने बेचने के लिए OTC सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके द्वारा चुने गए पर्टिकुलर OTC ब्रोकर और लार्ज स्केल ट्रेडिंग के इन्स और आउट्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल मैं रुचि शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए 3.0 TV। This is Tuvalu, an island in the Pacific which is on the brink of sinking. The sinking island is now trying desperately to save its sagging fortunes and is determined to become the world's first digital nation in the metaverse. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Piece by piece, we'll preserve our country, provide solace to our people, and remind our children and our grandchildren what our home once was. Citizens of Tuvalu, young and old, are now trying to relocate to safer locations.
much money. Tuvalu's Minister for Justice, Communication and Foreign Affairs, Simon Coffey, has said that creating a digital twin of Tuvalu could preserve the country's culture. We are sinking. That's what the minister said. Take a look. We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today, like in Tuvalu, or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day. Tuvalu's tragedy has sparked off global concerns on climate change. You don't have to cede power by acting on climate change. And do you want to be a leader that you look back in time and say that you were on the wrong side of the argument when the world was crying out for a solution? And it's as simple as that, I think. Droughts, floods, storms and wildfires are devastating lives and livelihoods across the globe. The window to limit global temperature rise to 1.5 degrees is closing fast. In other words, we are headed for a global catastrophe. And the reason for this unfortunate tragedy is the blind race for a rapidly growing economy. But at what cost? Everything we've achieved in the last 10,000 years was enabled by the stability during this time. The global temperature has not wavered over this period by more than plus or minus 1 degree Celsius. We are already in trouble. The UN and the USA have already raised a red flag over deteriorating health of the planet. We need to ensure that the financing will be there, both public and private, to meet the moment on climate change and to help us seize the opportunity for good jobs, strong economies, and a more secure world. If we are going to act on the scale that's required, climate change can't be seen anywhere in the world as just an opportunity to score political points. Well, Tuvalu could just be a wake-up call for the rest of the world, since there could be many more Tuvalus the world over. Tuvalu has already taken its first step towards reviving its fortunes as a nation in the metaverse. Tuvalu is an archipelago consisting of 9 islands located between Australia and Hawaii, with a population of approximately 12,000 people. It is also the 4th smallest country by area in the entire world. The Pacific nation has been one of the biggest voices in the fight against climate change that has affected its very existence beyond imagination. Every year, the country suffers severe flooding caused by high tides, with scientists predicting that the island will become uninhabitable in future. With global temperatures expected to rise substantially as well, the island nation says it has no choice but to build a digital version of itself. The idea aims to preserve Tuvalu's history and culture before the nation goes underwater, if at all it does, and unfortunately so. The project, which was announced by Tuvalu Minister Simon Coffey at the UN Climate Change Conference, will catalogue, map, record and save historical documents, records of cultural practice, family albums and traditional songs. The aim is to capture as much of Tuvaluan island life as possible.
Tuvalu has teamed up with global creative agency, The Monkeys, for the project. The Monkeys have created a dedicated website showing the digital project's progress. Over the past few years, Tuvalu has been developing digital solutions that could mitigate the impact of climate change on its citizens. In 2021, the government took steps towards establishing a Tuvalu National Digital Ledger, which would secure its citizens' data on a public blockchain. Well, none of us would ever want Tuvalu to ever lose its physical existence, but the 12,000 citizens of the world's fourth smallest country are sure going to interact real-time in an immersive virtual world very soon as it becomes the world's first digital nation. Well, that's all in today's special story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. In our latest update on CBDC, the central bank digital currency news, we will be talking about the Bank of England's latest move to prioritize wallet-backed system for digital currency transactions. Later, we will cover Nigerian startup Cardify introducing digital wallet as a new mode of payment. But first, let's move to BOE, the UK's central bank, which is soliciting a proof of concept based wallet project to hold a central bank digital currency. The bank has clarified that no work has been done on a CBDC sample wallet and added that it will not develop a user wallet itself. Last Friday, the BOE posted a request for applications on the United Kingdom government's digital marketplace, a service where government organizations can solicit work for digital projects. Simple guidelines for what the proof of concept wallet would have to achieve were outlined, with basic functionality such as a sign-up process, updating details, and show balances and transactions, amongst other requirements such as displaying notifications. Of course, the wallet also has to demonstrate it can be loaded and unloaded with the CBDC, along with being able to request peer-to-peer payments through an account ID or QR code and can be used to pay online with businesses. The project will create a mobile app for iOS and Android. It aims to explore the end-to-end user journey as the BOE seeks to sharpen functional requirements for both the bank and private sector, along with making the CBDC product more tangible for internal and external stakeholders. BOE would spend $244,500 or 200,000 British pounds for an expected 5-month project to set the proof of concept, which it will evaluate with 5 suppliers. The bank is still to receive applications. The BOE previously stated it is seeking to launch a CBDC by at least 2030. The Chancellor of the Exchequer, Jeremy Hunt, shared a number of reforms to Britain's financial services sector, which included consulting on proposals for the establishment of a CBDC. Moving to West Africa, Nigerian startup Cardify Africa has introduced a new platform where Nigerians can be able to use crypto to pay airtime bill, mobile data bill, electricity bill and other types of bills. Cardify customers will need to validate their accounts by completing the KYC requirements on the platform for certain transaction thresholds. Cardify will charge a 0.5% convenience fee on the total bill paid to cover the cost of delivering and processing each bill payment, as those are not discounted by the provider or payee. That's all for today in this special story. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great day.
विश्व भर में कई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया में तेजी से अपनाया जा रहा है। दरअसल उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन, जो अपनी नायाब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से सुर्खियों में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रेज की वजह से देश और दुनिया में लोग इसकी खासियत के बारे में जान रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी को भारत की उन कंपनियों के बारे में बताएंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम को सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम TCS का है। रेवेन्यू के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इस तरह से कंपनी वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं और दूसरे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को विकसित करने के साथ साथ लागू भी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के अंदर TCS ने एक स्टार्टअप TCS क्वाड्स को विकसित किया है, जिसके जरिए से ग्राहकों को ब्लॉकचेन आधारित समाधान प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही भारतीय राज्य सरकारों ने TCS के साथ अलग अलग सार्वजनिक परियोजनाओं और नागरिक सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना पर चर्चा भी की है। लिस्ट में दूसरा नाम टाटा मोटर्स का है। ये टाटा समूह की एक दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सर्कुलर में निवेश किया है। इस निवेश के साथ जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR कंपनी की वेंचर कैपिटल और मोबिलिटी सर्विस आर्म को ज्यादा पारदर्शिता के साथ प्रीमियम मटेरियल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मुकेश अंबानी ने 2019 में रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में अपने एक बयान में कहा था कि उनकी ब्लॉकचेन तकनीक का फायदा उठाने की बड़ी योजना है, जिसके बाद ब्लॉकचेन के नजरिए से अगस्त 2019 में रिलायंस जियो ने हजारों नोड्स के साथ भारत के सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक को स्थापित करने की घोषणा की थी। उस मौके पर अंबानी ने कहा था कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के लेन देन के लिए पूरी सुरक्षा, विश्वास, स्वचालन और दक्षता प्रदान करेगा। जियो के पास कई न्यायालयों में लगभग 371 पेटेंट हैं। अकेले वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी ने 38 पेटेंट के लिए आवेदन किया और उनमें से 40 उन्हें हासिल हुए। ऐसे में पेटेंट द्वारा कवर किया गया एक प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र क्वांटम ब्लॉकचेन नेटवर्क टेक्नोलॉजी था। इसके अलावा मुकेश अंबानी की रिलायंस ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए मेटावर्स में निवेश किया है, एक ऐसी आभासी दुनिया जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक शामिल है। IT कंपनियों को टेक्नोलॉजी अपनाने और पेश करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस सूची में इन्फोसिस का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह चाहकर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। इन्फोसिस की फिनिकल नाम से एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है। फिनिकल एजवर्स सिस्टम्स का एक हिस्सा है जो इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी है। ऐसे में 2016 वो समय था जब एजवर्स सिस्टम्स ने अपना पहला ब्लॉकचेन सॉल्यूशन लॉन्च किया। फिर 2018 में एक दूसरे ब्लॉकचेन आधारित सॉल्यूशन फिनिकल ट्रेड कनेक्ट को लॉन्च किया। सरल भाषा में कहा जाए तो फिनिकल बड़े बैंकों को पुराने IT सिस्टम को आधुनिक बनाने में मदद करता है। इसके अलावा साल 2019 में इन्फोसिस ने सरकारी सेवाओं, बीमा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए 3 ब्लॉकचेन संचालित वित्तीय एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। टाटा स्टील टाटा समूह की एक और दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन को अपनाया है। इस साल अप्रैल में टाटा स्टील ने HSBC के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड ट्रांजैक्शन को निष्पादित किया, जिसके बाद स्टील की दिग्गज कंपनी और UAE आधारित कंपनी के साथ व्यापार वित्त सौदे को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ टाटा स्टील ने दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के अवसरों का पता लगाने के अपने इरादे का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील का मानना है कि ब्लॉकचेन खनन और धातु कंपनियों के लिए कार्बन उत्सर्जन का पता लगाने में मदद कर सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने का आदेश दिया है। टेलीकॉम सेक्टर में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल स्पैम कॉल्स की समस्या से निपटने में मददगार होगा। साथ ही साथ ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने से ऑफिशियल अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज्यादातर कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इंडियन टी बोर्ड संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की योग्यता को बढ़ाने में
मदद करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने की योजना बना रहा है। दरअसल मिलावट के कारण टी बोर्ड ऑफ इंडिया को उत्पादित होने वाली चाय की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से हर कदम पर रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। इससे जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और अधिकारियों को समस्या क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुलझाने में भी मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को अभी देश के भीतर मौजूद कई उद्योगों द्वारा अच्छे से समझना बाकी है। ऐसे में गलतफहमी है कि ब्लॉकचेन हाल के सिस्टम की जगह ले लेगा, जो कहीं न कहीं सच हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी तरह से ब्लॉकचेन की ज्यादा प्रयोज्यता हमें दिखाती है कि ये लंबे समय तक रहेगा। भले ही देश में ऐसे व्यवसाय पहले से हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं और आने वाले समय में ये ट्रेंड जारी रहने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वेब3 की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.o टीवी के इस खास शो टिप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन कई बार इसे कम समय में पूरा करने का जुनून घाटे का सौदा साबित होता है। ठीक उसी तरह से जैसा बॉलीवुड की फिल्म हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल के चक्कर में अक्षय कुमार, परेश रावल से लेकर सुनील शेट्टी देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। यानी बाबू भैया, ज्यादा लालच करोगे तो यूं ही फंसोगे। क्रिप्टो की दुनिया ने जिस तरह से तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, ठीक उसी तरह से पिछले कुछ सालों में पॉन्जी स्कीम्स में भी उछाल देखने मिला है। सबसे ज्यादा 2016 के बाद से कई शाडी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को इन्वेस्टर्स को धोखा देकर फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में पॉन्जी स्कीम जैसे स्कैम के बारे में ज्यादा जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉन्जी स्कीम की डेफिनेशन। तो पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें ऑपरेटर या ऑपरेटिंग कंपनी बिजनेस के मुनाफे के बजाय नए इन्वेस्टर से आने वाले नए कैपिटल से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पे करती है। इतना ही नहीं, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के मुकाबले कम समय में ज्यादा रिटर्न देने का ऑफर देकर पॉन्जी स्कीम अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी आसानी से अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब होते हैं। पॉन्जी स्कीम्स खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण इस सेक्टर में रैंपेंट हो गई है। स्कैमर्स को सेंट्रलाइज मॉनिटरी अथॉरिटीज को दरकिनार करने में सक्षम बनाती है, जिससे वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकचेन सिस्टम का इम्यूटेबल नेचर फंड ट्रांसफर को इरिवर्सिबल बनाता है, जो स्कैमर्स के पक्ष में भी काम करता है, जिसे पॉन्जी विक्टिम्स के लिए अपना पैसा वापस पाना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। क्या है पॉन्जी स्कीम्स नाम के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। पॉन्जी स्कीम का नाम आते ही सभी के दिमाग में स्कैम्स और हैकर्स के जुड़ी बातें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इस तरह की ठगी को कुछ और नाम ना देकर पॉन्जी स्कीम ही क्यों कहा जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए शॉर्ट में इस कहानी को आपको सुनाता हूं, जहां आप जान जाएंगे कि किसने किया था पहला पॉन्जी स्कीम स्कैम, कितनी की हुई थी ठगी और कैसे पड़ा ये नाम। बताया जाता है कि पॉन्जी स्कीम फ्रेज की शुरुआत साल 1920 में तब हुई जब चार्ल्स पॉन्जी नाम के एक ठग ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिटर्न्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी। पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को 45 दिनों के भीतर 50% तक या 90 दिनों के भीतर 100% इंटरेस्ट देने का वादा किया था। इस तरह से लोगों का भरोसा हासिल करते हुए पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स के पहले ग्रुप को वादा किया गया रिटर्न दिया था, लेकिन उन्हें असल में इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो असल में दूसरे इन्वेस्टर्स के थे। एक जाल था जिसे पॉन्जी ने अपने नए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यानी फंसाने के लिए बुना था, और इस तरह से पॉन्जी ने सभी के आंखों में धूल झोंकते हुए $20 मिलियन से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि पॉन्जी इस तरह की ठगी को अंजाम देने वाला पहला ठग था, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई थी
लेकिन जिस चीज ने इसे अलग बनाया था वो था इसका बहुत बड़ा पैमाना, और इस तरह से इस ठगी की टेक्निक को इसके नाम पर रखा गया। किस तरह से नकली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है, आइए देखते हैं। शॉर्ट में बात की जाए तो ये एक पॉन्जी स्कीम फेक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है जो अपने क्लाइंट्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफे देने की लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। ये स्कैमर्स को इस तरह के फ्रॉड स्कीम चलाने और नए इन्वेस्टर्स को लुभाने में मदद करता है। कहा जाता है कि पॉन्जी स्कीम्स को सस्टेनेबल होने के लिए कैश फ्लो की लगातार जरूरत होती है। ये स्कीम आमतौर पर तब खत्म हो जाती है जब नए रिक्रूट्स के नंबर्स में कमी आने लगती है या जब इन्वेस्टर्स साथ में अपना पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शंस चुनते हैं। आइए देखते हैं पॉन्जी स्कीम्स के कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, बर्नी मैडॉफ। पॉन्जी स्कीम्स को कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कितने साल के इन्वेस्टर्स को उसके जरिए धोखा दिया जा रहा है, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसा ही एक मामला वॉल स्ट्रीट ब्रोकर बर्नी मैडॉफ का है, जिसके द्वारा चलाया जा रहा है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस लगभग 20 साल पुराना पॉन्जी स्कीम था। मैडॉफ ने इसकी मदद से लोगों से कई बिलियन की ठगी की थी। हालांकि मैडॉफ का भांडा विसल ब्लोअर हैरी मार्कोपोलोस ने फोड़ा था। नंबर 2, JSG कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिटर्न के नाम पर कैलिफोर्निया के रहने वाले 2 शख्स ने हॉट प्री IPO स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बदले मुनाफा देने का वादा किया था। हालांकि सच तो यह है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कभी की ही नहीं गई थी और इस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया था। क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम का कैसे पता लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। हालिया वर्षों में क्रिप्टो मार्केट में अब ट्रेंड के साथ पॉन्जी स्कीम्स के नंबर्स में तेजी देखने मिली है। इस तरह से जानना बहुत जरूरी है कि पॉन्जी स्कीम को आखिर कैसे स्पॉट किया जा सकता है। तो आपको रखना चाहिए कुछ बातों का ध्यान, जैसे नंबर 1, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न के वादों के जाल में खुद को फंसने से बचाएं। नंबर 2, रजिस्टर नहीं किए गए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान न दें। नंबर 3, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करने वालों से हमेशा दूर रहें। नंबर 4, पॉन्जी स्कीम्स में होता है सेंट्रलाइजेशन का हाई लेवल। नंबर 5, पॉन्जी स्कीम्स में मौजूद होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो पॉन्जी स्कीम से जुड़ी स्टोरी के पहले पार्ट में बस इतना ही। पार्ट 2 के साथ लौटते हुए हम कुछ जाने माने पॉन्जी स्कीम्स पर नजर डालेंगे और साथ ही डालेंगे इनमें मौजूद सिमिलैरिटी पर एक नजर। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishaka Thakur and we are at Zeev's Web3 Titans event. I have with me Mr. Jobin Ayathil from Arcana Network. Welcome on 3.0 TV, sir. Thank you. So as we see, Web3 is driving millions of trillions of dollars into the economy. So what do you think is going to be the future, and in future, what impact will Web 3.0 have on the economy? So what Web3 is going to do is Web3 will slowly kill all the traditional companies, because how their revenue model works, how their business model works was very extractive towards the user. But users have started gaining awareness that their data matters. They should have complete control over the time, the engagement and data that they have on the internet. So the coming Web 3.0 industry focuses on these aspects, and many of the companies are doing it in a really wonderful way. So not immediately, slowly things are taking like the traction is happening, awareness is happening. Slowly we'll see a good amount of adoption, and eventually we'll see all the traditional companies dying. So how do you think Web 3.0 will benefit the businesses and entrepreneurs? So actually I recently had a very good insight into the market. So if you observe how Google is one of the biggest advertisement platform for all the businesses. So if you see, their ad revenue has been going down, especially during the pandemic and post the pandemic. Very few businesses are putting the same amount of money for advertisement
before the pandemic. Whatever they were putting, they're not putting the same amount. The reason is that we have been shelling out a lot of money to gain users' attention. The model was attention-seeking advertisement system. So that is not gonna happen in the coming days. So the whole Web2 business runs based on the advertisement and the attention system. Because people have understood that that's not gonna work in the coming days, the Web 2.0 companies are gonna go down and new business models are gonna come. The one insight I would love to give to you is people are gonna start taking pay to use seriously. You see play to earn as game, and smart contracts basically works by paying a fees for using any service. So people will start taking their time, their data, their engagement seriously, because now they are paying money for using the platform or the service. And so this is gonna affect the consumers' thought and mentality, how they will use a service, how to buy a product. So you will no longer be forcing people, bombarding them with constant advertisements to buy a product. Rather, these people will be paying for watching content. So they'll not be seeing advertisements that they don't wish to see. So there will be a huge shift in terms of business models and businesses, how they do business. And not only the businesses will be earning a huge amount of revenue, users also will be earning a good amount of revenue for whatever they are doing on internet. Spoke about the revenue generation part, but it's a new space. So the developer hiring is quite painful right now. So how do you think it can be solved? So developer hiring can be solved. One of the best approaches in the past decade, you have seen that developers were hired in the traditional process. Like you have to go, you have to put a job vacancy, you put it out on the internet, people will see, come and run a lot of interviews. That has changed. And that basically the filtration system happens through certifications, degrees, and a lot of stuff. But that's not how somebody should be, judged or valued. Rather, it's their execution capabilities, their skills, how they are able to solve a problem. Okay, and that can be done through small sample, or a test situation where they show how they are executing their, showing their capabilities, how they are solving problems. The best scenario is coming up with hackathons, coming up with a small grants program. So now a lot of companies have Web3 companies have came with bounties. So rather than building within the team, small problems which are not that very critical, but still you need to build on that, you put out that as a bounty. So external developers come and contribute to their project, they build and they get bounty. That way you can verify whether these people have really good skills, they are able to actually solve problem rather than coming up with some 9 CGPA certificate and not eventually able to solve problems and build for the company. So hackathons are a very good place for that. And that is why you see Web3 companies sponsoring a lot of hackathons, engaging with developers through a lot of hackathons, fellowship programs, ambassador programs, hackathons, and one very important program that is guilds. Getting to the grassroots level, that is developers start becoming early developers at universities or colleges. So if you go at that place, start interacting with them and tease them at the right time, so they'll easily get into the Web3 space and you will be able to understand how they are learning, what they would love to build, what infra they will need, what tools they will need. That's the right place. So you will see many companies right now building a lot of guilds in colleges, especially in India. India, it's growing massively. Gen Z is the right target. Yes, that's what you mean. Yes. What role the regulations are going to play in the coming future? So regulation is one of, it's like right now Web3 has a huge potential. I would like to describe Web3 like a horse, which has huge potential to run towards wherever it wants. Okay. The problem is like it can get deviated, it can get distracted, or go astray. So what you do is you keep blinds on the either side of a horse so that the horse sees whatever is in the front and runs towards that. Without regulation, you didn't have a boundary. You could do anything. You could do extreme good things and extreme bad things. But with regulation, you put a
boundary on or limit on whatever you are doing. So regulation will be like sort of like a teacher who scolds the student whenever something bad happens. So regulation is much needed. You can't keep on making profits in bad ways. You have to ensure that whatever is going, whatever is happening in the right way. It's good that everybody is cashing a lot of money, making a lot of money, but we have to check whether they are doing it in the right way or not. And regulation is something which will keep it in check. Regulation is much necessary. So what role blockchain is going to play in Web 3.0? Blockchain is the core tech behind Web 3. Like I was sharing a couple of minutes back about the OTP approach, open, trustless, permissionless, transparency approach of blockchain. Blockchain is not just a tech. Blockchain is sort of like that ethical torch bearer for this Web 3, revolution. Like the dot-com bubble, the dot-com revolution, or whatever the internet revolution came, it was good. People were making a lot of money. Businesses were coming up, new businesses were building new products. Everything was happening, but something that lagged was ethics. But Web 3 with blockchain is like business, products, everything with ethics, because blockchain is making everything like good for everybody. So blockchain is needed. Blockchain is the torch bearer for, especially if you see Ethereum. Ethereum is the torch bearer when it comes to blockchain's ethics. They're ensuring that everybody gets equal opportunity to access internet. It's secure. Nothing bad happens. So blockchain is going to be the one who leads this revolution. Since you also spoke about the NFT sector, what future do you see of the NFT sector? So right now, NFT is like everybody's hype riding in this NFT wave. You see a lot of art which doesn't make sense getting sold for millions and millions. It's good. Early stage, people are trying to explore, so let them enjoy the time. It's okay. But eventually, NFTs with only utility is gonna survive. NFT is not here to just sell art. NFT is here to make the lives of people easy by providing them with utility. Like the best examples can be the common scenario. Anybody who is coming out of college, they can have NFT certificates, COVID certificates, vaccination certificates. This can be made out of NFT. So utility is the only thing that will help NFTs survive. If you are gonna run, we have NFT only because it is selling out for millions, not for long. Alright, so thank you so much for sharing your insights and knowledge with our viewers. Thank you so much for being on 3.2 TV. Thank you. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulation. In 2021, when the USDT claim was questioned whether they are really backed by the dollar or not, so US government has questioned them. After that, the series of events has happened from Luna, and now the FTX case is there. So primarily the impact is definitely significant in part where people want to launch their project into different exchanges like Gate.io and the KuCoin basically. So these are also getting impacted by this. So definitely the upcoming projects are getting impacted by the entire event. Also, the investors' confidence has been impacted, like whether they want to invest in the project, which is like quite famous or quite popular in the media or probably in the space. All of this has definitely had an impact on the investor sentiment, specifically when it comes to retail investors and more specific to first-time users who kind of getting into the Web3 and cryptocurrency space. If you look at the overall traction, what we have seen, the journey has moved from crypto to Web3. We are taking the overall ecosystem to the reality of actual use cases of blockchain out there and other emerging technologies.
Today, governments are also now embarking how Web3 could be the ecosystem for their citizens. Example, Telangana state has recently announced sandboxes, right? Or even academia is also now adding their courses into their curriculums. We have seen how Web3 works. Web3 University is really embarked and working with 100 plus institutes to really create a next level of talents out there, right? So I think the rise of a new company, startups or big tech companies are now adopting blockchain as a prominent business model. So I think last 1 year was exciting enough to really give a edge or a drive for a next couple of years. So in 2022, it was very crucial that FTX crash and cryptocurrency crash, but in 2023, I can hope that there will be the recovery of the cryptocurrencies and the mass adoption of the blockchain and the further utilities and developments in the CBDC, which is a central bank digital currency, and that will enter in new phase, and there will be the many more. So congratulations 3.0 TV for covering one successful year of Web3, NFT, Metaverse and blockchain and many other various sectors. I think this year 2022 was the year of cleansing, where the bad weed of Web3 were taken out, the ones that were gimmicky, the ones that didn't sort of perform in the right ethics were taken out, and this was the year of cleansing. The year 2022 was a fantastic year for Metaverse. Facebook changed its own name to Meta. Many devices have been launched this year. Many AR/VR apps and games have been launched this year. Many businesses have developed pilot project in Metaverse and AR/VR space. You name it. Almost all the big companies have done something in AR/VR space. They have accepted that Metaverse is a new normal and they have to adopt it to be relevant. That is the most important part. Now, intangibly, the Metaverse has got the biggest impulse this year. Thank you. 2022 was a great year for Metaverse industry. The industry gained a lot of attention post May 2022 after Facebook was renamed as Meta. That one video of the CEO changed everything for the Metaverse industry. Thousands of new Metaverse startups were made alone in India. Some of them have already gained recognition and a lot of them are in their beta phase. 2022 has seen a lot of ups and downs. If you see from a crypto perspective, the prices has gone down. There has been quite a few hacks on the blockchain bridges and few decentralized, few smart contracts that have been hacked. In addition to that, we have seen Terra Luna fail, and then FTX and BlockFi, and quite a few centralized lending organization and centralized wallets or exchanges failed. So some of these have been out of greed. Some of these have been out of mismanagement of funds, how they are redeploying the funds. So if you over leverage, of course, there are chances whenever the prices of the asset will go down. It would be difficult to manage the balance sheet. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. So, Metaverse has opened a whole new spectrum of opportunities for investors, innovators, developers and entrepreneurs like never before. And globally, companies like Facebook, Epic Games, Roblox Corporation, Nvidia and others are already investing heavily in creating a metaverse. Well, India has a massive role to play in leading the metaverse revolution. So today we have invited Mr. Krishnan Sundararajan, who is the founder of India's first metaverse app, Loka. He will share insights on building an Indian metaverse. Welcome to 3.0 TV, sir.
Thank you, Vishaka. Thank you for having me. It's a pleasure coming here and talking. It's a pleasure to have you, sir. So, sir, Metaverse is opening up transformative opportunities. Do you think that India is a conducive place for the growth of Metaverse? I think India is the perfect place to be right now when it comes to the Metaverse, especially because the gaming sector, the gaming industry in India is booming. Why is it booming? Because we have the highest number of gamers, we have one of the highest number of mobile users, and they've started to pay as well. So traditionally, we've been in a country where gamers would come, play, but not pay for the game. Now that's changing, and that creates an environment where the demand already exists, but the supply is also starting to come in, and this is becoming like a utopian world when it comes to creating a metaverse gaming environment. So, what do you think? What, according to you, needs to be done to create an ecosystem for India which becomes completely sustainable and flourishing for everyone? And how do you think we can make India's metaverse industry basically more sustainable? Great. I think that's a wonderful question. I'll tell you why. Because, as I said, India always had the demand. India didn't have the infrastructure to start with. Now that has changed, especially with 5G coming in, with faster mobile phones coming in, with the Indian per capita increasing. Now more and more people are now exposed to metaverse, and that's the demand part. What happens to the supply part? Traditionally, we had developers who would develop in, let's say, Java, backend developers, web developers, app developers, but we didn't really have game developers as much. Now all that is changing. Why? Because the gaming industry is moving from the West towards the East. You will see a lot of companies delegating some of their work. Ubisoft does it, EA Sports does it, to Indian game studios. And now game studios have started to feel that it's their time, and they've arrived on the scene, and they've started to create their own games, own environments as well. So we've had the demand, we are working on the supply, and what remains here is the customer who is willing to pay for the entire platform, the entire product, and that has also changed. So I believe that the thing that already existed was demand. Supply is something that's almost sorted. The in-app purchase, the customer paying for the services, that is yet to come in, and I believe that with the trend that's setting in, that will also come in and create a sustainable environment for everybody. Absolutely. And there are so many sectors which can leverage the opportunity at this time, be it manufacturing or e-commerce. So if a medium-sized e-commerce retail or say any other company wants to build a metaverse platform, what would be the work pipeline of developing, or what would be the cost of a platform like this? And I'm going to deviate a little from the topic and just give you an answer by putting a question even before that. One of the questions that a lot of companies don't ask is, what am I going to expect as an outcome out of this exercise? So that needs to be sorted first. And then let's say that's sorted. The second thing they need to figure out is, what is the kind of device I am targeting this on? Am I targeting this on a PC or an Oculus or a VR device, a mobile or a console? Once that is sorted, then comes, am I going to choose a platform that already exists, like Fortnite, Roblox, Decentraland, so on and so forth, Loka, so on and so forth, or am I going to build it on my own? If I'm going to build it on my own, then you choose either a Unity or an Unreal platform, an engine to develop this. So this roughly takes 30 to 50 days to create a metaverse-like environment. And even though this is very case to case, but I would say that the cost would vary anywhere between, let's say, a 5 lakh to maybe 20-25 lakhs. So you started your answer by saying that instead they should ask that what are we going to get out of it? So a lot of investors are optimistic about metaverse, but they still struggle that how much revenue it will generate. So what are your views on this, and how do we convince investors basically that it is the future, and when do you think that metaverse startups will start making money? Great question again. I think one of the things that I'm extremely bullish on is the fact that metaverse
is going to not only replace offices, not only replace, let's say, movie halls, dating centers, but they will replace reality. And that is how bullish I am on when it comes to the metaverse. And I believe this will take place within the end of this decade, probably within the end of 2030. And the reason why I say this is because as humans, as a species, we are trained to explore in a 3D space. We are not trained to maybe go on a Zoom, talk to each other using small boxes. We are attuned to being in a 3D space, going, meeting somebody, shaking their hand, sitting right across the table and talking to each other. And that's the kind of internet everybody wanted, everybody deserves. And that's the kind of internet Metaverse is going to create. And as far as money is going to come in, right now we are at the infancy stage. We've just taken birth. We're just exploring the world, trying to make sense of how the metaverse is to be created. I think by the end of 2030, we would probably be in our teenagers. We would have some idea of what the metaverse will look like. And by, let's say, 2035, we will really come on our own and make metaverse replace reality. And when that happens, when the world starts living on the metaverse, the economy that exists on the internet suddenly ports to the metaverse. And I believe this is going to be a multi-billion-dollar, if not a trillion-dollar industry in the next 10, 15 years. Yeah, so it is being said that according to various reports that metaverse is going to be a $13 trillion to $18 trillion market opportunity by 2035, of course. So companies are betting big on metaverse. Along with this, countries are too betting big. And if we talk about Dubai, so Dubai is becoming the center of Web3, with country having its own metaverse strategy. So where do you see Dubai in the next 5 years? I think Dubai is going to be a center of metaverse development and interaction, because again, as far as Dubai is concerned, it's one of the first movers in the industry, and that will definitely give them an advantage. We will see the Dubai model getting copied by a lot of other countries that probably succeed the race, and they will take examples of what Dubai did right and start incorporating that into their system. So Dubai has an important role to play here, especially because it's the first mover, and it will definitely reap the reward for it as well. So you claim that Loka is India's first metaverse app. Can you share details on user base, your projects, and other commercial data on your project, including investments and tie-ups? Sure. So we've been very fortunate that we've just launched this year on January 3rd, and we've been fortunate to have around 3.5 lakh unique visitors on our platform. We're available on mobile and PC. These users are traditionally of the age group of 15 to 25, spend roughly 13 minutes every day on the platform. They meet friends. They sort of find the love of their life. They play games together, watch concerts, and a bunch of stuff. As far as partnerships are concerned, we work with some of the biggest companies. We were fortunate to conduct India's first K-pop concert on the metaverse with Boat. We did a town hall with HDFC Ergo. We're doing India's first cookery show very soon, followed by India's first reality TV show very soon. I'm not at the liberty of telling you the brand, okay, but that will happen by the end of February. Wow. And as far as commercials are concerned, I think we started making revenue in the month of June. We are clocking extremely good numbers. We were thinking of finishing the year at 2 crores. I think we will be crossing that within the end of financial year. Wow. So best wishes to you for all your future endeavors. Thank you so much. Yeah. Metaverse is the future of internet, but what do you think is going to be the future of metaverse? Oh, that is wonderful. I think the future of metaverse
I can sort of subdivide it into two categories. One is virtual worlds. So we will have companies like Loka, like Fortnite, Roblox, and the rest creating virtual worlds that are highly immersive in nature, where especially Unreal Engine 5 coming in, you will be in a world where you will sort of not be able to differentiate if what you're seeing is real or if it's virtual. It will be hyper realistic virtual worlds. That's one. Second are haptic devices. So when 5 senses of your body get engaged, currently with the VR device 2 senses get engaged, your eyes and your ears. When 5 senses get engaged, being in a hyper realistic world, wearing gadgets that help you sense the environment will help you replace reality in general. And that is what I think is going to be the future of metaverse, hyper-realistic worlds, haptic devices to sense those hyper-realistic worlds. Wow. So being an early adopter, would you like to give any advice or message to the future or the current developers who are trying to create a very good or a very nice metaverse platform? So I think one advice that I would definitely like to give is, and that's something very simple, very effective, is the fact that focus on localization. Because as a gamer, as a player, as somebody who's working in it, I realize that users don't want to consume content on the metaverse, on a virtual world that is based out of New York, that's based out of Berlin, that's based out of London. They want to feel like they're in Mumbai. They want to feel like they're in Delhi. They want to go to a Pani Puri wala. They want to meet somebody wearing clothes that are available in their home market. They want to see cars that are available in their market. So create localized experiences for the public, for the consumers who reside in your respective countries. So that's a big thing that one needs to focus on. Apart from the fact that keep upgrading and creating amazing, cool stuff that they already do. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Likewise. Thank you. So this was Mr. Krishnan Sundararajan, founder of India's first metaverse app, Loka. He shared insights on building an Indian metaverse and the future of metaverse. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। 3.0 टीवी के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि फार्मिंग, इविल ट्विन और वॉइस फिशिंग अटैक्स को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। अगर पिछला एपिसोड आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर जरूर देखें। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एसएमएस फिशिंग, डीएनएस हाईजैकिंग और फिशिंग बोट्स अटैक्स किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएमएस फिशिंग अटैक। एसएमएस फिशिंग को स्मिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक में ईमेल के बजाय टेक्स्ट मैसेजेस का उपयोग किया जाता है। स्मिशिंग अटैकर्स अपने विक्टिम्स को बड़ी चालाकी से उस तरह के मैसेजेस भेजते हैं जो ऑफिशियल बिजनेस मैसेजेस के समान दिखाई देते हैं। इन एसएमएस में लिंक होता है जिसमें आपके लॉगिन की जानकारी मांगी जाती है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं और लॉगिन की जानकारी देते हैं, अटैकर तुरंत ही आपके अकाउंट पर काबू पा लेते हैं। डीएनएस हाईजैकिंग। इस तरह के अटैक में एक वैलिड वेबसाइट को टारगेट किया जाता है। इन वेबसाइट के डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के एंट्रीज यानी ओरिजिनल आईपी एड्रेस को बदलकर बोगस वेबसाइट का आईपी एड्रेस एंटर किया जाता है। फिर जैसे ही आप वैलिड वेबसाइट को एंटर करते हैं तो वो सीधा
आपको एक फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। आपको बता दूं कि डीएनएस आईपी एड्रेस को चेंज करके और राउटर पर नियंत्रण पाकर एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैलवेयर से संक्रमित किया जा सकता है, जो कि एक कोई बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। फिशिंग बोट्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें ऑटोमेटिक फिशिंग अटेम्प्ट करने के मैक्रोज सेट किए जाते हैं। इस तरह के फिशिंग बोट्स का उपयोग फेक वेबसाइट्स को डेवलप करने और सर्वर्स पर होस्ट करने के लिए किया जाता है और साथ ही इन फिशिंग बोट्स का उपयोग बल्क फिशिंग ईमेल्स करने के लिए भी किया जाता है। ये फिशिंग बोट्स इस तरह से प्रोग्राम होते हैं जिससे आपकी लॉगिन डिटेल्स और प्राइवेट डाटा को ऑटोमेटिकली चुराया जाता है। इन फिशिंग बोट्स का उपयोग स्पैमिंग और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे अटैक्स के कंजक्शन में भी किया जाता है। तो अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फिशिंग अटैक्स के बारे में जानकारी लेंगे। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.OTV और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। Hello and welcome to 3.TV. I am Vishakha Thakur. You are watching the Coin Monitor. Cryptocurrency markets were trading mixed on Tuesday after hawkish comments from Fed officials hit risk sentiment ahead of a widely anticipated speech by Federal Reserve Chair Jerome Powell. Bitcoin surpassed the crucial $17,000 mark. IC15 index of cryptocurrencies was down 0.1% at 25,770 points. Meanwhile, Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic said that interest rates should rise above 5% and stay there for a long time. The global cryptocurrency market capitalization was trading lower around $853 billion, losing as much as 0.1% in the last 24 hours. The total trading volume increased by 4% to $39 billion. In the crypto space, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. Investors came into the new year worried that higher Fed rates could tip the economy into a recession. However, many appear to be mounting bets that inflation is starting to ease. In another interesting news, San Francisco Fed President Mary Daly said that the central bank should continue raising rates, albeit at a slower pace. Treasury yields rose slightly on Tuesday. Furthermore, the US dollar index rose to 103.23 in the last 24 hours, causing the Bitcoin price to rally above $17,000. However, volatility can be expected this week due to a number of key events. Stock futures were little changed Tuesday as concern over higher rates lingered among traders. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average shed 60 points or 0.2%, while S&P 500 fell less than 0.1%. Nasdaq 100 futures hovered just above the flat line. Bitcoin was trading at $17,252, up by 0.1%. Ethereum, the second largest crypto, was up by 0.8%, trading at $1,328. BNB was down 1.4% to trade at $274. Next on the list, Solana Sol was down 2.4% and was trading at $16. Polygon Matic was trading down by 2% to trade at $0.84. Next on the list, Cardano's ADA token was down by 1.7% to trade at $0.31. Doge, the popular meme coin, was trading down by 1.6% at $0.076. Ripple's XRP token traded at $0.34, down by 0.5%.
Next on the list, Polkadot was down by 1.5% to trade at $4.9. Avalanche AVAX was trading at $12.5, higher 0.1%. And last on the list, Shiba Inu was trading up by 6%. That's all in the Coin Monitor. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching the Coin Monitor.
how long it will take before cryptocurrencies has the same importance, ease and equal amount of value as the fiat currencies. So I am Manoj Dara and you are watching this special story on 3.0 TV. Money is not what cryptocurrencies are. A cryptocurrency is a software program that consists of tokens or units that can be safely and securely transferred from one owner to the other. The publicly accessible, broadly displayed database called a blockchain stores transactions. So according to economists from the Bank of International Settlements, which is BIS, the use of public blockchain leads to fragmentation, which implies cryptocurrencies will never be a suitable form of payment. The BIS analysis claimed that when the number of transactions per block approaches its limit, the cost of transaction increases, driving the consumers to seek out alternative blockchains. So, BIS is an organization that represents the world's main central banks. So, according to them, this fragmentation means blockchain cannot harness the beneficial network effect associated with the traditional money. So this is an important point. Please keep an eye on this. So does it mean that the basic fundamentals of money are we going to experience? So cryptocurrencies do not adequately meet the functional requirements of money, and economists believe that the money performs three basic functions such as store of value, medium of exchange, and the unit of account. So what is store of value? We will discuss this. People feel comfortable holding their wealth in it. So despite the fact that many individuals own Bitcoin, its frequent significant price swings make it particularly risky investments for storing one's wealth, isn't it? So due to a number of issues including rising interest rates, the collapse of Terra Luna and the implosion of FTX, the market capitalization of cryptocurrencies has fallen from $3 trillion level, which is actually reached to under $1 trillion as we speak. So the second point which we're trying to explain is the medium of exchange. Even though several well-known businesses including Microsoft, PayPal and Starbucks have begun to accept cryptocurrencies as payments, many others still do not. For example, if we take an example of PayPal, one of the largest payment processor in the world, PayPal, has announced that it will be accepting Bitcoin and other cryptocurrencies as payments starting in 2020. So, however, if a user chooses the cryptocurrency as the funding source, the cryptocurrency will be instantaneously converted into fiat money and the payment will be made to the PayPal merchants in the fiat money. So please remember this. This demonstrates that the fiat currency, in this case, the US dollar, is a medium of exchange and the cryptocurrencies are not. Dollar and the other currencies are legal tender which must be accepted if offered in payment of a debt. Cryptocurrencies are not. Our third point is a unit of account. Even as investors or a trader who have a great success trading Bitcoin refer to their money in dollars rather than Bitcoin. Dollars, not Bitcoin or other cryptocurrencies, are used to measure the size of cryptocurrency marketplaces. So while Bitcoin may serve this function someday, it doesn't yet. So overall, if we talk about cryptocurrencies can be used to purchase goods and services, however, they are not generally accepted as a medium of exchange. Cryptocurrencies are also a poor store of value given their volatility, few market participants opine. Further, the unstable nature of cryptocurrencies, including the so-called stable coins, undermines their function as a unit of account. So imagine being unable to budget your lunch if you went out to your favorite restaurant every day and the price of your meal is fluctuating in Bitcoin. Thankfully, the cost of your food is displayed in the currency you earn or you accept while you are traveling, such as the dollar, which is the real money. Thank you for watching this special segment on 3.0 TV. This is Manoj Dara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Thank you. Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The metaverse has long been gaining traction in both the digital and the real world.
The idea of humans interacting with each other in the virtual world using 3D avatars offers several opportunities to users, including in the fields of cryptocurrency, non-fungible tokens, and more. However, as per a study, the immersive virtual world, which is expected to grow to a $679 billion industry by 2030, also poses several risks in terms of trust and safety concerns. The metaverse is attracting large investments from technology giants such as Google, Meta, Microsoft, and Nvidia to make the virtual world a reality. As organizations develop their business strategies for the metaverse, trust and safety issues need to be among their foremost considerations. As the metaverse is expected to grow in the coming years, the enterprises will have to face challenges like ensuring the safety of virtual assets, managing data privacy, and preventing the abuse of online avatars. Tackling these novel challenges will require a collaborative approach among enterprises, academia, policymakers, and trust and safety service providers to harness the full potential of metaverse as an immersive yet safe place for users. So with the growing popularity of the metaverse comes the challenges too. Yes, metaverse comes with its own set of potential challenges that will require attention as countries explore the utility of this technology. Now let me tell you about these challenges. The first major challenge is safety. Even before the rollout of Meta's metaverse globally, in its VR social media platform Horizon Worlds, an assault on a beta tester cautioned people about the ugly side of the technology. Since metaverse blurs the line between virtual reality and reality and is unsupervised and unregulated to a great extent, harassment can take place in the virtual world. The first report of a VR-related death has come from Moscow, where a 44-year-old died after falling through a glass table while wearing a HMD headset. A South Korean man was recently sentenced to 4 years prison for storing sexually exploitive content of minors he lured on the metaverse. So with the increased engagement of people in immersive technology, early safeguarding of users will benefit the individual users and platform and address the trust deficit. Companies working in the immersive technology domain can be incentivized to create more applications for a safer environment in the metaverse, which will allow a wider demographic of users to experience the technology. Now, as the metaverse is considered to be an attractive entertainment feed for children, it will be a massive challenge to keep them safe as they use the technology. Unsupervised time in the open social metaverse can expose them to abuse. In the US, research by the Center for Countering Digital Hate published in December 2021 on Facebook's VR Metaverse app shows that in the metaverse, children are more prone to abusive behavior, including bullying, being forced to repeat racist slurs and extremist talking points, and being exposed to traumatic experience like threat of violence. Indeed, even adults are not immune to the dangers that VR can cause, as the line between reality and the virtual world is blurred. Second, interoperability and privacy. So another challenge is the risk that the metaverse will be controlled by a few big tech companies like Google, Amazon, Meta, Apple, and Microsoft. The economics underpinning metaverse will then be linked to the capture of user data, and conservation of privacy will be a massive challenge. Third, assigning accountability. So assigning accountability in a metaverse platform is difficult as the technology transcends geographical boundaries. And to deal with the challenge of content moderation, for one, 4 main areas can be considered in governance with special focus on accountability, individual, community, platform, and government. Metaverse will produce data captured at a higher level like gaze, gesture, speech, and biometric data. Now, this private information needs to be localized, and their storage will be a task which the state needs to handle. Fourth, data security. Sharing of data across boundaries for processing can pose a threat to national security, as the metaverse can be used as a platform for recruitment by terrorist groups and for radicalization, extortion, and social polarization. So data through the metaverse can lead to fraud and identity theft. For example, by hacking VR headgear or glasses, hackers can steal personal information.
Fifth, cyber syndrome. Open issues of metaverse include high computation power, leading to higher electricity usage and the experience of cyber syndrome. NFT and blockchain technology in the metaverse economy require high computation for maintaining the ledger and validating it. In blockchain technology, the mining process in itself consumes a lot of electricity and has an environmental impact as they use high-end computation. So with the development of immersive technology and smaller and portable devices, there will be a rise in cyber syndrome cases as more people would likely be spending long hours on Web 3.0. Focus on regulatory challenges. So this is a new challenge for intellectual property rights will arise with the metaverse. Ownership of art and properties in the real world is a different domain from that in the virtual, and this has to be protected so that the animation, visual effects, gaming and comics industries can thrive. So NFTs can raise legal concerns over intellectual property ownership and rights. And due diligence on the terms and smart contract that is a part of the NFT transaction needs to be exercised to avoid IP theft. So as of now, India is largely unequipped to deal with the issues arising from metaverse technology. And balance needs to be maintained between data and sharing with trust and data to be processed within the geographical boundaries of a country. Limitations on data sharing and processing can hinder the development of metaverse and might slow down the growth of technology. So the possibilities offered by the metaverse can be limitless. Metaverse might take time to reach its full potential, but if achieved, it can be a wellspring of new business opportunities. And with increasing technological influence and demographic advantage, India has the opportunity to make the most of the metaverse. But to allow early adoption of metaverse, the Indian gaming industry and regulations introduced by the government have to be in sync, and only then metaverse will offer a safe space for all. Well, that's it in today's episode. This is Vishakha signing off. To know more about such interesting topics, keep watching 3.0 TV. And for instant updates, do not forget to press the bell icon. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The gaming industry is the center of metaverse today, and tech giants are betting big on it. According to a report by Valuates, gaming-led global metaverse market can reach $28 billion by 2028. So today we have invited Mr. Saurabh Gupta, who is the co-founder of online gaming metaverse platform Tamasha Live. Welcome to 3.0 TV, sir. Hello, thank you very much for making me part of the show. Would love to share my insights and let's take it forward. It's a pleasure to have you, sir. So, sir, as I mentioned, according to a report by Valuates, gaming-led global metaverse market can reach $28 billion by 2028. So, how does this relate to India, or what do you think that would? How big is the Indian market opportunity, basically? So, I think. If we talk about India, the overall gaming market is in a very nascent stage right now, right? There is far more, opportunity or scale that can be achieved. I think a week back, India surpassed other countries to become second, highest, country with most number of players, gamers in the world, right? After China. So that is quite exciting. So we have a lot number of players, out there. They just need, right games, products, and opportunities to, monetize, right? And this shows that there is a huge opportunity out there, not just for Web3 games, but also for in general the gaming industry, right? So currently we see, the gaming industry is of size more than $2.5 billion and would reach around $8.9 billion in the next 5 years. So this is the overall gaming, right? And out of that, there are multiple segments. There is real money gaming. There is, people pay for playing games through subscriptions. Games. True.
Yeah. So the Web3 segment is very, very small compared to the overall gaming space. Even in the next 5 years, real money gaming is going to dominate the space, which would be more than 50%. But how I see Web3 games or metaverse fitting in this is basically integrating with the existing gaming ecosystem, right? So let's say if you talk about games like PUBG or Free Fire, right? There are a lot of virtual assets, but most of these virtual assets that are out there, they are in Web 2, right? So if you buy a gun on PUBG, you won't be able to truly own it. So whenever PUBG shuts down their service, you will leave all the assets that you have collected, right? So how I see gaming is going to evolve, or basically metaverse is going to evolve in gaming, is basically fitting in the existing gaming ecosystem. So esports is growing at a very fast pace. In India, the real money gaming space is growing. Casual gaming and hyper casual gaming market is growing at a very good pace. And we will see the component of metaverse and Web3 gaming is going to fit in the existing Web2 gaming ecosystem. So that's how I see the space is going to evolve. So, like companies are betting big on metaverse. If we talk about Meta, Apple, Google, so likewise, countries too are betting big on metaverse. So Dubai, Korea, Singapore, they all have their metaverse strategies going on. So where does India stand when it comes to strategy? And do you think India has a massive role to play in leading the metaverse revolution? Definitely. I think India is a powerhouse of resources, right? So when IT sector was shaping up, right, India was, one of the leading country to provide all the resources, human resource to the entire world, right? And right now, India is leading in terms of, being the IT powerhouse for the entire world, right? True. Similarly, it happened with SaaS as well, right? The SaaS industry grew exponentially. Companies like Zoho, they became a global company, right? And similarly, we'll see that in the coming years, India would be providing a lot of resources, to develop high quality games, to create animations and other things that are the technology infrastructure, right? So there I see that India would be leading, in terms of providing the technology and infrastructure to the world. So as you said that India would be leading in terms of providing the technology, it is being said that Chennai is all set to become a hub for metaverse in India. So what are your views on this? So I think it's very early to say. Definitely, I think in Chennai, there are a lot of Web3 companies, metaverse companies, AR, VR companies that have popped up, right? And, this happens, whenever there are certain companies that are coming up in a particular locality or area or a city, a lot of other companies started setting up their base there, right? But since the gaming industry is in a very early stage, we'll see that over the time that which city, or which part of the country will emerge out as a major, place for metaverse, companies. So right now we are seeing that a lot of early companies are there in Chennai, but Bangalore is also doing good, right? In Gurgaon also is growing really well in terms of technology companies. So what I see is that over the time, if we'll see a big corporate coming out of India from a particular locality, from a particular area, there we will see that particular city going to evolve, right? So something similar happened with Bangalore as well. When Infosys came, Wipro came there, TCS came there, and the entire ecosystem developed there, right? So right now, most of the companies that are there in Chennai, they are startups, right? If we see a big corporate emerges, out of Chennai or maybe any other city, we will see the entire ecosystem starts developing there because then employees will start, setting up more startups there, right? That's how the ecosystem grows, right? So that's my thought. Very true. So let's talk about your platform, Tamasha Live. So can you share some details on user base, projects and other commercial data on your platform, including some investments and tie-ups? So Tamasha is a 2-year-old company founded by me and Siddharth. Both of us were graduates from IIT Bombay. And I have been in the gaming space for quite some time. And Tamasha is something which we started, with a vision to create a metaverse of gaming, a virtual place where people can play their favorite games, they can make their friends, they can be a part of communities, they can buy interesting NFTs and things like that, right? And initially we started, developing on Web 2,
because that is the interface that is most familiar with most of the people, right? Currently, the interfaces in Web3 are a bit complicated. It's not very easy for everyone to log into MetaMask, right? So we created the entire ecosystem on Web2. There are thousands of influencers on Tamasha who run their communities and clubs, right? And there are more than 1.5 million users on Tamasha who transact a few crores a month, right, on the platform. And there are multiple games, so we are building a three-way ecosystem where we are helping game developers to publish their game on Tamasha and monetize through it. We are helping creators to monetize, right? So any creator can start their club and they can, start earning on Tamasha by making their community people play games, through tournaments and all. And then there are players who can make friends, enjoy games within their community and, be a part of the ecosystem, right? Wow, that's interesting. So there are so many sectors which can leverage the opportunity at this time, be it manufacturing or e-commerce. So say if a medium-sized e-commerce retail or any other company wants to build a metaverse platform like yours, so what is the work pipeline of developing, or what would be the cost of a platform like this? So for an e-commerce company, I would see they can start taking some steps in this direction. So currently, most of the e-commerce that happens, right, it's on mobile phones, right? Virtual reality headset are not accessible to everyone, right? So there, augmented reality can play a very interesting role. So right now, I'm seeing a lot of interesting companies that are coming up that, you can just switch on your phone, and on your phone camera, you can see the entire furniture in your room. You can place different furnitures in your room and you can decide that which furniture will suit you best, right? Similarly, there are try-ons. If you must have seen on Lenskart, you can try out, glasses on your face, right? That is also part of, the virtual ecosystem that will develop over the time. But right now, whatever is accessible to everyone, people should develop, products over that, right? So rather than developing on virtual headsets, people should develop these interesting products and tools for utility on mobile phone, right? So I see augmented reality can play a very interesting role to create those experiences for purchasing, right? So those kind of products, I think, people can build and innovate in the e-commerce space. So since we spoke about the developing ecosystem, so developer hiring is quite painful or difficult as there are very few developers in AR or VR or the 3D space. So how can this be solved, sir? I think it will take time. Government is taking their step. Recently, government has set it up a committee for gaming and animation to promote that, right? And soon we will see that a lot of universities and colleges, they will start providing major courses and all in this space. And once we have resources, once we have, high quality educations, once we'll see a major degree in IITs, on gaming, right? Then I think ecosystem will automatically start developing, right? So it will be time taking. We'll see it develop over the time. And secondly, once the requirement starts coming up, right? So there will be a lot of gaming companies outside India that have a lot of requirements for resources. So even if they are not getting formal education in gaming, they will start learning by themselves, right? Taking some diploma courses or, learning on their own on the internet, right? So in the next 5 to 10 years, I'll see, that a lot of game developers, animators will start coming out of India and they'll provide these, their expertise to the entire world. True. So how do you think digital identities are going to kind of shape the metaverse forward? And what is the overall view of the NFT sector? And what do you think is going to be the future of the NFT sector? So what I've been observing, for the last, a few years, last couple of years, is that the new generation, the younger generation that is coming up, they are getting very much attached to their virtual identity, right? So right now I'm in my hometown and I just, talked to my father's driver, and he was, his salary is around 15,000 and he's spending around 2,000 rupees a month on Free Fire virtual assets, right? Can you believe this? Wow. So that is the kind of value people are perceiving in virtual objects, right now, right? And he's of age 23 years, right? So this is what is happening, in front of our eyes, and we are not seeing it. But in the next 4-5 years, we will see that the entire world will change, dramatically, with this attachment of people toward this virtual assets. You
or me and you can see in this virtual space is that the social network, right? Social network is also, I guess, a part of metaverse only, where we start getting attached to a virtual entity more than what is happening in real life, right? We are very much, basically concerned about how many likes we get on a social media post, what people perceive of their personality on social media. Whatever we do, we first post it on social network, right? So that is also one of our, initial, you can say, idea of how eventually the attachment of people with virtual goods and virtual entity will evolve over the time, right? The only difference that will, be there from right now to, next 5 years would be that currently whatever the virtual assets that we are building, on games, on social network, we are not truly owning that, right? But with NFTs, that will change the game, right? With NFTs, whatever you start collecting in games, whatever you start collecting in, different social platforms that you use, you can truly own it and you can transfer it, you can share it, you can, sell it on a marketplace, right? So that will change. Right. So in the year 2022, a lot of companies came up and a lot of startups came up. So what are your expectations from the year 2023? And does the future of Metaverse seem bright? So the future of Metaverse is definitely bright. But the next 4-5 years would be, shaping up the industry or shaping up the space, right? The last year was a hype year, right? Where people were buying NFTs not for the sake of, the value which they perceive in it, but just to mint money, just to, basically 10x their money, right? So there were so many virtual, platforms that came up. There was Sandbox, where people were buying lands and, few millions dollars, right? Yes. But are people actually spending their time on that? No, right? People are still spending time on Instagram and Facebook and WhatsApp. So I feel that the value of these products will get, these products will get their true value when people start using these platforms. People start using this, spending their time on these platforms. We are still using, normal platforms like regular platforms like YouTube for watching videos. We are not watching videos or, attending a Metaverse concert right now, right? Because the experience is not that smooth, right? If you are, moving in a virtual 3D space, it's not easily accessible. You have to access your laptop for that, right? So as we see over the time, the experience becomes much better, much more experiential. It becomes handy to, masses, right? Then we will see the true, use case of these Metaverse platforms. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you so much. It was fun chatting. So this was Mr. Saurabh Gupta, co-founder of online gaming metaverse platform Tamasha Live. He shared insights on building an Indian metaverse and the future of metaverse. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. कामयाबी की ऐसी रफ्तार आपने देखी नहीं होगी। सफलता की ऐसी ऊंचाइयां आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन महज 4 महीनों में रेडिट ने जो सक्सेस हासिल किया है, उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। जुलाई में लॉन्च हुआ रेडिट आए दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में कई NFT प्लेटफॉर्म्स इसे खतरे के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग रेडिट पर सवाल उठा रहे हैं। क्रिप्टो के गलियारों में तो ये भी सुगबुगाहट है कि रेडिट ने लोगों को धोखे से अपने प्लेटफॉर्म पर NFT खरीदने के लिए उकसाया है। जी हाँ, इल्जाम संगीन है, लेकिन ये इल्जाम क्यों लगाया गया बताएंगे आपको। पहले कहानी रेडिट की कामयाबी की। आप जानकर हैरान होंगे कि चंद महीनों में रेडिट ने न सिर्फ 1.5 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स जुटाए, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर 2.9 मिलियन कलेक्टिबल अवतार्स मिंट भी किए गए।
खैर, खबर ये है कि पॉलीगॉन और डून एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक 24 अक्टूबर को रेडिट ने 24 घंटों में एनएफटी टोकन अवतार में $1.5 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की, जो कि लॉन्च से लेकर अब तक रेडिट पर हुई इस कलेक्शन की क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम $4.1 मिलियन का 1/3 इंक्रीज है। इसके साथ ही रेडिट की डेली सेल्स वॉल्यूम भी अपने ऑल टाइम हाई पर थी, जहां 3780 डिजिटल कलेक्टिबल्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए। रेडिट पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अवतार क्रिएट करते हैं, जिन्हें एनएफटी के तौर पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाता है। इन कलेक्टिबल्स को रेडिट के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट वॉल्ट पर यूजर्स परचेज कर सकते हैं। इन कलेक्टिबल्स को पहना जा सकता है या फिर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर डिस्प्ले किया जा सकता है जब यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। एनएफटीज खरीदने के बाद इन्हें सेकेंडरी मार्केट जैसे कि ओपनसी पर बेचा या खरीदा भी जा सकता है, जहां कुछ कलेक्शंस को छोटे बिड्स और कुछ कलेक्शंस को कोई बिड्स नहीं मिलते, तो कईयों का फ्लोर प्राइस ही $2000 से ज्यादा होता है। अब तक का रेडिट एनएफटी का हाईएस्ट प्राइस रहा है $24,149 या 18 ETH। जुलाई में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर कलेक्टेबल एनएफटी अवतार लॉन्च करने से अब तक यूजर्स ने रेडिट पर 2.5 मिलियन एनएफटी वॉलेट्स ओपन किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केटप्लेस ओपनसी पर 2.5 मिलियन वॉलेट्स है। अगर आप इन एनएफटीज को ओन करते हैं तो आप इन्हें रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ओपनसी जैसी सेकेंडरी मार्केट पर सेल भी कर सकते हैं। रेडिट रिकॉर्ड्स एक्सप्लोड कर रहे हैं फिलहाल। डून एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टेबल रेडिट एनएफटी अवतार की सेल्स 24 अक्टूबर को 24 घंटों में थी $2.5 मिलियन और सेकेंडरी सेल्स ने तो पिछले कुछ दिनों में $5 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों पहले रेडिट पर एनएफटी हेटर्स भरे हुए थे और अब उन्हीं में से कई एनएफटी के जरिए प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जहां रेडिट पर आरोप लगाया गया कि उसने धोखे से लोगों को एनएफटी में इन्वेस्ट करवाया। तो आखिर कैसे रेडिट की बदौलत 3 मिलियन यूजर्स ने एनएफटी सेक्टर में एंट्री की, आइए बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, कलेक्टिबल अवतार्स। रेडिट ने कहीं भी वेब3 एनएफटी या फिर उससे जुड़ी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नॉन वेब3 बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलेक्टिबल अवतार्स नाम से सीधा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ऐसे में जाहिर है बहुत से लोग इस बात से अनजान थे कि वो एनएफटीज खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंपल पासवर्ड सिक्योरिटी। रेडिट पर वॉल्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपने पब्लिक एड्रेस को एक्सेस करने के लिए किसी सीड फेज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वेब3 यूजर्स के लिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रेडिट ने सिंपल पासवर्ड मेथड क्रिएट किया है। पॉइंट नंबर 3, ईज ऑफ पेमेंट। रेडिट एनएफटीज क्रेडिट कार्ड के जरिए भी खरीदी जा सकती हैं। इसके लिए फिएट को ETH या मैटिक में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, न ही ये साबित किया जा सकता है, लेकिन इन 3 फैक्टर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है जिसके चलते तमाम नॉन वेब3 बायर्स ने एनएफटी में दिलचस्पी दिखाई। खैर, सच्चाई क्या है और क्या वक्त के साथ रेडिट कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great day. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Manoj Dara. And I am Vishakha Thakur. So, Metaverse was the buzzword of 2021. So, if we talk about various companies like Meta rebranded themselves to onboard the Metaverse trend, as according to various studies, Metaverse is going to be a $8 to $13 trillion market opportunity. Yes, Manoj. The Metaverse is quickly growing as a way for communities to connect with each other. The expansion of the Metaverse is leading companies such as Meta, Nike and others to invest in the development of the virtual world. Also, coins connected to Metaverse NFTs including Sandbox, Decentraland have seen their value skyrocket over the last several months. So, well, Metaverse is not headed for cities and countries, with some already planting their flags in the virtual world. So in this episode, we are going to talk about government and countries that are leading the charge to make their mark on the metaverse. But first,
let's try to understand the current scenario of the metaverse market and what it is going to be in 5 years down the line. So let's listen in to what Mr. Kunal Nandwani, who is a YPO member of the Tech Entrepreneur, has to say about this opportunity. So current size, I think, is very small, probably running into a few billions at most. If you think about the global GDP, the global economy every year, it's close to $80 trillion, depending on the year you look at. In 5 years' time, this 80 trillion may reach to, let's say, $100 trillion or 120. I think at least 5% could become metaverse. 5% of 100 trillion would be 5 trillion. So it's easily a 5 trillion market in 5 years' time. Well, fantastic thought. So countries are competing against each other to be the first to enter the uncharted territory of deep space, moon, and now even the red planet, Mars. So, Vishaka, similarly, the digital space of the metaverse is also uncharted territory. Apart from the private companies and players betting big on the metaverse, now government of some countries and cities are buying into the hype of metaverse. But first, sovereign nation to enter the metaverse is the Caribbean nation of Barbados. Yes, Manoj, Barbados became the first nation to establish a virtual embassy in the metaverse where users can transport their avatars from one virtual world to another. And this was bound to happen because Barbados considers itself as one of the friendliest cryptocurrency country, which is actually it is. So if we are talking about the cryptocurrency friendly country in the world, if we don't mention Dubai and UAE, it's not possible, right? Absolutely. The Crown Prince of Dubai has his eyes set on the digital world. Sheikh Hamdan bin Mohammed, the Crown Prince of Dubai, announced a new metaverse strategy that aims to create 40,000 jobs and add $4 billion to the Emirates economy in the next 5 years as it continues to boost efforts to tap into the emerging digital space. This is huge actually. $4 billion is a big opportunity, right? Absolutely. So if we move forward, and Sheikh Hamdan has also said that the Dubai metaverse strategy would be essential to the Emirates' goals of becoming one of the leading economies for the metaverse and a major center for the global community. So, well, the initiative aims to cover all aspects of the metaverse's developments, from formulating regulations, developing applications, to nurturing talent and determining ways how these solutions can be used by government entities. So this is actually a fantastic development. But Vishaka, do you remember that in May 2022, Dubai's Virtual Asset Regulatory Authority, which is VARA, said it had entered into the metaverse with the establishment of its metaverse headquarters, making it the first regulatory in the world to have a presence in the emerging digital space. Yes, Manoj, I do remember. Dubai aims to become the metaverse capital of the world. So let's take Mr. Kunal's views on the same. So Dubai is becoming the center of Web3, with the country having its own metaverse strategy. Where do you see Dubai in the next 5 years? So Dubai would continue to attract due to their low taxation, a supportive regulatory framework, and their already existing capital, access to capital, and lots of HNIs who've made a lot of money in by investing into the Web3, cryptos, blockchain world. I think they would be a hot destination for sure, especially because their regulatory framework is very open, very collaborative, not too restrictive as of now. And so Dubai would play a role. In 5 years, it would be one of the top 3 or 5 favored destinations by all the metaverse development companies in some sense. They will have a big play, and given how they had been so forward looking and future thinking, I think they would certainly get some of the early big platforms coming out of Dubai. But yeah, so far 5 years time, if you take a 5-year horizon, Dubai would certainly have a good play, and they would have some good companies coming out of there. It was indeed a wonderful thought. So now let's move over from Dubai, UAE to Shanghai, China. The Shanghai government has proposed a group of guidelines to help it shift into the metaverse power. The plan of action defines each one of the technologies that the municipality needs to focus on to achieve the goals of building a $52 billion metaverse economy, while at the same time helping to establish 10 innovative companies in the area. That is interesting, actually. Manoj, we can clearly see that metaverse has become a new buzzword in China, bringing about a host of new and exciting business opportunities. Of course, yes. Not just China,
Vishaka, but if you talk about South Korea is betting big on the metaverse as well. South Korea has emerged as a global technology powerhouse in the recent decade, giving a rise to industry giants such as Samsung, LG and Hyundai, which we all are aware of, and which is actually a fact of the global markets as well. Absolutely. So interestingly, the Korean government made headlines earlier this year when it announced to plan to pour nearly $200 million into its domestic metaverse ecosystem. That is actually a big number, but not only this, Vishaka. According to the Ministry of Science and ICT, the funding will help educate and train 40,000 metaverse professionals in Korea and boost over 200 companies operating in the metaverse space. And by 2026, turn the country into the 5th largest metaverse market by number of users. That's what market participants are saying. Yeah, and that's amazing. So, in conclusion, so far Barbados, UAE, China and South Korea have plunged into the metaverse. It's just a matter of time before governments of other countries too take a leap into the virtual land of metaverse. Indeed. Yes. And if we talk about India, then there are few companies or maybe there are few entities that has actually announced plans about the metaverse. Although there are private companies in India that are exploring the metaverse opportunity, if you talk about the government initiative, that is actually lacking. True. So, well, that's it in today's episode. We will meet again with exciting stories about the metaverse. Till then, keep watching 3.2 TV, like and share our videos, subscribe our channel and press the bell icon to get instant updates. This time, this is Manoj Dara signing off. And this is me, Vishaka Thakur, signing off. Have a great day. Thank you. Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishaka Thakur. As metaverse goes on to become the new universe around us, there is good news regarding the same coming from India as well. While Dubai is set to crown itself as the metaverse capital of the world, India's very own Chennai is all set to become the metaverse hub for India. If over the years Bangalore has quite rightly risen to the title of App Capital of India, can Chennai be far behind? Well, Chennai has already made a mark by building business software for companies globally, and now the startups are dashing to develop products and services in the metaverse. A number of companies in Chennai are helping clients in every way possible. They are training employees experientially in vocational skills and standard operating procedures, creating digital twins of products, and are also launching products in the virtual world. So let's have a look at some such Chennai-based companies which are investing in metaverse, attracting talent and training employees in order to give users an immersive experience. First on the list is XR Labs. XR Labs is a products and solutions company in the AR or VR space. It is founded by engineers Srivatsan and Thirukumaran in 2016. XR Labs caters to Bajaj, Hyundai, Nissan, Tata Electronics and other automakers. With immersive training solutions being its biggest strength, the company has been bootstrapped and profitable since the beginning and is now in talks to close its first funding round. Srivatsan, founder of XR Labs, says the company wants to go beyond the wow factor of metaverse and create real business impact for their clients. Next on the list is Novak Technology. Novak Technology Solutions has added more than 10 clients in the last 2 years. According to Shanavas, the head of the immersive technology at Novak, an e-mobility client, recently worked with the company to create a metaverse version of their prototype to showcase at exhibitions. Visitors will be able to experience the product through VR headset. The company is also working with a large financial services player to create a virtual branch for them.
Skillvary is another startup that is creating headlines. Skillvary, a startup incubated at IIT Madras Rural Technology Business Incubator, started developing VR hardware and software as early as in 2012 to plug the vocational skills gaps in India. The startup runs simulator training programs for welding, painting, and AC technicians. This helps companies reduce time and cost involved in training staff and also gets workers more industry ready. And there is one more newbie called Engage. Engage Technologies was launched in 2014 with an AR assignment with the Rajnikant starrer Kochadaya. The company subsequently worked on AR or VR development services for enterprises, state law enforcement agencies, and even the armed forces. Engage founder and CEO Vijay Karunakaran is also working closely with the government to determine the state's metaverse strategy. Engage is also training students across 50 government polytechnic colleges and 450 plus engineering colleges. Well, that's all for now. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Keep watching 3.0 TV for more such updates. Do like, share and subscribe our channel. And yes, do not forget to hit the bell icon for instant updates. Cryptocurrency markets were little changed Tuesday along with stocks as concern over higher rates lingered among traders. Bitcoin traded around $17,000. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average shed 0.2%, while S&P 500 fell less than 0.1%. Nasdaq 100 futures hover just above the flat line. Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic said that interest rates should rise above 5% and stay there for a long time. Meanwhile, San Francisco Fed President Mary Daly said the central bank should continue raising rates, albeit at a slower pace. Treasury yields rose slightly on Tuesday. Investors came into the new year worried that higher Fed rates could tip the economy into a recession. However, many appear to be mounting bets that inflation is starting to ease. Depending on how CPI data fares Thursday, the bond market could push the Fed to make February the last rate hike before cuts. In the crypto space, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching the Coin Monitor. Cryptocurrency markets were trading mixed on Tuesday after hawkish comments from Fed officials hit risk sentiment ahead of a widely anticipated speech by Federal Reserve Chair Jerome Powell. Bitcoin surpassed the crucial $17,000 mark.
IC15 index of cryptocurrencies was down 0.1% at 25,770 points. Meanwhile, Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic said that interest rates should rise above 5% and stay there for a long time. The global cryptocurrency market capitalization was trading lower around $853 billion, losing as much as 0.1% in the last 24 hours. The total trading volume increased by 4% to $39 billion. In the crypto space, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. Investors came into the new year worried that higher Fed rates could tip the economy into a recession. However, many appear to be mounting bets that inflation is starting to ease. In another interesting news, San Francisco Fed President Mary Daly said that the central bank should continue raising rates, albeit at a slower pace. Treasury yields rose slightly on Tuesday. Furthermore, the US dollar index rose to 103.23 in the last 24 hours, causing the Bitcoin price to rally above $17,000. However, volatility can be expected this week due to a number of key events. Stock futures were little changed Tuesday as concern over higher rates lingered among traders. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average shed 60 points or 0.2%, while S&P 500 fell less than 0.1%. Nasdaq 100 futures hovered just above the flat line. Bitcoin was trading at $17,252, up by 0.1%. Ethereum, the second largest crypto, was up by 0.8%, trading at $1,328. BNB was down 1.4% to trade at $274. Next on the list, Solana Sol was down 2.4% and was trading at $16. Polygon Matic was trading down by 2% to trade at $0.84. Next on the list, Cardano's ADA token was down by 1.7% to trade at $0.31. Doge, the popular meme coin, was trading down by 1.6% at $0.076. Ripple's XRP token traded at $0.34, down by 0.5%. Next on the list, Polkadot was down by 1.5% to trade at $4.9. Avalanche AVAX was trading at $12.5, higher 0.1%. And last on the list, Shiba Inu was trading up by 6%. That's all in the Coin Monitor. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching the Coin Monitor.
will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Web3 वर्ल्ड वाइड वेब की एक नई यात्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे नए कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया में एक नई क्रांति ला रहा है। Web3 की दुनिया में टेक्नोलॉजी को अपनाने का चलन बढ़ रहा है और कई मामलों में ये राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित भी कर रहा है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए Web3 टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, ये पता लगाने का मुद्दा कई बिजनेस लीडर्स द्वारा उठाया जा रहा है। जब हम Web3 पर चर्चा करते हैं तो हम इसकी मूल संरचना को समझना चाहिए जो ब्लॉकचेन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक अपरिवर्तनीय डेटाबेस है जो आपके द्वारा एक्सचेंज किए जा रहे एसेट के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू होल्डिंग, स्टोरेज, ट्रेडिंग और पेमेंट्स को सक्षम बनाता है। Web3 और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को भारत में अपनाए जाने पर एक नजर डालते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज के दौर में सभी बड़े और विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तेजी से दुनिया भर में अपनाए जा रहे Web3 इकोसिस्टम को भारत में भी 450 से ज्यादा सक्रिय स्टार्टअप द्वारा अपनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसमें अब तक देश भर में अप्रैल तक $1.3 बिलियन की फंडिंग भी जुटाई जा चुकी है। वैश्विक स्तर पर भी Web3 अभी भी आकार ले रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफिक डिविडेंड और उभरती टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के चलन ने भारत को विश्व स्तर पर Web3 के मामले में उच्चतम विकास बाजारों में से एक बना दिया है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय Web3 स्टार्टअप 4 यूनिकॉर्न के साथ 450 से ज्यादा कम्युनिटी के रूप में आकार ले चुके हैं। रिसर्च के अनुसार 2021-2022 के बीच भारत ने 170 से ज्यादा नए Web3 स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं जो 2015 की तुलना में 50% से भी ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में इनमें से 80% से अधिक Web3 स्टार्टअप टियर 1 शहरों में है। वही टियर 2 और टियर 3 इकोसिस्टम जयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और कोयम्बटूर जैसे लोकेशंस में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरह से Web3 स्टार्टअप के लिए उभरते हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, जैसे कि इस रिसर्च में पाया गया है। Web3 इकोसिस्टम को भारत में बढ़ावा देने के लिए हाइक, CoinDCX, CoinSwitch कुबेर, Polygon, Coinbase, Zepay, WazirX, ANQ फाइनेंस, Biconomy, Liminal और TaxNodes के फाउंडर्स ने एक साथ आते हुए भारत Web3 एसोसिएशन को लॉन्च किया है। BWA को Web3 टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने और रिसर्च के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया गया है, जो Web3 उद्योग के लिए सिद्धांत स्थापित करने और भारत के टैलेंट पूल को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है। साथ ही BWA प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करके कंज्यूमर इंटरेस्ट को और बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये तो रही Web3 से जुड़ी बातें। अब आपको ब्लॉकचेन से जुड़े साल 2022 के राउंडअप से संदीप कराएंगे रूबरू। ओवर टू यू संदीप। शुक्रिया रुचि। तो आज हम आप सभी को भारत में पूरे साल हुई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी हलचल के बारे में बताएंगे। तो भारत में सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र ने भी बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन को अपनाया है। TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम निजी क्षेत्रों के लिस्ट में शामिल है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI, इंडियन टी बोर्ड, कॉटन इंडस्ट्री, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्रों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है। कई भारतीय कंपनियां ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ दुनिया को आशाजनक परिणाम भी दे रही है। ऐसे में नई तकनीक को अधिक सुचारू रूप से अपनाने के लिए अलग अलग संगठन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनियों तक पहुंच बना रहे हैं। उन्हीं ब्लॉकचेन सुविधा को प्रदान करने वाली कंपनियों के नाम में हाइपरलिंक इन्फोसिस्टम, एनटीटी डेटा, एक्यूबिट्स टेक्नोलॉजीज INC, TCS, इन्फोसिस और एसेंचर जैसे नाम भी शामिल है। तो ग्लोबल ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस मार्केट सालाना 45% की दर से
बढ़ रहा है और 2026 तक $34 बिलियन तक पहुंचने की संभावना भी है, जिससे इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्पेशलिस्ट की मांग बढ़ रही है, जो भारत में भी देखने मिल रहा है। तो दोस्तों, भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए टेक्नोलॉजी के भविष्य के रूप में देखे जाने वाले Web3 और ब्लॉकचेन की ये बस शुरुआत है, जिसे आने वाले दिनों में एक नए आयाम पर देखे जाने की संभावना है। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. So primarily the entire chain of events started in 2021 when the USDT claim was questioned whether they are really backed by the dollar or not. So US government has questioned them. After that, the series of events has happened from Luna, and now the FTX case is there. So primarily the impact is definitely significant in part where people want to launch their project into different exchanges like Gate.io and the KuCoin basically. So these are also getting impacted by this. So definitely the upcoming projects are getting impacted by the entire event. Also the investors' confidence has been impacted, like whether they want to invest in the project which is like quite famous or quite popular in the media or probably in the space. All of this has definitely had an impact on the investor sentiment, specifically when it comes to retail investors and more specific to first-time users who kind of getting into the Web3 and cryptocurrency space. If you look at the overall traction, what we have seen, the journey has moved from crypto to Web3. We are taking the overall ecosystem to the reality of actual use cases of blockchain out there and other emerging technologies. Today, governments are also now embarking how Web3 could be the ecosystem for their citizens. Example, Telangana state has recently announced sandboxes, right? Or even academia is also now adding their courses into their curriculums. We have seen how Web3 works. Web3 University is really embarked and working with 100 plus institutes to really create a next level of talents out there, right? So I think the rise of a new company, startups or big tech companies are now adopting blockchain as a prominent business model. So I think last 1 year was exciting enough to really give a edge or a drive for a next couple of years. So in 2022, it was very crucial that FTX crash and cryptocurrency crash, but in 2023, I can hope that there will be the recovery of the cryptocurrencies and the mass adoption of the blockchain and the further utilities and developments in the CBDC, which is central bank digital currency, and that will enter in new phase, and there will be the many more. So congratulations 3.0 TV for covering one successful year of Web3, NFT, Metaverse and blockchain and many other various sectors. I think this year 2022 was the year of cleansing
where the bad weed of Web3 were taken out, the ones that were gimmicky, the ones that didn't sort of perform in the right ethics were taken out, and this was the year of cleansing. The year 2022 was a fantastic year for Metaverse. Facebook changed its own name to Meta. Many devices have been launched this year. Many AR/VR apps and games have been launched this year. Many businesses have developed pilot project in Metaverse and AR/VR space. You name it. Almost all the big companies have done something in AR/VR space. They have accepted that Metaverse is a new normal and they have to adopt it to be relevant. That is the most important part. Now, intangibly, the Metaverse has got the biggest impulse this year. Thank you. 2022 was a great year for Metaverse industry. The industry gained a lot of attention post May 2022 after Facebook was renamed as Meta. That one video of the CEO changed everything for the Metaverse industry. Thousands of new Metaverse startups were made alone in India. Some of them have already gained recognition, and a lot of them are in their beta phase. 2022 has seen a lot of ups and downs. If you see from a crypto perspective, the prices has gone down. There has been quite a few hacks on the blockchain bridges and few decentralized, few smart contracts that have been hacked. In addition to that, we have seen Terra Luna fail, and then FTX and BlockFi, and quite a few centralized lending organization and centralized wallets or exchanges failed. So some of these have been out of reach. Some of these have been out of mismanagement of funds, how they are redeploying the funds. So if you over leverage, of course, there are chances whenever the prices of the asset will go down, it would be difficult to manage the balance sheet. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.0 के इस खास एपिसोड में। लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर, अलग अलग प्रयोगों को लेकर काफी उत्साह है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रैवल इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से बदलने के लिए आगे बढ़ रही है। इस एक्साइटमेंट की वजह बड़ी ट्रैवल कंपनियां हैं जो अधिकतर लोग पसंद करते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होने के नाते ब्लॉकचेन में कंज्यूमर्स को सीधे सर्विस प्रोवाइडर के साथ बातचीत करने की अनुमति देकर पूरे ट्रैवल के अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता है। अगर आप सफर के शौकीन हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो आपको इन टॉप कंपनियों के बारे में जानने की जरूरत है जो ब्लॉकचेन को स्थापित करने में अहम रोल निभा रही है। नंबर 1 लिस्ट में सबसे पहला नाम कूल कज़न का है। कूल कज़न को 2016 में टेल अवीव में लॉन्च किया गया था और दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा ट्रैवलर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जिस तरह का क्यूरेटेड ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, इसका मकसद टूरिस्ट के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करना है। कंपनी का ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम लोकल गाइड को अपनी जानकारी को रोजगार का एक बेहतर अवसर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्लॉकचेन पर आधारित होने की वजह से एप्लीकेशन का फीडबैक और रेटिंग सिस्टम भरोसेमंद है। नंबर 2 साइनब्लॉक एक न्यू कमर है जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल्टी लैंडस्केप को बदलना चाहता है। सिस्टम ट्रैवल ऑपरेटर्स को अपनी खुद की लॉयल्टी टोकन बनाने की अनुमति देता है, जिसे असली कॉइंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और फेड करेंसी और ब्रांडेड रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन बिजनेसेस को बेहतर डेटा और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने में मदद करता है, जिससे इकोसिस्टम में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलता है। नंबर 3 ट्रैवल चेन सप्लाई चेन में बिचौलियों को हटाने के लिए ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। यूजर्स को ट्रैवल डेटा कलेक्ट और मॉनिटाइज करने के अलावा ताक झांक से छिपाने की अनुमति देता है। यूजर्स अपने सर्विस प्रोवाइडर या ट्रैवल एजेंसी के साथ डेटा का एक्सचेंज करने के बदले में टोकन हासिल कर सकते हैं। टोकन को बाद में पैसे या सर्विसेज के लिए रिडीम किया जा सकता है। नंबर 4 वाइंडिंग ट्री
एक ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप है जो ट्रैवलर्स को टूर गाइड्स, होटल्स और एयरलाइंस जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स से सीधे जोड़ने के लिए LIF टोकन का इस्तेमाल करता है। ये ट्रैवलर्स के लिए संबंधित चार्जेस को कम करता है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट को भी कम करता है। नंबर 5, पॉपुलर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वेबजेट ने बुकिंग आसान करने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है। वेबजेट का सिस्टम ब्लॉकचेन पर एक इम्यूटेबल लेजर में सभी चीजों को दर्ज करके कंज्यूमर एक्सपीरियंस में सुधार करता है ताकि धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस की संभावना को कम करने के साथ सेलर और कंज्यूमर के बीच की दूरी भी कम की जा सके। दोस्तों, भारत में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भविष्य समझा जा रहा है और इसे प्राइवेट ही नहीं, सरकारी दफ्तर भी इसे अपना रहे हैं। कॉफी, कॉटन से लेकर दाल तक के व्यवसाय को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेटावर्स की तरफ ज्यादा झुकाव देखने मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लॉकचेन टूरिज्म फोकस कंपनीज एफिशिएंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करेगा, जिससे टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। Bitcoin trade near $17,000. German regulator warned of malware can erase bank crypto accounts. Celsius owned the assets in earned accounts, not the users, judge rules. SBF's inner circle Nishant Singh cooperating with US prosecutors. Binance holds 91.57 trillion Shiba Inu tokens, ranks SHIB the most watched crypto of 2022. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. Cryptocurrency markets were little changed Tuesday, along with stocks as concern over higher rates lingered among traders. Bitcoin traded around $17,000. Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic said that interest rates should rise above 5% and stay there for a long time. Meanwhile, San Francisco Fed President Mary Daly said that the central bank should continue raising rates, albeit at a slower pace. Treasury yields rose slightly on Tuesday. In the crypto space, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. Vishakha Thakur joins us to tell us about how the global cryptocurrency market is performing today. Over to you, Vishakha. IC15 index of cryptocurrencies was down 0.1% at 25,770 points. Meanwhile, Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic said that interest rates should rise above 5% and stay there for a long time. The global cryptocurrency market capitalization was trading lower around $853 billion, losing as much as 0.1% in the last 24 hours. The total trading volume increased by 4% to $39 billion. In the crypto space, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. Investors came into the new year worried that higher Fed rates could tip the economy into a recession. However, many appear to be mounting bets that inflation is starting to ease. In another interesting news, San Francisco Fed President Mary Daly said that the central bank should continue raising rates, albeit at a slower pace. Treasury yields rose slightly on Tuesday. Furthermore, the US dollar index rose to 103.23 in the last 24 hours,
causing the Bitcoin price to rally above $17,000. However, volatility can be expected this week due to a number of key events. Stock futures were little changed Tuesday as concern over higher rates lingered among traders. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average shed 60 points or 0.2%, while S&P 500 fell less than 0.1%. Nasdaq 100 futures hovered just above the flat line. Bitcoin was trading at $17,252, up by 0.1%. Ethereum, the second largest crypto, was up by 0.8%, trading at $1,328. BNB was down 1.4% to trade at $274. Next on the list, Solana Sol was down 2.4% and was trading at $16. Polygon Matic was trading down by 2% to trade at $0.84. Next on the list, Cardano's ADA token was down by 1.7% to trade at $0.31. Doge, the popular meme coin, was trading down by 1.6% at $0.076. Ripple's XRP token traded at $0.34, down by 0.5%. Next on the list, Polkadot was down by 1.5% to trade at $4.9. Avalanche AVAX was trading at $12.5, higher 0.1%. And last on the list, Shiba Inu was trading up by 6%. Thank you, Vishaka, for your in-depth analysis of the global cryptocurrency market. Cryptocurrencies traded higher on Monday along with stocks as investors. And now back to the headlines. The German finance regulator BaFin has warned consumers about Godfather, a malware capable of wiping out banking and cryptocurrency accounts by collecting user data. So far, German financial authorities have raised the alarm about the malware's increasing spread, which is also known for targeting 110 cryptocurrency exchange platforms and 94 cryptocurrency wallet apps. According to BaFin, the malware attacks users by displaying fake websites and generating login screens when victims attempt to access the websites of legitimate banking and cryptocurrency apps. The malware then steals the victim's login credentials. With this data, cybercriminals may be able to gain access to consumers' accounts and wallets, according to Google's translation of the finance regulator's statement released on January 9th. A federal judge in the United States ruled that Celsius Network, not the users, owned all digital assets deposited in its Earn accounts. Since the failed lender filed for bankruptcy in mid-last year, ownership of the assets on Earn accounts has been disputed. Celsius has maintained that the assets are owned by it under the terms of its license. Users have challenged the claims, claiming that the terms of service were vague and the statements from the lender's leadership, including founder Alex Mashinsky, misled them into believing they owned the assets. Martin Glenn, a United States bankruptcy judge, has now ruled in favor of the lender. The court concludes, based on Celsius' unambiguous terms of use and subject to any reserved defenses, that when the cryptocurrency assets were deposited in Earn accounts, the cryptocurrency assets became Celsius property, and the cryptocurrency assets remain in the Earn accounts on the petition date became property of the debtor's bankruptcy, estimates Judge Glenn stated in his ruling. Nishad Singh, the former engineering chief of the defunct exchange FTX, met with federal prosecutors in the United States in the hopes of reaching an agreement on cooperation. He would be the third member of the FTX and SBF inner circle willing to cooperate in order to obtain possible leniency. Singh has not yet been charged with any wrongdoing, but he did meet with prosecutors in a proffer session at the United States Attorney's Office for the Southern District of New York. The meeting, however, does not guarantee a collaboration agreement. The prosecutors will evaluate the value of the information he provides and decide whether it can be used to plead him guilty and grant him leniency. Former FTX executives, including FTX co-founder Gary Wang, Alameda Research CEO Caroline Ellison, have already pleaded guilty and are cooperating with authorities. Sam Bankman-Fried, on the other hand, pleaded not guilty to the 8 criminal charges. Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by volume, has added 91.57 trillion SHIB tokens across 4 wallets to its holdings. When compared to Crypto.com, KuCoin,
hobby and Bybit. Data from crypto intelligence tracker Etherscan.io shows the crypto exchange platform's dominance in Shiba Inu holdings. Shiba Inu remained a favorite among Ethereum network whales, with trade volume increasing 93% in the 24-hour period between January 9 and 10. Binance, one of the world's largest cryptocurrency exchange platforms, owns nearly 16% of Shiba Inu's circulating supply. According to Etherscan.io data, the circulating supply of the second largest meme coin is 589.36 trillion SHIB, of which Binance's 4 wallets hold 91.57 trillion. Binance revealed Shiba Inu's popularity among its platform traders, ranking it third among the most watched cryptocurrencies in 2022. Bitcoin and Ethereum, the two largest assets in the ecosystem, are the first two most watched cryptos. Now let's go to Vishakha Thakur to get an update of the 3 buzzing stocks of the day. Regal Hotels Group is entering the metaverse by acquiring a land in the Sandbox's Mega City 2 and launching Meta Green, the first green metropolis in the decentralized gaming virtual world. Meta Green's first phase will begin on January 12th with the support of early strategic partners Hang Seng Bank, UOB Hong Kong, City Super Group and The Mills. The first phase will include a variety of eco-friendly facilities. Regal Hotels will be the city's first eco-friendly hotel. Gameplay highlights comprise Hang Seng Bank Metaverse branch, where the community can learn about ESG investments, UOB Art Space in Meta Green's Art Park, The Mills Sustainable Textile Space and more. Despite this development, Sand was trading at $0.5192, down 1.46% in the last 24 hours, with a market capitalization of $7 million. Gala has risen 143% in the last 24 hours and by more than 60% in 2022, following the announcement of a collaboration between Gala, Dwayne Johnson and Mark Wahlberg. Additionally, Gala token has seen a 121% increase in the past 4 days. Gala Games announced the acquisition of a mobile game studio with over 20 million users on January 6. The total revenue of the studio surpassed $100 million and several games are currently available in the App Store. Gala was trading at $0.04394, up 16.64% in the past 24 hours with a market capitalization of $3 million. Meme token SHIB was trading with a 24-hour trading volume of $210 million. The market capitalization of the coin is currently at $4.8 billion. Despite recent losses, Shiba Inu was still up 6% for the day. One factor that has contributed to the increased valuation of Shiba Inu is the whale effect. In January 2021, a massive Shiba Inu transfer was recorded on the Ethereum blockchain. This transaction involved a movement of 3 trillion SHIB tokens worth upwards of $28.7 million at the time of transfer. A whale most likely did this transaction, and the subsequent effect of the move probably resulted in a slight dip in the price of Shiba Inu. However, SHIB was trading 1.39% down today. Thank you, Vishakha. Well, that's all in today's special bulletin. This is me, Ruchi Sharma, signing off. For more such updates, please like, share and subscribe to 3.2 TV. Have a great day. नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर।
3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत है। मतलबी रिश्ते अक्सर धोखाधड़ी से भरे होते हैं और धोखा अक्सर मतलब पूरा होने के बाद ही दिया जाता है, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर डिजिटल लाइफ में। डिजिटल लाइफ कंफ्यूज? जी आपने बिल्कुल सही सुना, डिजिटल लाइफ में भी धोखाधड़ी हो रही है और वो भी क्रिप्टो की दुनिया में। रियल लाइफ में जिस तरह से प्यार में कई बार लोग धोखा खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में भी रोमांस और डेटिंग के शिकार लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो रहे हैं। अब ये कैसे और किस तरह से किया जाता है, आइए देखते हैं। तो ऑनलाइन रोमांस स्कैम एक प्रकार का साइबर क्राइम है। क्रिमिनल अक्सर अपनी एक फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाते हैं। इस आइडेंटिटी में नाम, लोकेशन, फोटोग्राफ, प्रोफेशन जैसी डिटेल्स शामिल होती है। एक बार आइडेंटिटी बनते ही वो एक डेटिंग साइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होता है और ऐसे शख्स को ढूंढना शुरू कर देता है जो सिंगल हो और खासकर क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखता हो। टारगेट मिलते ही स्कैमर विक्टिम से प्यार में पड़ने का नाटक करता है और विश्वास हासिल करता है और फिर उनकी क्रिप्टो करेंसी को लूट लेता है। सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर ये स्कैमर्स किस तरह से डेटिंग और रोमांस स्कैम्स करते हैं, चलिए देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे सीधे आपके दिलो दिमाग पर असर होता है। एक स्कैमर के पीछे कई स्कैमर्स की टीम होती है जो टीम की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए टीम मेंबर्स फर्जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हेल्प डेस्क बनाते हैं जो विक्टिम को क्रिप्टो करेंसी को रिक्लेम करने में सहायता करने के लिए बनाया जाता है। अन्य रोमांस स्कैम टेक्निक्स में अटैकर के एक दोस्त या रिश्तेदार के रूप में सामने आता है और कहता है वो बीमार है और उसे पैसों की आवश्यकता है। अब देखते हैं कैसे रोमांस और डेटिंग स्कैम पहचाने जाते हैं। नंबर 1, विक्टिम और स्कैमर कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते हैं, साथ ही वो आमने सामने मीटिंग न करने के लिए कई बहाने भी बना सकते हैं। नंबर 2, रोमांस स्कैमर कभी भी वीडियो कॉल के लिए रेडी नहीं होगा। अगर वो हो भी जाता है तो खुद को छुपाने के लिए वो अंधेरे का सहारा ले सकता है। कई बार ऑडियो में डिस्टर्बेंस भी ला सकता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि आप परेशान होकर वीडियो कॉल बंद करें। तो यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इनसे दूर रहना है। तो ये तो हुई वार्निंग साइंस। अब इन रोमांस स्कैमर टेक्निक से खुद को कैसे बचाएं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो रोमांस स्कैमर टैक्टिक्स का मुकाबला करने के लिए आपको कुछ बेसिक सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपके सभी अकाउंट्स के लिए यूनिक पासवर्ड का ही उपयोग